Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम GI ट्रैक्ट करेंगे आज की वीडियो में कंप्लीट यूनिट which means चैप्टर नंबर 63 से आज स्टार्ट ले रहे हैं and we will go all the way to chapter number 67. So that's going to be a binge watch type of thing for the GI tract, just like we did for respiratory system. आपको याद है हमने सारे चैप्टर्स एक वीडियो में किए थे, तो आज भी हम GI ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे इसी एक वीडियो में. तमाम चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा, तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. So let's start with chapter number 63, which is the first chapter of GI physiology. Unit 12 है Guyton का, and this chapter talks about general principles of GI function. So obviously जैसे कि तमाम यूनिट्स का जो पहला चैप्टर होता है, यूजुअली उसमें हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में जो डिटेल्स डिस्कस होंगी उनका बेसिक लेआउट क्या है. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट हाउ द जीआई ट्रैक्ट मूव्स, द मोटिलिटी, कुछ थोड़ी बहुत एनाटॉमी की बात भी करेंगे, हाउ द नर्वस कंट्रोल इज देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो जीआई ट्रैक्ट में ऑपरेट करते हैं, एंड ऑल्सो द ब्लड सर्कुलेशन. सो द एलिमेंट्री ट्रैक्ट प्रोवाइड्स द बॉडी with a continual supply of water, electrolytes, vitamins and nutrients. Obviously that's the job of your digestive system. So you eat all the day and the digestive system then digest it and then absorb it. तो आपको पानी भी मिल रहा है इस सिस्टम के जरिए, electrolytes, vitamin, nutrient, carbohydrate, lipid, protein, सब चीजें. अब movement of food through the alimentary tract, this is a very important function of your GI tract. Then there are associated secretions of the digestive juices, जैसे कि pancreas है, उसमें से digestive juice GI tract में आता है, वो help करता है digestion of food में. Then absorption of water, electrolytes, vitamin and digestive products की absorption, circulation of blood through the GI tract to different parts of the body, actually one of them being the liver, and then control of all these functions by local nervous and hormonal system. So ये सारा हमारा डोमेन होगा पूरी GI फिजियोलॉजी का. नर्वस सिस्टम के हवाले से मैं एक पॉइंट राइट एट द वेरी आउटसेट ऑफ दिस यूनिट क्लियर करना चाहता हूँ. वो ये है कि GI ट्रैक्ट जो है ना, इसमें बड़ा डेजिग्नेटेड किस्म का नर्वस सिस्टम है. बल्कि इनफैक्ट हम जब बात करते हैं ना कि देयर इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द बॉडी, there is a peripheral nervous system in the body, we also sometimes use this third terminology. We use this word enteric nervous system in the body. So enteric nervous system is present in your GI tract. अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में. So figure 63.1 अभी देखते हैं, shows the entire alimentary tract, each part is adapted to its specific function. ये तो आपकी बॉडी की ब्यूटी है. ओवरऑल आपकी बॉडी का हर पार्ट जो उसने काम करना है उसी तरह से डिजाइंड है. यानी इसोफेगस का काम है फॉर एग्जांपल फूड को कन्वे करना, तो इट्स जस्ट लाइक अ मस्कुलर ट्यूब. स्टमक का काम है फूड को ग्राइंड करना और टेम्पोररीली स्टोर करना, तो इट्स लाइक अ बैग एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बैग, ताकि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो चॉप हो सकें, जैसे चॉपर होता है. And then there are intestine which are designed for digestion and absorption. So if you look at the diagram, this is to show you different components of the digestive system, starting right from the oral cavity, mouth, and there are associated salivary glands. The major salivary glands बड़े हैं, वो parotid, sublingual, submandibular, and then the food from the oral cavity goes into the esophagus, from the esophagus passes into the stomach, और stomach में उसकी chopping होती है, छोटे particles में divide होता है, digestion start होती है, and then small intestine and then large intestine, and then you get rid of the waste product through the anus. So ये तो पूरा digestive tube है ना, stomach, intestine, सारा ये सब. लेकिन there are also very important associated structures such as liver. So liver में there is gallbladder which is producing and storing, liver is producing bile which is being stored in the gallbladder, and वो फिर intestine में आता है, helps in the emulsification and digestion of fats. बिल्कुल इसी तरह एक और associated organ है pancreas. So pancreas से बहुत important enzymes intestine में आते हैं, they help in the digestion of food. So ये overall आपकी पूरे digestive tract की, digestive system की picture है. Okay? So general principles of GI motility, ये पहला concept है पूरे GI tract physiology में. जो movement है intestine की वो बड़ी important है, और बिकॉज उसकी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो मूवमेंट किस चीज से होती है? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स.
So we need to understand कि कौन-कौन से muscles हैं GI tract में. So figure 63.2 shows a typical cross section of the intestinal wall. अभी दिखाता हूँ. Including the following layers from outer surface inward. सबसे बाहर serosa, फिर longitudinal smooth muscle, फिर circular smooth muscle, and then mucosa. So if you look at the diagram, and before the mucosa there is also submucosa. So if you look at this cross section here, so ये intestine इस तरह से long small intestine, इसको यहाँ से ऐसे काट के सामने से देख रहे हैं. So that is the lumen. यहाँ से food particles गुजरेंगे. The outermost layer is the serosa. Then there is a muscular layer of longitudinal muscles. Then circular muscles, फिर submucosa और mucosa. So these are the different layers of intestine और almost पूरे ही GI tract का structure similar है. There is a serosal layer which is the outermost covering, then two muscular layers, longitudinal and circular, and then mucosa, submucosa. Right. So in addition, sparse bundles of smooth muscle fibers, also called the mucosal muscle, lie in the deeper layers of mucosa. The motor functions of the gut are performed by different layers of smooth muscle. Now, gut has to contract. अभी हम इस पूरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. सारा गेम ही ये है contraction of muscles, ताकि फूड पार्टिकल आगे मूव करें और डाइजेस्ट होते रहे. तो मसल्स की contraction we will discuss in great deal here. The general अब स्मूथ मसल itself हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया हुआ है. सो स्मूथ मसल की हिस्टोलॉजी और उसकी मॉर्फोलॉजी मैं नहीं डिस्कस करने लगा. सिर्फ इतना बताऊंगा कि जी लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, एंड विल मूव फॉरवर्ड. So gastrointestinal smooth muscles function as a syncytium. ये word आपके लिए नया नहीं है. So you have heard this terminology, for example, in heart. Syncytium का basically मतलब ये होता है कि सारे cells आपस में well connected हैं और जब depolarization wave आती है तो वो depolarization from one cell to the other cell easily move करती है. As a result, सारे cells एक साथ contract करते हैं. So they contract simultaneously. That's the point. So if they contract simultaneously, this is what we call movement or या contraction as a syncytium. So syncytium का मतलब ये है कि सारा गुच्छा, सारे जो muscles का गुच्छा है वो एक साथ contract करेगा. The individual muscle fibers in the GI tract are 200 to 500 micrometers in length and about 2 to 10 micrometers in diameter, and they are arranged obviously in different layers in bundles. As much as thousands of parallel fibers are making a bundle, and the outer layer is the longitudinal muscle layer और उसके अंदर जो layer है वो circular muscles की layer है. Within each bundle, the muscle fibers are electrically connected. Because they are electrically connected, they have gap junctions, and therefore these are the gap junctions. So therefore, in major depolarization wave hai, suppose this is one cell and here we have the other cell, so wave passes like this. Therefore, they all contract together, and this is what we call syncytium. Okay, each bundle of a smooth muscle fiber is partly separated from the next by some connective tissue, obviously. Therefore, each muscle layer function as a syncytium. ये मैं बात आपको बता चुका already. Also, because a few connections exist between the longitudinal and the circular muscle layers, excitation of one of these layers often excites the other. Again, the concept which we call syncytium. यानी सारे muscles एक साथ contract करने की capacity रखते हैं. Okay. Then electrical activity of GI smooth muscles. The smooth muscles of GI tract is excited by almost continual, slow, intrinsic electrical activity along the membranes of the muscle fiber. This activity has two basic types of electrical currents. Number one is called the slow waves, and number two is known as the spike, and both of which we will discuss in a little more detail. In addition, the voltage for the resting membrane potential of the GI smooth muscle can change to different levels, which can also have an impact, very important impact in controlling the motor activity of the GI tract. अब आपको ये muscle contraction के chapters हमने already discuss किए हुए हैं. So you have an idea कि how do muscles start contraction. They have a threshold resting membrane potential, और depolarization की wave से ये resting membrane potential change होता है and the muscles start contracting. तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको डीपोलराइजेशन वेव कहते हैं. सो यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आपको याद रखनी है. वन इज नोन एज द स्लो वेव. These are caused by undulating changes in the resting membrane potential. और ये क्यों होगा? Because there will be ion movement. अभी बताता हूँ. Most gastrointestinal contractions occur rhythmically, and this rhythm is determined mainly by the frequency of so-called the slow current. Okay.
or slow wave या slow current of the smooth muscle membrane potential. Now, these waves are not actual action potentials. Instead, they are very slow undulating changes in the resting membrane potential. Their intensity usually varies between 5 and 15 milliwatts. So, it's a very low voltage current, और ये true depolarization नहीं है. So, it's not true action potential. It's not. It's just, some changes in the resting membrane potential. Now, and their frequency ranges in part of the human GI tract from 3 to 12 per minute, about 3 in the body of the stomach, 12 in the duodenum, 8 or 9 in the terminal ileum. Therefore, the rhythm of contraction of the body of the stomach, duodenum, and small intestine, they are all different from each other. So, if you look at this diagram, you see these are the resting conditions. Suppose this is the resting state of the GI smooth muscle. Then there are undulating changes of the resting membrane potential. These are called slow waves. So these are not true action potentials, but they are because of slight entry of sodium and potassium. So they are not true action potentials. Okay. The precise cause of slow waves is not completely understood, although they appear to be caused by complex interaction among the smooth muscle cells and the specialized cells which are called cells of Kajal. They are believed to act as electrical pacemaker. ये सुनिए जरा point. जैसे आपके heart में sinoatrial node है, this is known as the pacemaker of the heart. Interstitial cells of Kajal in the whole GI tract, they are considered as specialized smooth muscles, and they are also known as the electrical pacemaker of the GI tract. These interstitial cells form a network with each other, and they are interposed between the smooth muscle layers and the synaptic-like contacts of the smooth muscle. मतलब ये कि suppose this is the interstitial cell of Kajal and it starts generating this spike. So बाकी सारे cells आपस में connected हैं via the gap junction. So this slow wave potential spread हो जाता है. The interstitial cells of Kajal undergo cyclical changes in the membrane potential due to unique ion channels that periodically open and produce inward current. The slow waves usually do not themselves cause muscle contraction. मैंने आपको start में बताया था, these slow waves are not true action potential. Since they are not action potentials, they are unable to cause contraction by themselves. Okay. Now, in most part of the GI tract, except for the stomach, only in the stomach they can cause a little contraction. Instead, they mainly excite the appearance of the intermittent spike potential. Not important line. So, आपको बता ये रहा हूँ कि पूरे GI tract में जो आयन की मूवमेंट है उससे जो करंट्स जनरेट हो रहे हैं उसमें पहला करंट है स्लो वेव. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रू स्पाइक्स, बिकॉज द ट्रू स्पाइक्स आर देन फॉलोड बाय द depolarization and contraction. So spike potential is the second type of current that we produce in the GI tract. The spike potentials are true action potentials. They occur automatically when the resting membrane potential of the GI smooth muscle become more positive, about minus 40 millivolts. The normal resting potential is between minus 50 and 60. So that's the normal acting potential 50 or 60 के बीच में. If it goes down to 40, spike potential. You see, if it goes down to minus 40, it's becoming positive. So positive cells are entering, sodium ions are entering. 40 पे ये reach करता है, goes to spike potential. So that's a true action potential. Okay. So note in figure 63.3 that each time the peak of the slow wave temporarily become more positive as minus 40, spike potentials appear. So minus 40 का threshold जब ये cross करते हैं, spike potential बनना शुरू हो जाते हैं, contraction शुरू हो जाती है. Okay. The spike potentials last 10 to 40 times as long as the GI muscles, in the GI muscles as the external potential in the large nerve fibers with each, which means that the muscles slowly contract and remain contracted perhaps for a long time. Okay. As compared to the nerves, जहाँ impulses shoot गुजर गई और बात खत्म, लेकिन यहाँ muscles contracted रहते हैं. That's a slow smooth muscle contraction property. Another important difference between the action potentials of the GI smooth muscle and those of the nerve fiber is the manner in which they are generated. In nerve fibers, the action potentials are caused almost entirely by the rapid entry of sodium. You remember that? कि nerves में sodium जैसे enter होता है, that's the action potential started. GI smooth muscle में ऐसा नहीं है. The channels responsible for action potential are somewhat different. They allow especially large number of calcium ions to enter into the smooth muscle cell along with the sodium. So there are calcium-sodium channels. Not only sodium
which is responsible for generation of action potential, there is calcium associated with it as well. Okay, these channels are much slower to open and close. जो nerves में हमारे पास sodium channels थे, they were very rapid sodium channels, but these calcium sodium channels, they are slow to open, slow to close. Okay, also the movement of large amount of calcium ions to the interior of the muscle fiber during the action potential plays a special role in causing the intestinal muscle fibers to contract. अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये कैल्शियम इन मसल्स में एंटर होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो सारा स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना है, दैट इज ऑल एसोसिएटेड विद कैल्शियम एंट्री. Now, changes in voltage of the resting membrane potential, in addition to the slow waves in the spike potential, the baseline voltage level of smooth muscle resting membrane potential can also change slightly. Under normal condition, the resting membrane potential is between -50 and -60, but multiple factors can change this level. So, when the potential becomes less negative, which is called depolarized. So, depolarization means you become more positive or less negative, the same thing. The muscle fibers become more excitable, and that is the general rule for every muscle fiber. So if they are becoming depolarized, they are becoming more excitable and contraction will happen. If they are becoming more negative, this means they are being hyperpolarized and they are getting immune to excitability. ओके, अब डीपोलराइजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? जो भी डीपोलराइजिंग फैक्टर होंगे वो मसल्स को मोर एक्साइटेबल बनाएंगे, यानी दे विल बी द फैक्टर्स जिनकी वजह से ये स्मूथ मसल ज्यादा हैप्पीली कॉन्ट्रैक्ट होगा. और वो फैक्टर्स हैं स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, यानी जैसे ही आपकी जीआई ट्रैक्ट में खाना आता है वो भर जाता है, जीआई ट्रैक्ट है ना, स्टमक भर जाएगा, वहाँ स्ट्रेचिंग होगी तो डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी. समझ में आ रही है बात? स्टिमुलेशन बाय एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, एंड स्टिमुलेशन बाय सेवरल स्पेसिफिक जीआई हार्मोन. सो दीज आर द थ्री मैकेनिज्म्स जिससे बेसिकली होगा ये कि जो आपकी स्मूथ मसल सेल्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पड़े हुए हैं, दे विल स्टार्ट गेटिंग डीपोलराइज्ड, और जब वो डीपोलराइज होंगे तो दे विल बिकम मोर एक्साइटेबल टू कॉन्ट्रैक्शन. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट मेक द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव करने का मतलब ये है immune to contraction या immune to excitability या hyperpolarized. देखिए ये सब एक वर्ड्स हैं, और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लेस एक्साइटेबल करते हैं मसल्स को या हाइपरपोलराइज करते हैं? The effect of norepinephrine and epinephrine, which means the sympathetic system, the stimulation of the sympathetic system. ठीक है, so sympathetic system is going to hyperpolarize it. इसीलिए sympathetic system GI मूवमेंट को स्लो करेगा, इट विल स्लो डाउन द GI मूवमेंट, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम GI मूवमेंट को फास्ट करेगा. क्यों? बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, डीपोलराइजेशन होगी, मसल्स विल बी मोर एक्साइटेबल, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ कैल्शियम के बारे में मुझे बात करनी है. यहां मैंने आपको बताया कि these muscles depolarize. If this is a smooth muscle, it will not only get sodium by the rapid channel, unlike the neurons, it will get sodium as well as calcium inside. अब ये जो कैल्शियम अंदर जाएगा उसके बारे में कुछ बात मुझे करनी है. So smooth muscle contraction occurs in response to entry of calcium into the muscle fiber. As explained earlier, calcium ions act through calmodulin, another protein, and control the mechanism of myosin filament contractility. So calcium are required for contraction. The slow waves are not enough to cause calcium entry, but the spike potentials are the ones जो calcium entry करवाते हैं. So remember, it's the spike current, okay? It's the spike potential which leads to calcium entry. Slow wave से कुछ नहीं होता. अच्छा भाई, tonic contraction of some GI smooth muscle. Some smooth muscles of the GI tract exhibit tonic contraction, or instead of rhythmic contraction. Tonic यानी rhythmic का मतलब ये होता है कि they follow a certain time period, and tonic is a different mechanism. अभी पढ़ते हैं. Tonic contraction is continuous. It is not associated with basic electrical rhythm of slow waves, but often lasts several minutes or several hours. So it's contracted for a long period of time. इसको मैं स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूँ, कभी पेट में मड़ोड़ उठता है, दर्द उठता है, contracted. So that's perhaps the tonic contraction. The tonic contraction may increase or decrease the intensity, but it continues. Tonic contractions is sometimes cause continuous repetitive spike potential. The greater, अब ज़्यादा बार-बार spike potential होंगे तो ज़्यादा सोडियम आता रहेगा अंदर, ज़्यादा कैल्शियम अंदर आता रहेगा, और ये जब अंदर आते रहेंगे सेल के तो contraction होगी और काफी देर तक रहेगी. At other times, the tonic contraction is caused by hormones also. They are caused by spike potential and by some hormones. So
एग्जैक्टली फिर इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम बात करेंगे भी. सो अब तक जितना हमने डिस्कशन किया है, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द जीआई ट्रैक्ट का आर्किटेक्चर, कि किस तरह से सिरोजा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, सब म्यूकोजा म्यूकोजा, ल्यूमेन, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड इन टर्म्स ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंजेस. दो तरह के करंट्स आपको याद रखने हैं, स्लो वेव जो कि ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं है, एंड द अदर वन वाज द स्पाइक पोटेंशियल. स्पाइक पोटेंशियल्स आर द ट्रू एक्शन पोटेंशियल, दे लीड टू सोडियम एंट्री इनटू द सेल एंड कैल्शियम एंट्री इनटू द सेल. ओके, एंड दैट्स हाउ योर जीआई ट्रैक्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. अब मुझे बात करनी है कि व्हाट इज द न्यूरल कंट्रोल. और मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बॉडी में दिस इज वन साइट जहां बहुत ही डेडिकेटेड, डेजिग्नेटेड, लंबा चौड़ा सा एक पूरा पैरेलल नर्वस सिस्टम है. तो मैं अगर स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप मुझे नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स बताएं, ऑब्वियसली दे टेल मी देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बट बिलीव मी देयर इज अनदर टर्म यूज्ड कॉल्ड एंटेरिक नर्वस सिस्टम. ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना बड़ा है कि इसको अलग से मेंशन करना जरूरी है. जस्ट लाइक सीएनएस एंड पीएनएस, वी हैव ईएनएस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम. ओके, इट लाइज entirely in the wall of the gut, beginning in the esophagus and extending all the way to the anus. और कोई organ मुझे बता दें ऐसा पूरी बॉडी में जो इस तरह एक्सटेंसिव उसमें नर्वस सिस्टम हो, नहीं मिलेगा आपको. थिंक अबाउट मसल्स, थिंक अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, थिंक अबाउट एनी सिस्टम ऑफ योर बॉडी. दिस इज द ओनली सिस्टम, द जीआई ट्रैक्ट, जिसमें इतना लंबा चौड़ा एक डेडिकेटेड नर्वस सिस्टम है. उसका रीजन ये है बिकॉज इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार. The number of neurons in the enteric system is about, more than 100 million. And that, if you total, is more than the number of neurons in the spinal cord. So think about it. स्पाइनल कॉर्ड में टोटल जितने न्यूरॉन्स नहीं है उतने न्यूरॉन्स आपके जीआई ट्रैक्ट के नर्वस सिस्टम में. तो इससे अंदाजा लगाएं ये कितना डेवलप सिस्टम है. दिस हाईली डेवलप्ड एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द जीआई मूवमेंट्स एंड सिक्रेशंस. The enteric nervous system is composed mainly of two different forms of plexus. दो नेटवर्क हैं. एक को हम नाम देते हैं outer plexus या outer network of nervous system. It lies between the longitudinal and the circular muscle layers, and this is known as the myenteric plexus या दूसरा नाम है Auerbach plexus. देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना. So this is the longitudinal muscle layer, this is the circular muscle layer, इनके बीच में होता है. So that is the myenteric plexus. These are the neurons of the myenteric plexus. या myenteric plexus बोलें या Auerbach plexus बोलें, it is between the circular muscle layer and the longitudinal muscle के बीच में होता है. So that is called myenteric plexus. और फिर जो second category है, this is known as the inner plexus, जो अंदर होगा, also called the submucosal plexus or Meissner's plexus. It lies within the submucosa. So if you look at the diagram here, this is the Meissner plexus lying in the submucosa और फिर mucosa आ जाएगा. So two types of networks हैं, दो तरह की वायरिंग हुई हुई है आपके जीआई ट्रैक्ट में. एक कहलाती है myenteric plexus and the other one is known as Meissner's या submucosal plexus. Okay, the myenteric plexus, अब इनके अपने अपने काम है, obviously दोनों के अलग अलग काम होंगे ना, जब भी दोनों अलग अलग हैं. The myenteric plexus controls mainly the GI movements and the submucosal controls mainly the GI secretions and the blood flow. So you see how these two have different functions. अब अगली फिगर एक देखते हैं. Note especially the extrinsic, sympathetic and the parasympathetic fiber that connect to the both. This is a beautiful line. I like this so very much. So if you look at this diagram, for example, here we have the myenteric plexus, which is also known as Auerbach plexus. Here we have the submucosal plexus, which is also known as Meissner's plexus. बात ये है कि ये दोनों, मैंने आपसे कहा ना, there is a central nervous system, there is a peripheral nervous system, and now I'm telling you there is an enteric nervous system. देखो पूरे नर्वस सिस्टम की ना बेसिक आर्किटेक्चर ऐसा है कि कोई भी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे पार्ट के साथ इंटरकनेक्टेड ना हो. इन वन वे और दी अदर वो कनेक्टेड होता है. सो स्पाइनल कॉर्ड के पाथवेज ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन के एक सेगमेंट के पाथवेज को ब्रेन का दूसरा सेगमेंट कंट्रोल करता है. यानी जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. ऐसे ऑटो पे अकेला नहीं छोड़ा होता, हर जगह देयर इज अ कनेक्शन. अगर आप हार्ट की साइनोएट्रियल नोड की बात कर रहे हैं तो वहां भी हायर सेंटर्स का कंट्रोल है. बिल्कुल ऐसे ही ये एक प्लेक्सिस है जिसका नाम है मायेंट्रिक प्लेक्सिस, ये सबम्यूकोजल प्लेक्सिस. लेकिन अब जरा देखें, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपने फाइबर्स के साथ मायेंट्रिक प्लेक्सिस के साथ भी कनेक्टेड है और मीजनर प्लेक्सिस के साथ भी कनेक्टेड है. एंड सो इज आल्सो ट्रू फॉर द सिम्पैथेटिक सिस्टम. इसके फाइबर्स मायेंट्रिक से भी कनेक्टेड है और मीजनर से भी कनेक्टेड है. सो द पॉइंट इज
कि this enteric nervous system is very well connected with both sympathetic and parasympathetic nervous system. Although the enteric nervous system can function independently, लेकिन फिर भी इनका control है, ठीक है? Also shown in the same figure are the sensory nerve endings that originate in the GI epithelium of the gut wall and send afferent to both the plexus of the enteric nervous system, as well as to the prevertebral ganglia of the sympathetic system, to the spinal cord and vagus, यानी brainstem और parasympathetic system तक. These sensory nerves can elicit local reflexes within the gut, and still other reflexes that are delayed to the gut from either prevertebral ganglia or the basal. So now this one single diagram is actually beautifully describing how the nervous system of the entire GI tract is controlled. So this is the GI tract epithelium. आप देखें यहाँ तक supply आ रही है from the submucosal plexus. Submucosal plexus is well connected with the myenteric plexus. Both these plexes are controlled by parasympathetic as well as sympathetic. अब इस GI epithelium में अगर कोई sensory, तो ये सारी जो supply है, this is all the efferent supply. या इसको हम कह सकते हैं this is all the motor supply, because this is from the nervous system to the effector. ऐसे ही है ना, from the nervous system to the effector. फाइबर आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, myenteric plexus से भी इस डायरेक्शन में, submucosal से भी इस डायरेक्शन में, parasympathetic भी है. So the direction is towards the effector. लेकिन ऑब्वियसली जो आपका ऑर्गन है उसमें भी तो कोई सेंसेशन जनरेट होगी और उसको वो सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजनी होगी टू द हायर सेंटर्स इन द सीएनएस. तो ये जो फाइबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड सेंसरी फाइबर्स. सो सेंसरी फाइबर भी जनरेट होते हैं इन द एपिथेलियम एंड दे गो टू द mesenteric plexus, to the myenteric plexus, as well as to the brain and sympathetic system. So this is all very well connected. That's the bottom line, basic point here. ठीक है? अच्छा जी. अब नेक्स्ट जो मुझे आपसे बात करनी है, दैट इज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द myenteric एंड द सबम्यूकोसल प्लेक्सेस. हमने ये दोनों प्लेक्सेस देख तो लिए, ऑब्वियसली इनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस होंगे ना. वो myenteric प्लेक्सेस जो है कंटेन्स मोस्टली लीनियर. एक डिफरेंस तो मैं एक्चुअली बता भी चुका हूँ कि जो myenteric प्लेक्सेस है, इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शन, और जो मीजनर है, इट इज एसोसिएटेड विद सीक्रेशन. ठीक है? सो because the myenteric plexus extends all the way along the intestinal wall and lies between the longitudinal and the circular layers of the muscles, it is concerned mainly by to control the muscle activity and a contraction. When this plexus is stimulated, its principal effects are as follows. Now, this is very important. It increases the tonic contraction of the muscle. It increases the tone of the wall because muscle की contraction करवा रहा है. It increases the intensity of the rhythmic contraction. So intensity increase होगी, slight increase in the rate of rhythm of contraction and increased velocity of conduction. So overall अगर इस सब की हम बात करें तो basically ये muscle contraction करवा रहा है. That's what the job is. The myenteric plexus should not be considered entirely excitatory because some of its neurons are also inhibitory. इस डिस्कशन को सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बट सम ऑफ द फाइबर्स आर आल्सो इनहिबिटरी. ठीक है? सच एज उनमें से जो न्यूरोपेप्टाइड निकलते हैं, वीआईपी, वैजो इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज देखें, मैं आपको ये ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. कहीं कॉन्ट्रैक्शन, कहीं रिलैक्सेशन जरूरी है, तो ये डिजाइन बड़ा खूबसूरत है आपकी बॉडी का. सपोज दिस इज स्टमक, राइट? अब ये स्टमक है और स्टमक में बहुत सारा फूड आपने खा लिया है, वो यहाँ के डाइजेस्ट हो गया. अब स्टमक से ये फूड आगे मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ डियोडेनम. तो यहाँ जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, इस मूवमेंट के वक्त इस पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्या होना होगा, इसको रिलैक्स होना होगा. मीनवाइल बाकी पूरे स्टमक को क्या होना होगा, स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट होना होगा. तो ओवरऑल होगा ये कि स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड को पुश करेगा, ये रिलैक्स होगा, तभी फूड आगे जाएगा. स्फिंक्टर अगर रिलैक्स नहीं हुआ तो भले ही स्टमक जितना भी कॉन्ट्रैक्ट करे, फूड आगे नहीं जाएगा. सो नेचुरली लॉजिकल बात यह है कि जो स्टमक के फाइबर्स हैं वो एक्साइटेटरी होने चाहिए ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट करे, और स्फिंक्टर को जो सप्लाई आ रही है वो इनहिबिटरी होनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स करे. So that's the logical explanation कि some of the fibers have to be inhibitory, such as sphincter के केस में मैंने आपको बताया. Otherwise, we also have the ileocecal valve, वहाँ भी ये property चाहिए होगी. Then the other one is the submucosal plexus. जो submucosal plexus है, इसका basically काम है to increase the intestinal secretion. GI tract की secretion increase होती है. तो it is basically not much associated with contraction. अब अगर neurotransmitters की बात करें तो GI tract में there are so many neurotransmitters which have been reported as much as at least 25 that are very well known,
and they include, यहाँ सारे नाम लिखे हुए हैं, acetylcholine, norepinephrine, serotonin, substance P, dopa, even ATP. ATP is a neurotransmitter as well in GI tract, cholecystokinin, VIP. So all these names are listed here. अभी थोड़ी देर में हम इनके functions भी discuss करेंगे, particularly कि कौन से neurotransmitters क्या काम करते हैं और कौन से secreted enzymes, hormones. GI tract में this is very important to understand कि what are the stimulants and what are the inhibitory factors of the GI tract movement. तो वो भी थोड़ा सा आगे चल के डिस्कशन भी आएगा और आगे भी इस यूनिट के बाकी चैप्टर्स में ये बात बार बार रिपीट होगी. Acetylcholine, for example, is the most often excites the GI tract activity. Acetylcholine, very well known excitatory factor. पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई से रिलीज होने वाला एसिटाइलकोलिन. सो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी देयरफॉर इंक्रीजेस द जीआई कॉन्ट्रैक्टिलिटी. अच्छा, नॉरएपिनेफ्रिन जो है दैट इज यूजुअली इनहिबिटरी टू द जीआई फंक्शन, एंड यू नो दैट नॉरएपिनेफ्रिन इज अ रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो इसीलिए अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, बिकॉज इट रिलीजेस एसिटाइलकोलिन, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम of the gut is obviously divided into cranial and sacral divisions, except for few parasympathetic fibers to the mouth and pharyngeal region, the alimentary tract. The cranial parasympathetic fibers are almost entirely in the vagus nerve. So that's the classical nerve that you have to remember. The fibers provide extensive innervation to the esophagus, stomach, pancreas, and somewhat to the intestine as well, at least to the first half of the large intestine. फिर sacral parasympathetics हैं, which originate in the second, third, and fourth sacral, segments of the spinal cord, and they travel as pelvic nerves to the distal half of the large intestine. So vagus, upper parts of the GI tract, और फिर pelvic nerves जो हैं, they supply. So cranial supply है parasympathetic की, और फिर sacral supply है, okay? और overall action क्या है parasympathetic stimulation का? It increases the contractility. Postganglionic neurons of the GI tract parasympathetic nervous system are located mainly in the myenteric and the submucosal plexus. आपको autonomic nervous system का पूरा generalized architecture मालूम है कि from the cranial nuclei, for example, there are preganglionic fibers, they go to the organ, और उस organ में they synapse with the postganglionic, and the postganglionic go into the organ. अब organ में कहाँ ये synapse हो रहा है? So that synapse is happening in the myenteric and the mesenteric plexus. Okay, stimulation of these parasympathetic nerves generally increase the activity of the entire enteric nervous system. So increase contractility and therefore increase activity of the GI tract. मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ because this is worth repeating again and again कि parasympathetic supply increases the GI tract functions. It's a very, very important concept. And on the contrary, the sympathetic stimulation inhibits the GI tract. ठीक है, the sympathetic fibers the GI tract कहाँ से आते हैं? They come from T5 to L2 segment, or most of the preganglionic fibers innervate the gut. After leaving the cord, they enter the sympathetic chains that lie lateral to the spinal column. We know this prevertebral, paravertebral ganglia की chain. Or then they reach out to the ganglia such as the celiac ganglia and various other ganglia which are present in the mesentery, and then the postganglionic fibers which are longer in case of sympathetic supply, they reach out to the different parts of the gut, and the sympathetic innervation essentially inhibits the GI activity. It releases norepinephrine. So these are the factors that you have to actually remember. It affects in two ways. To slight extent by direct effect on secreted norepinephrine to inhibit the intestinal smooth muscle, and to major extent by inhibitory effect of norepinephrine on the neurons of the enteric nervous system. So that doesn't make much sense because हमें पता है, इतनी बात याद कर लें तो ये सब कवर हो जाएगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है और वो इनहिबिट करता है जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटी को. ओके, देन अफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर्स फ्रॉम द गट. अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई की, दैट वाज द इफरेंट सप्लाई. इफरेंट सप्लाई का मतलब है मोटर सप्लाई, लेकिन कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन भी तो होगी ना, बिकॉज सेंसरी फाइबर्स भी तो गट से निकलेंगे. सम ऑफ द नर्व फाइबर्स हैव देयर सेल बॉडीज इन द नर्वस सिस्टम, जो कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, एंड सम हैव इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. दीस सेंसरी फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय इरिटेशन ऑफ द गट mucosa, such as for example in any sort of inflammation,
if there is an ulcer formation, H. pylori infection. So in तमाम cases में these sensory fibers will carry their important information to the higher centers of the brain. If there is excessive gut distension, बहुत ज़्यादा खा लिया है, भर गया है पूरा GI tract, तो ये distension के जो feeling है, sensory feeling, it will also go in the sensory fibers. Then number 3, the presence of specific chemical substances in the gut. So all these signals are transmitted by the sensory fibers, okay? Then in addition to other sensory signals from the gut, go all the way to the multiple areas of the spinal cord as well as to the brain stem. So this is all the sensory input. Now the GI reflexes. The anatomical arrangement of the enteric nervous system and its connections with the sympathetic and the parasympathetic system support 3 type of GI reflexes. ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछते हैं. Number 1, reflexes that are integrated entirely within the gut wall enteric nervous system. These reflexes include, for example, those associated with control of GI secretion, peristalsis, mixed contractions. So ये जो reflexes आपकी gut में generate होते हैं, वो gut खुद control करती है. Gut को पता है कि मैंने कितनी peristalsis करनी है, कितनी secretion. So this is within, intrinsic. These are the reflexes entirely within the gut wall. Then there are reflexes from the gut to the prevertebral sympathetic ganglia and then back to the GI tract. So यहाँ से fibers जाएंगे, ganglia वापस. So these reflexes transmit signals long distances to other areas, such as signals from the stomach to cause the evacuation of the colon. So that's like a long. खुद stomach इधर बैठा हुआ है, लेकिन ये evacuation of colon को control कर रहा है, known as the gastrocolic reflex. Signals from the colon and small intestine to inhibit the stomach motility. Enterogastric. So these are long distant relationship type of thing. Then we have the third reflex, which is called reflex from the gut to the spinal cord or brain stem and then back to the. तो इसमें भी ये हो रहा था, देखें पहले वाले में था कि गट की वॉल है, सारे का सारा रिफ्लेक्स विद इन द गट कंट्रोल हो रहा है. सेकंड वाले में ये हो रहा है कि फ्रॉम द गट वॉल सेंसरी फाइबर जाएंगे किसी और जगह पे, वापस आएंगे किसी और जगह पर. सो इसमें एक लॉन्ग टर्म लूप है और एक थर्ड एरिया सिनेप्सिस है. यहाँ पर भी ऐसे है. इस केस में थर्ड एरिया सिनेप्सिस था इनटू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन इस केस में थर्ड स्पेस सिनेप्सिस है इन द हायर सेंटर सच एज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम. यानी किसी एक पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट से सिग्नल्स गए इन द ब्रेन स्टेम और फिर वापस आए किसी दूसरे पार्ट पर. इस तरह की स्टोरी अगर है तो फिर ये हम थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं और इनकी कई सारी एग्जांपल्स हैं. सो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम स्टमक एंड ड्यूडेनम टू द ब्रेन स्टेम एंड देन बैक टू द स्टमक वाया द वेगस नर्व. And then there are defecation reflexes, so we'll talk about them, but remember we are talking about how nervous system of the gut operate. तो ये सारे nitty gritty bits आपको पता होने चाहिए. Now the GI tract is not only under the neuronal control, there is also hormonal activity. और बहुत सारे hormones हैं जो आपको पता होने चाहिए. GI hormones are released into the portal circulation, exert their physiological action on the target cells and specific receptor for the hormone. So this table is the next big thing in this chapter. So here some of the key hormones are listed. They include gastrin, cholecystokinin, also known as CCK, secretin, motilin, glucose dependent insulin-tropic peptide. ये सारे important hormones हैं जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए. अच्छा, फिर ये कब रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, क्या एक्शन करते हैं. So that's a very important table. So for example, gastrin is released from the G cells of the antrum of the stomach and the duodenum and jejunum. So antrum of the stomach, duodenum और jejunum, G cell से gastrin निकलता है. कब निकलता है? When we have protein diet, when there is distension of these part, यानी खाने से भर जाएं, और if there is any nervous signal for gastrin release. अब ये जब गैस्ट्रिन निकलेगा तो करेगा क्या? It will stimulate the gastric acid secretion and mucosal growth. अब it all makes sense as well. So for example, this is your stomach, okay? आपने खाना खाया और स्टमक पूरा खाने से भर गया, there will be distension. डिस्टेंशन होगी, इसका मतलब स्टमक खाने से भर गया है और स्टमक चीख चीख के कह रहा है कि आओ गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करवाओ ताकि डाइजेशन शुरू हो. तो डिस्टेंशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन. आपको तमाम लिस्टेड हार्मोन्स के लिए
उनकी साइट ऑफ रिलीज यानी साइट ऑफ सिक्रीशन, उनका एक्शन पता होना चाहिए. सो cholecystokinin फॉर एग्जांपल इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू प्रोटीन, फैट एज वेल एज एसिड्स. सो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं डाइट में, फैट ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, दिस विल बी रिलीज फ्रॉम duodenum jejunum ileum and it will increase the secretion of pancreatic enzyme and gallbladder contraction. Why? Because देखो ये अब एंजाइम ज्यादा चाहिए ताकि इनकी डाइजेशन हो सके. आपने खाने में ये चीजें खाई हैं तो ये रिलीज होगा cholecystokinin, तभी तो ये जाकर के इन एंजाइम्स को इंक्रीज करेगा और इनकी डाइजेशन होगी. अब जरा इसको एक मिनट के लिए रिवर्स इंजीनियर करो कि ये सब ना होता, यानी आपने प्रोटीन भी खा लिया, फैट भी खा लिया, ये सब कुछ, लेकिन कोई cholecystokinin नहीं है. cholecystokinin नहीं होता तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं निकलते, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं निकलेंगे तो डाइजेशन नहीं होगी. सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज लॉजिकल एंड इट मेक सेंस. ठीक है. अच्छा जी, सीक्रेटिन एस सेल से निकलता है, ये नाम याद रखना भी आसान है, सीक्रेटिन फ्रॉम एस सेल, है ना, गैस्ट्रिन फ्रॉम जी सेल. अब ये cholecystokinin आई सेल से क्यों है, आई शायद 2 दफा है शायद, इसलिए आई डोंट नो. बट एनीवेज इट इज आल्सो फ्रॉम द एस सेल्स ऑफ द duodenum jejunum and ileum, stimulate also secretion of enzyme but inhibit gastric release and gastric acid secretion. Glucose dependent. So remember this table guys, this is important table for you to remember. Okay? अब जो टेबल में मैंने सारी स्टोरी आपको बताई है वही यहाँ वर्बाटम में लिखी हुई है. सो फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन इज सीक्रेटेड बाय द जी सेल्स ऑफ द एंट्रम. ये सारी कहानी यहाँ मैंने पढ़ के सुना दी. सो वी आर डन विद ऑल दीज cholecystokinin and secretin, GIP as well as motilin. All these are summarized in this table as a superstar table, as I say. Okay. Now the concept of movements in the GI tract. Functional movement in the GI tract. There are two types of movement. एक movement को हम कहते हैं propulsive movement और दूसरी कहलाती है mixing movement. देखें propulsive movement का मतलब ये है कि if I have a pipe, so this is a GI tract, ये intestine है ना. अब intestine में this is the food bolus for example, और इसे मुझे आगे propel करना है. So यहाँ जो contraction इससे पहले start होगी, यानी ये फूड पार्टिकल लग रहा है. इफ दिस इज द बोलस, तो बोलस से पीछे के एरिया के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि बोलस इस डायरेक्शन में मूव करे. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपल्सिव मूवमेंट. सो प्रोपल्सिव मूवमेंट इज आल्सो नोन एज पेरिस्टाल्सिस. अब जब बोलस यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि इसको आगे धक्का दे. यार ये बिल्कुल ऐसे है, कभी वो टूथपेस्ट होता ना, टूथपेस्ट ऐसे टूथपेस्ट बना रहा हूँ, ये खत्म हो जाता तो यहाँ आप जोर लगाते हो ना ताकि यहाँ से टूथपेस्ट निकले. बिल्कुल इसी तरह की चीज है, यहाँ फोर्स करते हो ताकि टूथपेस्ट आगे निकले जब खत्म हो रहा होता है खास तौर पे. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जोर लग रहा है ताकि ये बोलस आगे मूव करे. इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. द बेसिक प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज द पेरिस्टाल्सिव मूवमेंट. ये पूरे गट में होती है आपके, पर्टिकुलरली इन द इंटेस्टाइन. It is an inherent property of many syncytial smooth muscle fibers, right? We know this. The usual stimulus for intestinal peristalsis is the distension of the gut. जैसे ही food particle या bolus या food contents gut में पहुंचते हैं, so that part is distended और इस distension की वजह से ये peristalsis start होती है. अब again, I mean broader picture में देखें, अब तक हमने जितना discussion किया है उस सबको आप context में डालने की कोशिश करो जरा, कि जब यहाँ पे distension होगा तो distension is the signal for spike potential. spike potential होगा तो sodium enter होगा इन cells में, calcium enter होगा, और ये वाले जो cells हैं यहाँ पे there will be contraction, और जब ये contract करेंगे तो food particle आगे move करेगा. Okay? Now function of the mesenteric plexus in peristalsis, of course mesenteric plexus का काम ही है smooth muscle की contraction. So peristalsis actually happens because of the mesenteric plexus. Peristaltic move toward the anus with downstream receptive laxation law of the gut. So this is very important. The law of the gut is important because if the law of the gut is reversed, then things are not good and then vomiting will happen, for example. So it is always peristalsis towards the direction of the anus. If it reverses for any reason, it is called anti-peristalsis, और उस anti-peristalsis को हम नाम देते हैं vomiting. So vomiting can happen. Okay? और ये अब सारी बातें not too much important, but you have to remember कि it is the bottom line. आपको इन headings का याद रखना है जो कि हमने discuss कर लिया. Okay? And that's basically known as the the peristaltic reflux plus the anal direction is combined known as the law of the gut. Law of the gut ये है कि there will be peristalsis and it will always be towards the direction of the anus. Okay, not towards the direction of the mouth, because अगर peristalsis towards the direction of the mouth होगा, then there will be vomiting या anti-peristalsis.
तो ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन थी। अच्छा, फिर एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन और है विच इज नोन एज सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन इससे जिगजैग टाइप की मूवमेंट होती है जिससे बेसिकली फूड की मिक्सिंग होती है। वो मिक्सिंग जरूरी है ताकि फूड चॉप भी हो, यानी छोटे पीसेस में टूट फूट भी जाए, और साथ ही जो एंजाइम्स आपकी बॉडी में रिलीज हुए हैं, स्टमक के एंजाइम्स, इंटेस्टाइन में आने वाले एंजाइम्स, वो सारे एंजाइम भी फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सो दीज आर द मिक्सिंग मूवमेंट्स एंड they also happen in the GI tract. The mixing movements differ in different parts of the alimentary tract. In some areas, the peristaltic contractions cause most of the mixing. यानी ये जो पेरिस्टालसिस हो रही है ना, इससे भी मिक्सिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि इससे मिक्सिंग नहीं हो रही। ओके, दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन फॉरवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ द इंटेस्टिनल कॉन्टैक्ट इज ब्लॉक्ड और नॉट इंपॉर्टेंट। Another time, local intermittent segmental contraction happening, it does chopping and shearing of the food. So ठीक है। अच्छा, इसमें भी, इस मूवमेंट में भी कौन सा प्लेक्सिस इन्वॉल्व होगा? मायेंट्रिक प्लेक्सिस, बिकॉज यहां भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन किसका काम है? मायेंट्रिक प्लेक्सिस। सीक्रीशंस किसका काम है? मीजनर प्लेक्सिस का। ओके, तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट गट की मूवमेंट के। दो तरह की मूवमेंट्स हैं, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दूसरी सेगमेंटल मूवमेंट। अब हम बात करेंगे जीआई ट्रैक्ट की blood supply. The blood vessels of the GI tract are part of a more extensive system which is collectively known as splanchnic circulation. अब splanchnic circulation ये पूरा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। splanchnic circulation में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इसमें GI tract का venous drainage इंक्लूडेड है, इसमें स्प्लीन और पैंक्रियास का भी वेनस ड्रेनेज इंक्लूडेड है। इस सारे को मिलाकर हम कहते हैं स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन। और स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन बेसिकली ये होता है कि सारा ब्लड फ्रॉम 3 सोर्सेज, और वो 3 सोर्सेज क्या क्या है? जीआई ट्रैक्ट, स्प्लीन एज वेल एज पैंक्रियास। इन 3 सोर्सेज से जो ब्लड है वो अल्टीमेटली एंटर होता है इनटू द लिवर। इस डिजाइन ऑफ सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन। और फिर ये जो लिवर में ब्लड जा रहा है, दैट इज गोइंग वाया द पोर्टल वेन, और फिर ये लिवर साइनसॉइड्स में प्रोसेस होता है, पैरासाइट्स हैं, एंड मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट दे आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द लिवर। और यहाँ एक प्रोसेसिंग होती है हेपेटिक साइनसॉइड्स में इस सारे ब्लड की, जिसमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिमूवल भी है, उनका मेटाबॉलिज्म भी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस भी है, एंड आफ्टर दिस प्रोसेसिंग द ब्लड एंटर्स इनटू द जनरल सर्कुलेशन बाय द वेना केवा। अब पॉइंट ये है कि इस पूरे डिजाइन में ओवरऑल पिक्चर ये है कि इन 3 लोकेशंस का ब्लड, all these 3 locations entering into the liver by the portal vein, then it is being processed in the sinusoid, and then it is getting out in the systemic circulation. So ये 3 points हैं जो इस splanchnic circulation में important है, जो आपको पता होने चाहिए। The design of this system is such that all the blood that courses through the gut, spleen and pancreas, it flows into the liver by the portal vein. और लिवर में, लिवर साइनसॉइड्स में इसकी प्रोसेसिंग होती है, एंड देन इट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग। सो फॉर एग्जांपल देयर आर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट, वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर भी होते हैं। और जो हेपेटिक सेल्स हैं ये काफी सारा सामान एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 50 to 75% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड इन द हेपेटिक सेल्स, और फिर ये एंटर होता है इनटू द जनरल सर्कुलेशन, जैसे मैंने बताया, बाय द वेना केवा। सो ये पूरा जो डिजाइन है दैट इज ऑल नोन एज स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे क्लियर करना है कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स तो लिवर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो फैट्स हैं वो एक्चुअली इस तरह लिवर में स्टोर नहीं होती। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट आर नॉट कैरीड टू द पोर्टल ब्लड। ये एक्चुअली इंटेस्टाइन से एक पैरेलल रूट होता है, लैक्टियल्स के जरिए डायरेक्टली जनरल सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। सो लिपिड्स एंटायरली लिवर में रीअब्सॉर्ब नहीं हो जाते। ठीक है, सो दे एंटर इनटू द सर्कुलेशन लिम्फेटिक्स के जरिए। दे फर्स्ट एंटर टू द थोरैसिक डक्ट, और थोरैसिक डक्ट से फिर वेन्स में, और फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड देन इनटू द जनरल सर्कुलेशन। सो स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन का आपको जनरल आइडिया हो गया। अब एनाटॉमी ऑफ द ब्लड सप्लाई, आपको ब्लड सप्लाई मालूम है जीआई ट्रैक्ट की मेजर वेसल्स हैं। सो एओर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं। सो फॉर एग्जांपल देयर इज सीलियाक ट्रंक, देयर इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, देयर इज इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सो ऑल दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। This figure जो भी हमने देखी shows the general feature of the arterial blood supply to the gut, including the superior mesenteric, inferior mesenteric, and not shown in the figure are also the celiac artery which supplies to the stomach. तो ये 3 branches हैं basically aorta की, celiac, superior mesenteric, inferior mesenteric, which supply to the GI tract.
On entering the wall of the gut, the arteries branch and send smaller arteries circling in both the directions around the wall of the gut. So अगर ये wall of the gut है तो ये इस तरह से circle करती हैं branches. From the circling arteries, still much smaller arteries penetrate into the intestinal wall along the muscle bundles into the intestinal villi. So point is कि these arteries they branch and penetrate in the wall of the GI tract. Okay? अच्छा जी. Next जो बात मुझे आपसे करनी है which is important is the effect of gut activity and the metabolism in controlling the blood flow. देखो किसी भी organ को कितना blood flow मिलेगा ये बेसिकली लोकल डिमांड्स पे डिपेंड करता है बाय एंड लार्ज. यानी अगर जीआई ट्रैक्ट में ये इंटेस्टिनल पोर्शन है और यहाँ ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसको इंक्रीज ब्लड सप्लाई चाहिए बिकॉज द एक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई सो इट विल नीड मोर ब्लड सप्लाई. सो बेसिकली द ब्लड सप्लाई इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द लोकल एक्टिविटी. Under normal conditions, the blood flow in each area of the GI tract as well as in each layer of the gut wall is directly related to the level of local activity. For example, during active reabsorption of nutrients, blood flow to the villi has to be increased. During active contraction, blood flow has to be increased. Likewise, blood flow in the muscle layers of the intestinal wall increases when increased motor activity, यानी when there is more contraction. अभी आपने खाना खाया, स्टमक में गया, डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक की एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए. So we need more blood supply immediately after the meals, for example. Mechanism of increased blood flow during gastrointestinal activity. अब ऐसा क्या है कि जब गट की एक्टिविटी बढ़ती है तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है. सेवरल थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस सच एज कोलेसिस्टोकाइनिन, वासोएक्टिव. दीज आर ऑल सीक्रेटेड, दे आर ऑल वासोडाइलेटर. सो वासोडाइलेटर का मतलब ये है कि जब गट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये वाले सारे वासोडाइलेटर्स रिलीज होंगे और ये ब्लड सप्लाई का साइज इंक्रीज करेंगे, वासोडाइलेट करेंगे ताकि ज्यादा ब्लड आ सके. ओके. देन देयर आर important kinin molecules such as calidin and bradykinin. These are also vasodilators. अच्छा, फिर जब जाहिर है गट में एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी बिकॉज एटीपी विल बी बीइंग यूटिलाइज्ड ना. तो जब लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होगी इन द वॉल ऑफ द गट ऑब्वियसली देयर विल बी vasodilation because decreased oxygen is a signal for increased blood flow. So this also helps. And overall, basically, it's a mixture of secretion of vasodilator compounds and low oxygen levels, and all of this together increases the blood supply. अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है काउंटर करंट का, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझ लो. देखो ये विलाय है, दैट्स अ विलाय इन द इंटेस्टाइन, है ना. इसको तो छोड़ा करते हैं, आपकी इंटेस्टिनल विलाय. इसमें जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो ऐसे होती है बेसिकली कि जो आर्टरी है या आर्टरियोल्स हैं दे आर रनिंग वेरी मच इन अ पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. सो आर्टरी में ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेन में ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है. लेकिन पॉइंट ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इतना करीब हैं कि आर्टरी में जब ब्लड ऊपर जा रहा होता है तो आर्टरी में व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई और लो एज कंपेयर टू द वेन, हाई. सो ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाती है इनटू द वेन. अब पॉइंट ये है कि जब ब्लड ऊपर जा रहा है तो इस टिप ऑफ द विला, ये टिप ऑफ द विलस है ना, दिस इज द टिप ऑफ द विलस, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए. लेकिन अक्सर तकरीबन ज्यादातर ऑक्सीजन आर्टरी से निकल के वेन में एंटर हो जाती है बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द आर्टरी टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द वेन. सो ये डायरेक्ट जो डिफ्यूजन है ये इसको हम शंटिंग भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शंटिंग ऑफ ब्लड या बाईपासिंग ऑफ ब्लड. तो इससे हो ये रहा है कि आर्टरी का ऑक्सीजन निकल के वेन में तो जा रहा है, टिप ऑफ द विलस को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा बिकॉज सारा ऑक्सीजन यही यूटिलाइज हो गया ना, ऊपर तक पहुंचा ही नहीं. ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज लेके सीढ़ियों से बिल्डिंग में ऊपर चढ़ रहे हैं. सो दीज आर द स्टेयर्स. आपके हाथ में एक थैली है और इसमें बहुत सारे से फॉर एग्जांपल मैंगोज हैं. आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे या एक मैंगो इसने ले लिया, सेकंड पे पहुंचे एक इसने ले लिया, थर्ड पे एक उसने. जब आप टॉप फ्लोर पे पहुंचे तो अब आपके हाथ में थैली तो रह गई, मैंगो एक भी नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही ये ब्लड जो ऐसे ऊपर जा रहा है विलस की तरफ, टॉप फ्लोर की तरफ, इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचे ऑक्सीजन ले गए, ऑक्सीजन सारी की सारी डिफ्यूज कर जाती है इनटू द वेन. ये कहलाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये वाजर ऑफ किडनी में भी बिल्कुल ऐसे ही है. तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो टिप ऑफ द विलस है दिस इज प्रोन टू इंजरी, ये इंजरी के लिए प्रोन है. यानी अगर कभी कोई नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके टिप तक भी पहुंचती है, दिस इज इनफ.
लेकिन अगर कोई डिजीज कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन है जहां इसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, उस कंडीशन में the tips will slough off, they will die, they will necrose because यहाँ enough oxygen supply नहीं हो रही. So that's a very very important concept of counter current blood flow. So basically the point is कि arterial flow into the villus and the venous outflow out of the villus are in the direction opposite to each other, and that the vessels lie very very close to each other. यानी आर्टरी और वेन काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है. सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द आर्टरियोल इनटू द वेनियोल एंड इट barely reaches the tip of the villi. It does not reach to the tip of the villi. As much as 80% of the oxygen may take this short circuit या bypassing route. This type of countercurrent is also present in the vasa recta of the kidney. Under normal circumstances, this shunting of the blood is okay. It's not harmful, but in disease condition in which the blood flow to the gut becomes greatly curtailed, such as in the circulatory shock, for example, या अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई वैसे ही कॉम्प्रोमाइज है, तो ऑक्सीजन डेफिसिट इन द टिप ऑफ द विलाई बिकम ग्रेट. इसीलिए शॉक में देयर इज विलस एट्रोफी एट द टिप. ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. शॉक में द टिप मे बी डेड. ओके, then we have the nervous regulation या nervous depression of the GI blood flow. देखिए इस पूरे पैराग्राफ में जो बात आप अपने याद रखनी है वो ये कि there is substantial vasoconstriction of the GI blood supply if there is sympathetic system activation. अगर sympathetic system activate होगा, so there will be vasoconstriction, और इस vasoconstriction की वजह से the blood supply to the gut will be reduced. And this is important. अब आप जरा सोचें कि अगर आपकी बॉडी सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, व्हेन देयर इज फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन यानी कोई डॉगी पीछे लग गया है या कोई मार रहा है आपको, भाग रहा है आपके पीछे. नाउ यू हैव टू रन. जब आपको रन करना है तो आपके मसल्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए. आपकी गट बाद में काम कर सकती है, गट कैन वेट, डाइजेशन बाद में हो सकती है. इसीलिए सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है फाइट फ्लाइट सिचुएशन में, वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है गट की, और ब्लड रीराउट किया जाता है दूसरी जगहों पे. सो द ब्लड गोज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेशन. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, सो सिंपैथेटिक सिस्टम से blood supply to the gut will reduce. Remember this point. अच्छा, फिर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि अगर शॉक की कंडीशन होगी तो उसमें भी शॉक में पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कम जा रहा है तो गट को भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा. ओके, सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग vasoconstriction and reduces the blood supply to the GI tract. So that's all about this chapter. And इस chapter में we talked about all the general concepts, उनकी nerve supply, blood supply, structure. अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 64. इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट द प्रोपल्जन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड इन द जीआई ट्रैक्ट. देखें, प्रोपल्जन का मतलब ये है कि मूविंग फॉरवर्ड. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय प्रोपल्जन. और जीआई के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि अगर स्टमक है तो स्टमक से निकल के फूड चला जाएगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल करके अल्टीमेटली इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड प्रोपल्जन. और मिक्सिंग का मतलब ऑब्वियसली ये है कि अगर स्टमक के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो इट विल बी प्रॉपरली चॉप्ड एंड मिक्स्ड विद द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक, जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस हैं और दूसरे एंजाइम्स हैं, बिल्कुल इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी. सो इन दो कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या डिटेल्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ओके, now the time that food remains in each part of the alimentary tract is critical for optimal processing and absorption. यानी नेचर ने इस तरह से आपकी बॉडी को डिजाइन किया है कि जहां जितनी देर फूड को रहना है उतनी ही देर बेसिकली रहता है. इन एडिशन appropriate mixing must be provided, वरना वो एंजाइम्स के साथ मिक्स नहीं होगा तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता. बिकॉज द रिक्वायरमेंट फॉर मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन आर क्वाइट डिफरेंट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग. यानी स्टमक की जो ग्राइंडिंग मूवमेंट्स हैं दे हैव टू बी मच डिफरेंट, क्योंकि स्टमक में जो फूड आ रहा है वो एब्सोल्युटली रॉ टाइप का फूड है जो आपने च्यू करके ओरल कैविटी से नीचे भेज दिया हुआ है. अच्छा, यहाँ पर जो ग्राइंडिंग मूवमेंट्स होंगी ऑब्वियसली दे हैव टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्गर. और इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है सो दैट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड पेस्ट विच इज व्हाट वी कॉल काइम. और ये जो काइम है चूंकि ये लिक्विड फेज में है, इट इज ऑलरेडी समवॉट डाइजेस्टेड,
तो इसके लिए जो यहाँ पर मूवमेंट्स या कॉन्ट्रैक्शन या मिक्सिंग रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट होगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन हम किस एरिया की बात कर रहे हैं उस हिसाब से. ओके, सो एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द रिक्वायरमेंट्स आर different and therefore different actions happen. This chapter discusses these movements in detail. So let's first talk about the ingestion of food. The amount of food that a person ingests is determined principally by the hunger, यानी कितनी भूख आपको लगी हुई है उतना ही ज़्यादा आप खाना खाते हैं. And the type of food that preferentially you take is basically determined by your appetite. होता है ना ऐसा, अक्सर दिल कर रहा होता है कि यार आज मैंने जो है वो से फॉर एग्जांपल पालक खानी है, आज मैंने दाल खानी है, आज मैंने चिकन खानी है. सो दैट इज द एपेटाइट इशू. अब कितना खाना है दैट इज डिटरमाइंड बाय योर हंगर सेंटर. द मैकेनिज्म्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इस पूरे चैप्टर में हम एपेटाइट और हंगर ये न्यूरो फिजियोलॉजी का पार्ट है. वी विल डिस्कस देम इन दोज चैप्टर्स. बट आज मुझे जो चीज़ें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में दैट इज इंक्लूडिंग मैस्टिकेशन, जिसका मतलब है चबाना, च्यूइंग एंड स्वेलोइंग. और फिर वो जब चबाने के बाद हम बॉडी में अंदर इसोफेगस की तरफ खाने को लेते हैं उसको हम कहते हैं swallowing. तो ये दो प्रोसेसेस मुझे आपको समझाने. मैस्टिकेशन का मतलब है खाना चबाना. टीथ आर एडमायरेबली डिजाइंड फॉर च्यूइंग. That is very true. Your body is completely admirably designed. It's a beautiful, beautiful body. And it is designed teeth for chewing purpose. The anterior teeth, which are also called incisors, आपके different तरह के दांत हैं, आपको पता है ना, सामने के जो दांत हैं, these are called incisors. Then we have canines, then premolars and molars. So incisors are the front teeth. They provide a strong cutting action. And the posterior teeth, जो कि molars हैं, जिसको आप दाढ़ भी कहते हैं, पीछे के दांत, वो चबाने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं. सो आप कोई भी चीज़ है आप फ्रंट के टीथ से उसको कट कर सकते हैं और पीछे के दांतों से उसको चबा सकते हैं. All the jaw muscles working together can close the teeth with a force as much as 55 pounds. That is the power of your mastication on the incisors and 200 pounds on the molars. So the molars are very, very powerful. और obviously आपका जॉ है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे कि यू हैव एन अपर जॉ एंड देन यू हैव अ लोअर जॉ. तो यहाँ पे अपर जॉ में जो टीथ लगे हुए हैं और लोअर जॉ में जो टीथ लगे हुए हैं, दे कम टुगेदर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बोन्स. सो ऊपर मैक्सिला है, नीचे मैंडिबल है, इनकी मूवमेंट होती है तभी ये दांत एक दूसरे के करीब आते हैं. और ये एक दांत है और ये दूसरा दांत है, इसके बीच में जो भी फूड पार्टिकल आएगा वो पिस जाएगा. सो यू हैव दिस हाइड्रोलिक पंप मैकेनिज्म इन योर बॉडी जिसकी वजह से मैस्टिकेशन हो रहा है. और इस हाइड्रोलिक पंप का मोलर्स में इतना पावरफुल ताकत है, 200 pounds. Most of the muscles of chewing are innervated by fifth cranial nerve, trigeminal, and the chewing process is controlled by the nuclei in the brain stem. Stimulation of specific reticular areas in the brain stem taste centers will cause rhythmic chewing movements. In addition, the stimulation of areas in the hypothalamus, amygdala, as well as in the cerebral cortex near the sensory areas for taste can smell and cause chewing. So basically इसका ताल्लुक टेस्ट के साथ और स्मेल के साथ है. So you start chewing with the sensory input of taste and smell. Much of the chewing process is caused by a chewing reflex. The presence of a bolus in mouth, आप जैसे ही मुंह में निवाला रखते हैं, it initiates the reflex inhibition of the muscles of mastication which allows the lower jaw to drop. This drop in turn, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर गौर से सुने, initiate a stretch reflex of the jaw muscles that lead to rebound contraction. तो बेसिकली अगर ये आपकी ओरल कैविटी है, इसमें जैसे ही फूड गया, इस फूड के जाते ही जो मैस्टिकेशन के मसल्स हैं इनिशियली वो इनहिबिट होते हैं और इनहिबिट होने की वजह से जॉ ड्रॉप करता है और जॉ ड्रॉप होने से मसल स्ट्रेच होते हैं और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट है दैट इज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय द जॉ ड्रॉप. दिस एक्शन ऑटोमेटिकली रेजेस द जॉ और जब ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की तो जॉ वापस ऊपर की तरफ जाएगा और जब जॉ ऊपर जाएगा तो ऊपर मैक्सिला में टीथ लगे हुए हैं और जब ये जॉ ऊपर मूव करेगा तो ये टीथ आपस में टकराएंगे और मैस्टिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. है ना मजे की बात. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो द मसल्स रिलैक्स, जॉ ड्रॉप एंड देन इट गोज अप अगेन बाय कॉन्ट्रैक्शन. Chewing is an important phenomena for digestion of all the foods, but it is especially important for most fruits and raw vegetables because they have indigestible cellulose membrane. तो chewing से ये होता है कि उनकी membranes फटती हैं around their nutrient portion. So furthermore, chewing aids the digestion of food for another simple reason. Digestive enzymes act only on the surfaces of the food particles.
इसीलिए च्यूइंग से ये होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है. देयर आर सरफेस एरियाज विच आर एक्सपोज्ड और उनके एक्सपोज होने से एंजाइम्स पे रिएक्ट करना शुरू करते हैं. सो अगर ये कटिंग ना हो तो डाइजेशन का प्रोसेस भी इनिशिएट नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता कि बगैर च्यू किए आप सॉलिड फूड पार्टिकल को डायरेक्ट इसोफेगस या स्टमक में डाल दें और वहाँ वो जाके डाइजेस्ट हो जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके. Now, therefore, the rate of digestion depends on the total surface area exposed to the digestive secretions. In addition, grinding the food to a very fine particulate consistency prevents excoriation from the GI tract and increases the ease with which food is emptied from the stomach. इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा घरों में बच्चों को ट्रेन करते हैं कि भाई जब खाना खा रहे हों तो खाने को अच्छे से चबाने के बाद निगलें. यानी जो फूड प्रोसेसिंग है उसका जो पहला स्टेप है जिसको हम च्यूइंग कहते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए. बिकॉज इफ यू आर नॉट च्यूइंग प्रॉपरली तो आपके स्टमक पे ज़्यादा बर्डन आने वाला है, आपकी इंटेस्टाइन पे ज़्यादा बर्डन आने वाला है. सो यू प्रॉपरली च्यू इट ताकि वो आपके मुंह में ओरल कैविटी में ही एक फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए और फाइन पाउडर लाइक या लिक्विड लाइक पेस्ट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो एंजाइम्स इजीली एक्ट कर सकेंगे. स्टमक पे भी लोड कम पड़ेगा, इंटेस्टाइन पे भी कम पड़ेगा. ओके. सो च्यूइंग द फर्स्ट स्टेप. Then there is deglutition. Deglutition is the technical word for swallowing. जब आप खाने को निगलते हैं आपका खाना मुंह से हलक के जरिए होता हुआ इसोफेगस तक पहुंचता है. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं deglutition. Now, swallowing is a complicated mechanism principally because the pharynx subserves respiration and swelling. Pharynx is a combined channel. So let me see this diagram for you. So here we have the nasal cavity. It also opens back into the pharynx, and here this is the oral cavity. It also opens back into the pharynx. So pharynx is kind of a common channel for the respiratory system as well as for the digestive system, and therefore this mechanism is very, very interesting. Okay, right. So the pharynx is converted for only a few seconds. It's closed. You basically ये जो पूरा pharynx का mechanism है ना, ये pharynx और फिर नीचे larynx, ये दो चीजें हैं जो आपस में मिलके डायरेक्ट करती हैं फूड को और एयर को. देखें, there is a air tube which is trachea. इसके बिल्कुल पीछे there is a food tube which is esophagus. और pharynx ने एयर ऑब्वियसली गुजर के pharynx से जाएगी ट्रैकिया में और फूड पार्टिकल ने यहाँ जाना है. तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड. तो थोड़ी देर के लिए एक्चुअली होता ये है कि आपकी जो रेस्पिरेशन है फॉर फ्यू सेकेंड्स इट स्टॉप्स व्हेन यू आर टेकिंग फूड इनटू द इसोफेगस. और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आपने लैरिंक्स के जरिए ट्रैकिया को क्लोज नहीं किया तो फूड पार्टिकल ट्रैकिया में जा सकता है और अगर फूड पार्टिकल ट्रैकिया में चला गया तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, नमोनिया वगैरह. Okay. Now, pharynx is converted for only a few seconds at a time into a tract for propulsion of food. Otherwise, इसमें से air गुजर रही है. It is especially important that respiration should not be compromised because of swelling. In general, swelling can be divided into a voluntary stage, जिसमें आप actually food bolus को टंग के थ्रू पीछे प्रोपेल करते हैं pharynx की तरफ. Then there is a pharyngeal stage which is involuntary, आपके कंट्रोल में नहीं है और इसमें फूड pharynx से निकल के कहाँ चला जाएगा, esophagus में. और esophageal phase का मतलब ये है कि it will travel down into the esophagus into the stomach. और इसोफेजियल फेज भी इनवॉलंटरी है, यानी एक दफ़ा फेरिंग्स में फूड चला गया और इसोफेगस में फूड आ गया तो अब आप उसको रोक नहीं सकते. आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब आप स्टमक में मत जाओ. सो दीज टू स्टेजेस आर इनवॉलंटरी. अब जो वॉलंटरी स्टेज है स्वेलिंग का, व्हेन द फूड इज रेडी फॉर स्वेलोइंग, यानी आपने उसको अच्छा सा चबा लिया है, इट इज़ वॉलंटरली स्क्वीज्ड और रोल्ड पोस्टीरियरली इनटू द फेरिंग्स बाय द टंग से आप उसको पीछे फेंक देते हैं. From here on, swelling becomes entirely or almost entirely automatic and out of your control. So it becomes involuntary once it is inside the pharynx. फिर आते हैं involuntary stages. As the bolus of the food enters the posterior mouth and the pharynx, it stimulates the epithelial swelling receptors areas all around the openings of the pharynx. So muscle contraction होती है and the food particles goes down into the esophagus. और बहुत सारे और changes होते हैं which are important. So for example, hard palate, आपका जो रूफ ऑफ द माउथ है, ओरल कैविटी की रूफ है, उसमें आगे टीथ के साथ देयर इज हार्ड पैलेट और उससे पीछे देयर इज सॉफ्ट पैलेट. सो सॉफ्ट पैलेट इज पुल्ड अपवर्ड ताकि अच्छा गैप बने और फूड नीचे जा सके.
देन देयर आर पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स, ये हमने हेड एंड नेक एनाटॉमी में पढ़ रखा है, डिटेल में देखिएगा क्या होते हैं. ऑन ईच साइड ऑफ द फेरिंग्स आर पुल्ड मीडियली टू अप्रॉक्सिमेट ईच अदर. इन दिस वे द फोल्ड्स फॉर्म अ सैजिटल स्लिट थ्रू विच द फूड मस्ट पास इनटू द पोस्टीरियर फेरिंग्स. सो बेसिकली एक टनल बन जाता है जिससे फूड इजीली गुजर सके. अच्छा, वोकल कॉर्ड्स जो हैं, जो कि लैरिंग्स में होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अप्रॉक्सीमेटेड एंड द लैरिंग्स इज पुल्ड अपवर्ड. ये इंपॉर्टेंट है ताकि फूड पार्टिकल लैरिंग्स में एंटर ना हो जाए. सो दे डोंट गो इनटू द लैरिंग्स एंड जस्ट सिंपली गो इनटू द इसोफेगस. सो larynx और epiglottis की movement बहुत important है. Most essential is the tight approximation of the vocal cord, but the epiglottis help to prevent the food from ever entering as far as the vocal cord. So epiglottis एक covering है जो food particles को larynx और respiratory tree में जाने से रोकता है. So here we have the, you see, epiglottis, and obviously here are the vocal cords, and here in this direction will be the trachea. So trachea is the front air tube. अब ये food particle यहाँ से नीचे जब यहाँ आता है तो ये epiglottis completely block करता है इस channel को. जब ये channel यानी respiratory channel block हो जाता है तो food enter होता है only into the digestive channel. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर ये एपिग्लोटिस क्लोज न करे यानी एपिग्लोटिस ओपन ही रहे और ये फूड एंटर हो जाए इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग निमोनिया एंड वी ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट दिस. ओके, तो नेचर ने सिस्टम ऐसा रखा है कि वोकल कॉर्ड्स भी क्लोज होते हैं और एपिग्लोटिस भी कवर कर लेता है. नाउ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द लैरिंग्स आल्सो पुल्स अप एंड एनलार्जेस द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस. दिस आल्सो हेल्प कि फूड इसोफेगस में एंटर हो. एट द सेम टाइम द अपर 3 to 4 centimeters of the esophagus muscular wall, that basically called the upper esophageal sphincter, या इसको हम pharyngoesophageal sphincter भी कहते हैं sometimes, it relaxes. तो esophagus एक इस तरह से relaxation mode में जाता है ताकि ये food को accommodate कर सके. So it starts getting food there. Thus the food moves easily and freely from the posterior pharynx into the esophagus. So easily ये transition होती है, इसमें कोई मसला नहीं है. आप ज़ाहिर खाना खाते हैं, आपको कोई कभी trouble होती है? No trouble ever. You easily swallow the food. It's a very easy thing. Now, once the larynx is raised and the pharyngoesophageal sphincter become relaxed, the entire musculature of the larynx contract, beginning in the superior part of the pharynx, then spreading down. Not much difficult thing. Simple बात ये है कि यार आपने खाना चबा लिया, उसके बाद it goes down to pharynx and then down into the esophagus. Okay. Now, nervous regulation क्या है जी? Initiator of pharyngeal stage of swelling, यानी जब pharynx में food आता है तो what pathways are activated? The most sensitive tactile area of the posterior mouth and pharynx for initiating the pharyngeal stage of swelling lie in a ring around the pharyngeal opening with greatest sensitivity on the tonsillar pillar. So this is the area जो sensory impulses are transmitted from these areas. जब यहाँ जाके खाना लगता है ना, यानी जब आप खाना निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, तो व्हेन इस एरिया पे यानी टॉन्सिलर पिलर की एरिया पे, और ये टॉन्सिलर पिलर जो है ना, सपोज दिस इज योर ओपन माउथ और ये टॉन्सिलर पिलर्स हैं, फूड जब पीछे जाएगा, दीज आर द एरियाज जहाँ पे सबसे पहले टच करेगा. जैसे ही यहाँ फूड टच करता है, impulses are transmitted from these areas to the sensory portion of the trigeminal and glossopharyngeal nerves, so nerve 5 and nerve 9 into the medulla oblongata, either into or closely associated with the nucleus of Tractus solitarius, which receives initially all the sensory input from the mouth, and from here then it is processed to the higher centers such as the lower portion of the pons as well as the medulla, and the sequence of swallowing reflex is the same for one swallow to the next, and at the time of the entire cycle also remains constant. So ये बार बार आप खाना जितना pharynx से नीचे उतारते रहेंगे, टॉन्सिलर पिलर पर खाना लगता रहेगा, ये fibers will travel, the sensory fibers, they will travel in trigeminal and glossopharyngeal nerves to the Tractus nucleus, and they will be processed in the medulla. Okay, the areas in the medulla and the lower pons that control the swelling are collectively known as deglutition centers या swallowing centers. और फिर जो motor impulses हैं इन centers से they travel down to pharynx, obviously वापिस आएंगे, and they are also traveling by 5th, 9th and 10th cranial nerves. So आपने देखा किस तरह से इन pillars से input गया to the higher centers और वहाँ से मोटर इनपुट आया कि भाई तुम रिलैक्स हो जाओ, किस एरिया को रिलैक्स होना है, किस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट होना है. पर्पस ये है कि फूड नीचे चला जाए इसोफेगस में. In summary, the pharyngeal stage of swelling is principally a reflex action, and it is initiated by food
touching the pharyngeal pillars. It is almost always initiated by voluntary movement of food back into the mouth. So food से इनिशिएट होता है आपके हलक पर, आपके फेरिंग्स पर, फेरिंग्स के स्टार्ट पर, फेरिंग्स की एंट्री पर जैसे ही फूड अटैच होता है, हिट करता है, ये pharyngeal reflex स्टार्ट हो जाता है. ओके. Now the pharyngeal stage of swelling momentarily interrupts respiration. मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ी देर के लिए, it's a very very small time, few seconds, लेकिन epiglottis जो है वो shut down करता है trachea को. So this is the time when you are actually not taking any air into your respiratory system. So your respiratory system momentarily shuts up. It shuts down. The entire pharyngeal state of swelling occurs in less than 6 seconds. इतने कम टाइम में आप खाना निगल लेते हो और इतने ही कम टाइम के लिए your respiration is basically stopped. तो आपको एक्चुअली पता भी नहीं चलता है. It goes unnoticed. It is hardly noticeable. Then there is an esophageal stage. अब जो esophageal stage of swelling है, it involves two types of peristalsis. One is known as the primary peristalsis. The other one is known as the secondary peristalsis. पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर इसोफेगस में एक दफ़ा फूड आ गया, तो मैंने ये पेरिस्टालसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस चैप्टर में दिया है कि अगर ये फूड बोलस है जो यहाँ एंटर हुआ, इसके पीछे का जो मसल का एरिया है इट विल कॉन्ट्रैक्ट और ये फूड मूव करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पेरिस्टालसिस. और फिर एक सेकेंडरी वेव ऑफ पेरिस्टालसिस स्टार्ट होती है जो बाकी बचे कुछ फूड को भी क्लियर कर देती है. सो प्राइमरी पेरिस्टालसिस इज सिंपली द कंटिन्यूएशन ऑफ द पेरिस्टाल्टिक वेव दैट बिगिंस इन द pharynx. And this wave passes all the way from the pharynx to the stomach in about 8 to 10 seconds. Food swallowed by a person who is in the upright position is usually transmitted to the lower end of the esophagus in 5 to 8 seconds. Very short time. फौरन नीचे पेट में गया. If the primary peristaltic wave fails to move all of the food, then there is a secondary peristaltic wave as well. Okay, the secondary waves are initiated partly by the intrinsic neural. This is not important. The musculature of the pharyngeal wall and upper esophagus are striated muscle. Therefore, the peristaltic wave in these regions are controlled by the skeletal nerve impulses from the glossopharyngeal and vagus. So these are the peristaltic waves which control the mechanisms for contraction of esophagus upper third particularly. जबकि lower two third जो है esophagus का, उसमें smooth muscle है. अब चूंकि स्मूथ मसल है, बट दिस पोर्शन ऑफ द esophagus is strongly controlled by the vagus nerve that act through the connection with the esophageal myenteric nervous system. आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताए थे दो तरह के नर्वस सिस्टम, myenteric and mesenteric. When the vagus nerve to the esophagus are cut, the myenteric plexus of the esophagus becomes excitable enough after several days to cause strong secondary peristalsis. So जो enteric nervous system है, it takes over even if vagus are cut. Therefore, even after peristalsis of the brainstem swallowing reflex, the food fed by the tube or in some other way into the esophageal tube, because esophagus itself is a tube, still passes readily into the stomach. तो बात पूरी ये है ले दे के करने वाली कि जो esophagus है, it's a very efficient tube. इसमें जो food आता है वो within 5 to 8 seconds enters into the stomach. Because यहाँ पे primary peristaltic wave का भी control mechanism मौजूद है और secondary peristalsis भी हो रही है. Okay? सो मेक श्योर किया जा रहा है कि जो सारा फूड है वो एंटर हो जाए स्टमक के अंदर. नाउ द रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन. देखें, इसोफेगस से फूड जा रहा है कहाँ? स्टमक पे. तो स्टमक को पता है कि भाई मेरे पास फूड आ रहा है, इसीलिए अब स्टमक को रिलैक्स होना होगा. इट हैज़ टू रिलैक्स ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अकोमोडेट कर सके अपने अंदर. इसे कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन. So when the esophageal peristaltic wave approaches the stomach, a wave of relaxation in the stomach happens by inhibition of the myenteric plexus ताकि फूड एंटर हो सके. ये तो नहीं हो सकता ना कि ऊपर से फूड आ रहा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया. कॉन्ट्रैक्ट करके क्या निकालेगा बाहर? इसमें तो फूड अभी आया ही नहीं है. इसको इस वक्त फूड लेना है और जब इसको फूड लेना होगा तो ये रिलैक्स होगा ताकि फूड एंटर हो सके. ओके, सो ये कहानी होगी इस पैराग्राफ की. अब फंक्शन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, या उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं. इसोफेगस जहां स्टमक में एंटर होता है, इस जगह पे देयर इज हाई मस्कुलर टोन एंड दिस इज कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. ओके, या गैस्ट्रोइसोफेजियल बिकॉज इट्स बिटवीन स्टमक एंड इसोफेगस. दिस स्फिंक्टर नॉर्मली रिमेन्स कॉन्स्ट्रिक्टेड, बंद रहता है, एंड देयर इज अ प्रेशर ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट. इसीलिए ये इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर है ये क्लोज होता है. दैट प्रेशर इज रफली अबाउट 30 millimeters of mercury. In contrast to the midpoint of the esophagus, which normally remains relaxed. When a peristaltic swallowing wave passes down the esophagus, the receptive relaxation of the sphincter happens ताकि food stomach में enter हो ना. और अगर ये sphincter खुलेगा नहीं तो food pass होगा नहीं
और ऐसी कंडीशन को फिर हम एक नाम देते हैं, डिजीज कॉल्ड एकलेजिया। Stomach secretions are highly acidic and contain many proteolytic enzymes. The esophageal mucosa, except in the lower 1/8 of the esophagus, is not capable of resisting the digestive enzymes. Fortunately, the tonic constriction of the lower esophageal sphincter helps prevent significant reflux. क्या मतलब हुआ? ये स्टोरी ये है कि देखो, ये आपका esophagus है और ये आपका स्टमक है, ठीक है। स्टमक के अंदर बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl। अगर ये HCl रिफ्लेक्स करके esophagus में जाएगा तो सारी एपिथेलियम ऑफ esophagus को डैमेज करेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली आपका इस एरिया में देयर इज अ स्फिंक्टर जो इसको रिफ्लक्स होने नहीं देता। सो गैस्ट्रिक कंटेंट्स आर यूजुअली प्रिवेंटेड टू एंटर इनटू द esophagus बाय मींस ऑफ दिस स्फिंक्टर। और प्रिवेंशन ऑफ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर ये एसिड वगैरह यहाँ एंटर होंगे ना, देन देयर आर कंडीशंस कॉल्ड Barrett's esophagus फॉर एग्जांपल, एंड Barrett's esophagus कैन लीड टू adenocarcinoma फॉर एग्जांपल। सो दिस कंट्रोल इनहिबिशन ऑफ द लोअर esophageal sphincter is very very important. Prevention of the esophageal reflux by the valve-like closure of the distal end of the esophagus. ये फिर वही बात है कि the lower end of the esophagus is almost closed so that there is no reflux of the gastric contents. Another factor that help prevent the reflux is a valve-like mechanism of the short portion of the esophagus that extends slightly into the stomach. So इसकी anatomy इस तरह से basically कि ये थोड़ा सा stomach में इस तरह से enter होता है कि it helps, it behaves like a valve ताकि गैस्ट्रिक, तो दो चीज़ें हैं जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स के रिफ्लेक्स को रोक रही हैं। नंबर 1 हाई लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, और दूसरी है दिस वेल्व लाइक मैकेनिज्म। दोनों से ही गैस्ट्रिक कंटेंट्स प्रिवेंट होते हैं यहाँ एंटर होने से, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ ना, ये अच्छी चीज़ है ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंटर ना हो कम से कम, और हमारी इसोफेगस सेफ रहे यार, बची रहे, जान छुटी रहे, राइट। So with this background, let's now talk about the motor functions of the stomach. So हम बेसिकली इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्टिक वेव्स की बात कर रहे हैं। हमने इसोफेगस को डिस्कस किया अभी, किस तरह फूड इसोफेगस से ट्रेवल करके नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा फूड का, स्टमक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम वन बाय वन तमाम एरियाज में देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह की होती हैं। तो अभी वी हैव टू टॉक अबाउट स्टमक। अच्छा, देखें स्टमक के मोटर फंक्शंस हैं क्या। द मोटर फंक्शंस ऑफ स्टमक आर 3 बेसिकली, जो आपको याद रखने हैं। पहला है नंबर 1 स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड अंटिल द फूड कैन बी प्रोसेस्ड इन द स्टमक और वो डिओडेनम में पास हो सके। सो इट स्टोर्स द फूड। अभी हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कितना फूड हम स्टोर कर सकते हैं। Then stomach is also responsible for mixing of the food with gastric secretions and actually digest it to a point कि वो एक semi fluid mixture की फॉर्म में आ जाए, which is called chyme। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप जूसर के अंदर what you do, बनाना शेक अगर आप बना रहे हैं, सो बनाना डाल रहे हैं, मिल्क डाल रहे हैं, और जब आप इस जूसर को ऑन करेंगे तो इट विल मिक्स एवरीथिंग टुगेदर एंड इट विल मेक अ पेस्ट लाइक मटेरियल। तो ये जो पेस्ट लाइक मटेरियल है आपका स्टमक भी जनरेट करता है, इसको हम नाम देते हैं chyme। ओके, और तीसरा काम है स्टमक का कि एम्पटीइंग ऑफ द काइम एंड पुशिंग इट फॉरवर्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 3 जॉब्स हैं और ये तीनों इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि द स्टमक विल number 1 it will store the food, it will digest the food, mix the food with gastric juices and chop the food and make chyme, which is a semi-solid semi-liquid type of paste, which is then job number 3 pushed into the small intestine for further processing। स्टमक की एनाटमी अगर आप देखें तो उसको हम डिवाइड करते हैं इन द मेन चंक व्हिच इज द बॉडी एंड दिस उभरा हुआ पोर्शन इज नोन एज फंडस एंड देन टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन देयर इज एन एंट्रम एंगुलर नॉट। सो ये सारा हम एनाटमी में एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। ये जो इसोफेगस की तरफ स्टमक का एंड है इसको कार्डियक एंड भी बोलते हैं, और जो इंटेस्टाइन की तरफ है इसको पाइलोरिक एंड भी बोलते हैं। यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है वो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है जो रिफ्लेक्स को रोकता है। यहाँ भी एक स्फिंक्टर है मस्कुलर स्फिंक्टर व्हिच इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब ये स्फिंक्टर क्लोज होगा यानी कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो फूड पार्टिकल पास नहीं होंगे इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो फूड पार्टिकल विल ट्रांसफर। यहाँ फूड पार्टिकल से मेरा मतलब अब क्या है, काइम, क्योंकि स्टमक फूड पार्टिकल का एक जूस बना चुका होगा, एक पेस्ट बना चुका होगा, जिसको अब हम क्या नाम दे रहे हैं, काइम। सो दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टमक इज। ओके, स्टोरेज फंक्शन, अभी तीनों फंक्शन हम देखेंगे। पहला फंक्शन क्या था, स्टोरेज, और स्टोरेज कैपेसिटी जो है हमारे स्टमक की दैट इज अबाउट 0.8 to 1.5 लीटर्स, दैट्स व्हाट वी कैन स्टोर। यानी इतना खाना आप खा सकते हैं एक टाइम पर।
As food enters into the stomach, it forms concentric circles of food in the orate portion of the stomach, with the newest food lying closest to the esophageal opening. यार ये जाहिर सी बात है, ऊपर से खाना आ रहा है तो खाना ऐसे जमा होता जाएगा, नीचे जाता जाएगा और फिर इसकी स्टैक्स लेयर्स बनती जाएंगी फूड की इस तरह से, राइट. और फिर उस पर आपका स्टमक काम शुरू करेगा. जो स्टोरेज है वो बेसिकली ये टोटल कैपेसिटी है. फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है स्टमक का? फूड मिक्सिंग एंड देन प्रोपल्जन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. द डाइजेस्टिव juices of the stomach are secreted by the gastric glands, which are present in almost the entire wall and the body of the stomach except a few areas. ज़्यादातर स्टमक में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव जूसेस या गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं. These secretions come immediately into contact with that portion of the stored food lying against the mucosal surface. As long as the food is in the stomach, weak peristaltic constrictor waves, also called the mixing waves, begin in the middle to upper portion और बिल्कुल जूसर की तरह स्टमक घूमना फिरना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड की चॉपिंग शुरू हो जाती है. सो इस पेरिस्टाल्टिक एक्शन की वजह से the food starts being chopped. The constrictor rings also play an important role in mixing the stomach contents. Each time a peristaltic wave passes down the enteral wall towards the pylorus, it digs deeply into the food contents in the antrum. Yet the opening of the pylorus is still small enough. अब ये जो ओपनिंग है ना, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ये काइंड ऑफ क्लोज रहता है. तो यहाँ पूरे पैराग्राफ में बात ही चल रही है कि जिस पर फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है यानी उसकी चॉपिंग चल रही होती है, ये आपके स्टमक जूसर की तरह काम कर रहा होता है, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज होता है और फूड आगे नहीं जाता. That is important. And then you produce chyme, which is the semi liquid type of paste. After mixing, this is the food product. Okay. एक यहाँ पे अजीब सी एग्जाम्पल है. Well, when you vomit, for example, तो vomit में अगर थोड़ी देर बाद vomit हो रहा है, so you spit out basically chyme. तो वो जो पेस्ट निकलता है vomitus में, that is chyme. The degree of fluidity of the chyme leaving the stomach depends upon the relative amount of food taken. पानी आपने कितना इस्तेमाल किया था, किस तरह का फूड लिया था, इन तमाम चीज़ों पर मैटर करता है कि आप कितना efficiently, कितना consistent, smooth chyme बना सकते हैं. The appearance of the chyme is that of the murky semi-fluid liquid or paste. अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है हंगर कॉन्ट्रैक्शंस का. यार ये नाम से ही समझ में आ रही बात क्या है. हंगर कॉन्ट्रैक्शन, भूख लगती है तो पेट में मरोड़ उठता है, पेट में दर्द उठता है, वो कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं पेट में. दैट इज इन फिजियोलॉजी नोन एज हंगर कॉन्ट्रैक्शंस. Now, besides the peristaltic contraction that occurs when the food is present in the stomach, another type of intense hunger contractions happen when the stomach is actually empty. And that is sometimes also very, very painful. And that can appear periodically, such as every 2 to 3 minutes. Hunger contractions are most intense in young people, healthy people. So these are signs of good health actually, that your stomach is requiring food. When hunger contractions occur in the stomach, the person sometimes experience mild pain as well. And these are called the hunger pangs. और थोड़ा खाना खा ले सेट हो जाता है बंदा, है ना. स्टमक एम्प्टिंग क्या चीज़ है? नाम से ही जाहिर है कि स्टमक ने अब जो मेहनत करके काइम जनरेट कर लिया है वो इंटेस्टाइन में फॉरवर्ड होगा. दैट इज कॉल्ड स्टमक एम्प्टिंग. It is promoted by intense peristaltic contraction in the stomach wall so that food can be pushed into the small intestine. At the same time, the emptying is opposed by varying degrees of resistance. Unnecessary line यार, कंफ्यूज मत किया करो. फिजियोलॉजी में ऐसी लाइंस काफ़ी सारी आती है ना गाइटन में, जिसको पढ़ के लगता है यार ये लाइन क्यों लिखी थी, इसका मतलब क्या था, कंफ्यूजन होती है. Now, intense enteral peristaltic contraction during stomach emptying, pyloric pump. ना जैसे आपका हार्ट काम करता है ना, जस्ट एक्ट्स लाइक अ पंप. ये पंप करता है, ब्लड बाहर निकलता है वेंट्रिकल से, ऐसे आपका स्टमक काम करता है और फूड पुश होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. मोस्ट ऑफ द टाइम द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आर वेरी वीक and function mainly to cause mixing of the food. However, for about 20% of the time while food is in the stomach, the contraction becomes very, very intense. और ये intense contraction ज़रूरी है ताकि food को push किया जा सके into the small intestine. These intense peristaltic contractions often create 50 to 70 centimeters of the water pressure. इतना severe pressure है और वो pressure चाहिए भी ताकि food intestine में move हो सके. When pyloric tone is normal, each strong peristaltic wave forces up to several millimeters of chyme into duodenum. And thus, peristaltic wave, in addition to causing mixing of the stomach, also, is important phenomena as pyloric pump. Because it's a pump, because it is pushing something forward. Now, role of the pylorus is controlling the distal opening of the stomach is the pylorus, which has the pyloric sphincter, which is usually closed.
सो ये जो डियोडेनम में एंटर हो रहा है, here we have the pyloric sphincter, ये जब तक ओपन नहीं होगा फूड आगे डियोडेनम में नहीं जाएगा. Despite normal tonic contraction of the pyloric sphincter, the pylorus usually is open enough for water and other fluid to go easily. So it's not a very tight sphincter. Yet the constriction usually prevents the passage of food particles until they have become mixed with the chyme to almost the fluid consistency. The degree of constriction of the pylorus is increased or decreased under influence of various hormonal या nervous signals. अभी हम बात करेंगे इनकी. Regulation of the stomach emptying, this is important. अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टमक एम्प्टिंग का जो आपको पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर फॉर स्टमक टू एम्प्टी व्हाट नीड्स टू बी हैपन. मैं अगर आपसे स्टमक का पूछूं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, यस. और अगर मैं आपसे पाइलोरिक स्फिंक्टर का पूछूं तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होनी चाहिए. सो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. यानी ये नहीं हो सकता कि स्टमक भी रिलैक्स हो रहा है और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो रहा है, ऐसा नहीं होगा. इट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट ताकि ये पंप की तरह पुश करे फूड को. और ये भी नहीं हो सकता कि स्टमक पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना. तो ये जरूरी है कि आपको सीक्वेंस समझ में आए कि स्टमक विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पाइलोरस विल बी रिलैक्सिंग. अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो फूड मूव करेगा फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग होगी. अदरवाइज गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग नहीं होगी ना. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. अब इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ इज इट रेगुलेटेड एट न्यूरोनल लेवल और एट हार्मोनल लेवल. सो द रेट एट विच stomach empties is regulated by signals from the stomach and the duodenum. However, the duodenum provides far more potent signals controlling of the emptying of chyme into the duodenum at a rate no greater than the rate at which chyme can be digested and absorbed. Confuse कर दिया है. बॉटम लाइन ये है कि स्टमक और डियोडेनम में जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को. अब कुछ फैक्टर्स वो हैं जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को प्रोमोट करेंगे. प्रोमोट करने का मतलब ये है कि रैपिड एम्प्टीइंग, फूड आगे चल गया इंटेस्टाइन के अंदर, डियोडेनम के अंदर. सो दे प्रोमोट गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, या दूसरे अल्फाज में कहूँ दे प्रोमोट डियोडेनल फिलिंग. एक ही बात है. ओके. नाउ इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक फूड एंड वॉल्यूम ऑन द रेट ऑफ एम्प्टीइंग. Increased food volume in the stomach promotes increased emptying. So अगर ज़्यादा खाना खाएंगे ज़्यादा emptying होगी. सिंपल लॉजिक है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. ज़्यादा खाया तो ज़्यादा खाली भी तो करना है. However, it is not increased storage pressure of the food in the stomach that causes the increased emptying, because in the usual normal range of volume, the increase in the volume does not increase the pressure much. However, a stretching of the stomach wall does elicit local myenteric reflexes, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की और एम्प्टिंग बढ़ेगी. तो जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा एम्प्टिंग होगी, पहला पॉइंट. देन देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, और ये गैस्ट्रिन निकलता है फ्रॉम द जी सेल्स इन द एंट्रम ऑफ द स्टमक, और इसका काम भी है प्रोमोट करना किस चीज को, स्टमक की एम्प्टिंग को. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कि गैस्ट्रिन भी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और फूड पार्टिकल्स को मूव करवाता है आगे. तो ये दो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं. नंबर वन जो प्रोमोट कर रहे हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को, नंबर वन इज फूड इटसेल्फ. जितना ज़्यादा फूड अंदर आएगा उतना बाहर भी निकालना, सो एम्प्टिंग बढ़ेगी. एंड फैक्टर नंबर टू इज गैस्ट्रिन. अब मुझे एक दो फैक्टर्स आपसे डिस्कस करने जो इनहिबिट करेंगे स्टमक एम्प्टिंग को. नंबर वन, डियोडेनम enterogastric nervous reflex. Very important. So when the food enters the duodenum, multiple nervous reflexes are initiated from the duodenum. तो अब imagine this is duodenum और इसमें stomach से food आ रहा है. अब इसमें क्या क्या reflexes शुरू होते हैं. These reflexes pass back to the stomach to slow or even stop stomach emptying. और ये बड़ी लॉजिकल चीज़ है. इसको अगर आप थोड़ा फिलोसॉफिकली समझें ना, देखें ये स्टमक है और ये आगे डियोडेनम है. अब ये एक दफ़ा एम्प्टी हो गया. अब जैसे ही डियोडेनम में फूड आया तो अब डियोडेनम स्टमक से कह रही है कि भाई अब रुक जाओ यार, अब मजीद फूड मत भेजो, मेरे पास ऑलरेडी कायम आ गया है, मुझे इसको प्रोसेस करना है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, इट विल स्टॉप इट, है ना. तो अब रिफ्लेक्सेस ज़रा देखें क्या क्या है. These reflexes are mediated by three routes. Number one, directly from the duodenum to the stomach through enteric nervous system. कि भाई मैं भर गया हूँ, प्लीज एम्प्टिंग को रोको. सो अब बॉटम लाइन ये है कि डियोडेनल फिलिंग विल स्टॉप गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. ये बात आपको याद रखनी है. अब दिस हैपेंस बाय द नर्वस सिस्टम व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. इट आल्सो हैपेंस थ्रू द एक्सट्रिंसिक नर्व्स, यानी
डियोडेनम से लूप्स ट्रेवल करके जाएंगे सिम्पैथेटिक गैंग्लिया, वापस आएंगे स्टमक तक. दिस इज ऑल्सो वन लूप. एंड देन देयर इज ऑल्सो अ स्लाइट एक्सटेंट थ्रू द वेगस नर्व के थ्रू भी इस एम्प्टिंग को रोका जाता है. सो दीज आर फ्यू मैकेनिज्म्स विच इफ यू रिमेंबर इज गुड, बट द पॉइंट इज यू शुड रिमेंबर द लॉजिक कि जब डियोडेनम के अंदर फूड पहुंचेगा तो स्टमक की एम्प्टिंग रुक जाएगी. ओके, एंड दैट मेक्स सेंस. All these parallel reflexes have two effects on the stomach emptying. First, they strongly inhibit the pyloric pump and they increases the tonic contraction of the pyloric sphincter. तो pyloric sphincter की अगर contraction बढ़ जाएगी इन reflexes की वजह से तो gastric emptying वैसे ही रुक जाएगी ना यार. लॉजिकल चीज़ है, देखो अगर समझ के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा. The type of factor that are continually monitored in the duodenum and can initiate the enterogastric inhibitory reflexes are following. Distension of the duodenum, जो कि फूड से होगा ना, जैसे ही duodenum में काइम एंटर होगा इनकी वॉल्स की डिस्टेंशन होगी और duodenum को पता लग जाएगा कि मेरे अंदर बहुत सारा काइम आ गया, मुझे अब इसको प्रोसेस करना है. तो duodenum अब स्टमक से कहेगा भाई तू मजीद एम्प्टिंग न कर, मजीद चीज़ें मेरे पास न भेज. सो डिस्टेंशन ऑफ duodenum is important. Then presence of any irritation on the duodenal mucosa will also stop. यानी अगर किसी को अल्सर है तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रुक जाएगी. Acidity of the duodenal chyme, too much acid. High osmolality in the chyme. The presence of certain breakdown products in the chyme, particularly of those of proteins, perhaps to a lesser extent of fats. So these are the initiating factors to stop gastric emptying. The enterogastric inhibitory reflex, अब हो क्या रहा है कि डियोडेनम जब फील कर रहा है कि मैं भर गया हूं तो वो स्टमक की एम्प्टिंग को रोक रहा है. इसे हम नाम दे रहे हैं enterogastric. Entero for intestine, gastric for stomach. Enterogastric inhibitory reflux. They are especially sensitive to pressure, to presence of irritants and acids. ये बात अभी हमने ऊपर कर ली. So that's okay. We have discussed this point. Then this is all also done. Finally, either hypotonic flavors or ये बात हमने कर ली. So remember these factors and बाकी का paragraph is okay to go. Then the next heading is hormonal feedback from the duodenum inhibits the gastric emptying. Role of fats and hormone cholecystokinin. ये सुना जरा, ये एक important discussion है तो गौर से सुनिएगा. Now hormones released from upper intestine also inhibit gastric emptying. The stimulus for releasing these inhibitory hormone is mainly the fats entering into the duodenum. Although other types of food can get these hormones released, लेकिन होता ये है कि duodenum में जैसी फैट पहुंचती है काइम में तो उस फैट की वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं जो जाके स्टमक की एम्प्टिंग को रोकते हैं. और वो हार्मोन्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, सुने. On entering the duodenum, the fat exerts several different hormones from the duodenal and the jejunal epithelium. और उन हार्मोन्स का बेसिकली काम ये है कि वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को जाके मजीद टाइट कर देते हैं ताकि वो सही से बंद हो जाए और स्टमक का कंटेंट मजीद ना आ सके इनटू दी duodenum. यार ये ऐसे है, इसको तरह अगर मैं फिलोसफिकली आपसे एक किस्सा देखें. आप सपोज कि आपका बहुत अच्छा दोस्त आया हुआ है एंड इन योर ड्राइंग रूम यू नाउ हैव टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड, सो यू हैव टू क्लोज द डोर. अब आप ये दरवाज़ा बंद करेंगे ताकि आप अच्छा टाइम इसके साथ गुजार सकें. इसी तरह जब आपकी इंटेस्टाइन में फैट आ जाता है तो आप फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इसके साथ अच्छा टाइम गुजारना पड़ेगा, इसको प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा. तो अब आपको ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, स्टमक से आने वाला दरवाज़ा, ताकि मजीद कोई चीज़ें ना आए वरना आप डिस्टर्ब होंगे. जैसे ड्राइंग रूम में कोई ना आए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, अब वो कौन सा हार्मोन है जो फैट के आने से रिलीज होता है और जो स्टमक को जाके रोकता है, उनमें से ये हार्मोन आपने याद रखना है, विच इज cholecystokinin. इट इज रिलीज फ्रॉम jejunum एंड द हार्मोन एक्ट्स एज एन इनहिबिटर to block increased stomach motility caused by gastrin. So cholecystokinin जाके स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, गैस्ट्रिन के ऑपोजिट काम करता है बेसिकली, क्योंकि गैस्ट्रिन प्रमोट कर रहा था, ये ब्लॉक कर रहा है. और भी हैं इस तरह के हार्मोन्स जो फैट की वजह से रिलीज होते हैं और गैस्ट्रिक एम्प्टीन को रोकते हैं. फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वर्क्स इन द सेम वे. सो अब पूरी समरी क्या है, एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक इज कंट्रोल्ड only to moderate degree by the stomach factors. They are actually by and large controlled by duodenal factors. ये बात आपने नोट की कि जब duodenum में काइम आएगा तो रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे, जब duodenum में फैट आएगा तो हार्मोन्स निकलेंगे. So it's basically the duodenal factors which actually control the stomach emptying. Okay, probably more important control of stomach emptying resides in the inhibitory feedback signals from the duodenum. Enterogastric reflex is one example and hormones such as CCK is the other example.
Okay, these feedback inhibitory mechanisms work together to slow the rate of emptying when too much chyme is already in the duodenum and the chyme is excessively acidic, contains too much fat or hypertonic. जब कभी duodenum में ये सिनेरियोज होंगे, स्टमक को कहा जाएगा कि भाई तुम एम्प्टी होना रुक जाओ। ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है क्योंकि डिओडेनम इस वक्त बिजी है अपने फ्रेंड के साथ, उस फ्रेंड का नाम है काइम और ये चाहता है कि ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद रहे। सो अनलेस द काइम इज प्रॉपर्ली हैंडल्ड दिस डोर विल नॉट ओपन। तो जैसे ही डिओडेनम में ये काइम भर जाता है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस रुक जाती हैं, स्टमक एम्प्टीइंग रुक जाती है। सो दैट्स द वेरी वेरी लॉजिकल थिंकिंग एंड आई होप आई मेड इट इजी फॉर यू। तो स्टमक के बाद अब फूड कहाँ एंटर होगा? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की मूवमेंट्स कैसे होती है। अब जब फूड एक दफा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो यहाँ पर भी दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। वन इज द मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट्स और दूसरी प्रोपल्सिव मूवमेंट है, यानी फूड अच्छे से मिक्स हो जाए तमाम डाइजेस्टिव जूसेस के साथ जो पैंक्रियास से आ रहे हैं या लिवर से आ रहे हैं बाइल की फॉर्म में, उसकी मिक्सिंग with the chyme and then the other one is the propulsive movement, यानी जो भी काइम है वो आगे आगे पुश होता रहा है। तो ये दो तरह की मूवमेंट्स हैं, यानी और ये ऐसा नहीं होता कि अगर एक जगह पे मिक्सिंग मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स गोइंग ऑन टुगेदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। सो फॉर एग्जांपल आप देखें, इंटेस्टाइन कैन हैव दीज रेगुलर कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट्स जिससे काइम आगे फूड पार्टिकल्स जो भी डाइजेस्टेड वे में है वो आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। देयर कैन बी आइसोलेटेड मूवमेंट्स, यानी बहुत सारा सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एट वन प्लेस देयर इज। इट कैन बी irregularly spaced, so some of the muscles are contracting at a regular pace, some of them are at an irregular pace. See this segment and see this segment, they are different and they can be very weak contractions as well. So there are different types of contractions. The food is still being chopped and it is still being mixed with the digestive enzymes. That's the job. और ultimately अब ये food कहाँ जाएगा? This will ultimately small intestine से it will enter into the large intestine, है ना? और यहाँ पे appendix होगा and नेचर का सिस्टम ऐसा है आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट का कि जब कभी फूड एक एनाटॉमिकल लोकेशन से दूसरी एनाटॉमिकल लोकेशन में एंटर होता है तो वहाँ कोई वैल्व होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर आइलियम है, दिस इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन। तो इस जगह पर एक वैल्व होगा, इसका नाम होगा आइलियोसीकल वैल्व, बिकॉज ये कोलॉन का जो पार्ट है इनिशियल पार्ट दैट इज नोन एज सीकम, सो आइलियोसीकल वैल्व। अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो जो स्टमक का था। देखें, स्टमक से जब काइम एंटर हुआ था इनटू द जियोडेनम तो यहाँ से एक रिफ्लेक्स इनिबिशन गया था, स्टमक को कहा गया था भाई अब रुक जा, मजीद काइम मत भेज। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी है, जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो काइम एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन इनहिबिट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को कि भाई अब रुक जा, मजीद काइम न भेज, यानी इस स्फिंक्टर को, इस वाल्व को बंद किया जाएगा उस वक्त जब ड्राइंग रूम में आप अपने किसी खास के साथ बैठे, यानी जब कोलॉन भरेगा, कोलॉन में काइम पहुंचेगा तो देयर विल बी नंबर वन इनहिबिशन ऑफ इंटेस्टाइनल एम्प्टीइंग, बिल्कुल वैसे व्हेन देयर वाज इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो इलियोसिकल वाल्व है वो टाइट हो जाएगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बंद हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस्ट्रोडियोडेनल वाल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हुआ था। सो जनरल कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ठीक है, कि देयर इज अ मिक्सिंग मूवमेंट एंड विद द मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस देयर आर प्रोपल्सिव मूवमेंट्स व्हिच इज व्हाट वी कॉल द पेरिस्टाल्सिस। अब ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये इसकी स्पीड वगैरह याद रखना, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि कितनी वेलोसिटी होती है, क्या ये कोई ना पूछता है ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली इतना पता होना चाहिए, ये डायरिया के अंदर पेरिस्टाल्सिस की जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो टाइमिंग है ये चेंज हो जाती हैं। यू जाहिर है poo out more fluid in diarrhea because your peristalsis increase. That is one of the factors that happens in diarrhea. And how is it all controlled? The control of peristalsis by the nervous and the hormonal signals. देखें, इंटेस्टाइन में बहुत सारे हार्मोन्स वो रिलीज हो रहे हैं जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को रोक रहे थे, सो दे वर इनहिबिटरी फॉर गैस्ट्रिक सिस्टम सच एज कोलिसिस्टोकाइनिन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि ये डिओडेनम में से रिलीज होगा एंड इट विल गो एंड एक्ट ऑन स्टमक, उसकी एम्प्टीइंग को रोकेगा। अब काफ़ी सारे हार्मोन्स वो भी हैं जो डिओडेनम की जो मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसको दे पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग गैस्ट्रिन, सीसीके, इंसुलिन, मोटिलिन, सीरोटिलिन, ऑल ऑफ विच एनहांस द इंटेस्टिनल मोटिलिटी। सो ये इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेंगे ताकि मूवमेंट ऑफ काइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी ऑन रहे। हालांकि दो आपको याद रखने हैं विच आर इनहिबिटरी टू द मूवमेंट्स एंड दीज आर
secretin and glucagon, so they are inhibitory to the intestinal movement. ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात आपको बस याद रखनी है अबाउट द फूड मूवमेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मुझे इस डायग्राम पे बेसिकली आपको समझा देता हूँ. सी, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द कोलॉन और ये सीकम है, और यहाँ मैंने आपको बताया वेल्व है, इसका नाम है इलियोसिकल वेल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर. अब जब फूड पार्टिकल स्टमक की तरह, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात समझाई कि जैसे स्टमक से डिओडेनम में जब फूड आता है तो डिओडेनम से रिफ्लेक्स जाता है स्टमक को कि स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शंस, स्लो डाउन द एम्प्टिंग. सेम चीज यहाँ होती है. जब काइम एंटर होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन तो काइम से सिग्नल जाता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन कि भाई स्टॉप डाउन द कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, तो ये सेम स्टोरी है कि जब फूड आगे जाएगा तो कोलॉन स्टॉप करेगा अपने प्रीवियस पार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है. सो ये चीज अब यहाँ एक्सप्लेन करी है कि ऑन रीचिंग द इलियोसिकल वेल्व द काइम इज समटाइम्स ब्लॉक्ड फॉर सेवरल आवर्स until the person eats another meal at the time. Gastroileal reflux intensifies the peristalsis in the ileum and it forces the chyme into the large intestine. So ये जो असल में लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी भी है ना, तो इसमें काफ़ी देर तक फूड स्टोर भी रहता है जब तक आप दोबारा नहीं खाते. सो फॉर एग्जांपल आपने सुबह नाश्ता किया और वो नाश्ता डाइजेस्ट होते 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 यहाँ आके फिर वो रुक जाता है, फिर आप दोपहर में खाना खाते हैं तो पीछे से और प्रेशर आता है तो ये फूड फिर फॉरवर्ड मूव करता है. दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी, राइट? Now, propulsive effect of segmentation movement. The segmentation movement, although lasting for is not very high yield stuff, powerful, rapid. ये word आपको पता होना चाहिए. अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि पेरिस्टाल्सिस हो रही है, फूड आगे मूव कर रहा है, काइम आगे मूव कर रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है आफ्टर सम टाइम. उसका पर्पस ये होता है कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को फ्लश करे और सारा काइम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन मूव हो जाए. दिस इज नोन एज द रश पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक रश. द इलियोसिकल वेल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो, बिल्कुल ऐसे जैसे स्टमक में था. मैंने आपको बताया था कि इसोफेगस है, स्टमक है, यहाँ पे जो वेल्व है ये रिफ्लक्स को रोकता है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स के रिफ्लक्स को इनटू द इसोफेगस. बिल्कुल ऐसे ही इलियोसिकल वेल्व जो है ना ये रिफ्लक्स को रोकता है. सो द कंटेंट्स डोंट मूव फ्रॉम द कोलॉन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो बेसिक आइडिया अगर आप ग्रैब करके चलेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी. ओके, सो इलियोसिकल वेल्व protrudes into the lumen of the cecum and therefore is forcefully closed when excessive pressure builds up in the cecum. The valve usually can resist several pressures, so this is a very protective valve. जब cecum भर जाता है तो ये valve shut down हो जाता है, और जब ये valve shut down हो जाएगा तो contents from the cecum into the small intestine move नहीं करेंगे. और वैसे भी you know what is the law of the gut, ये मैंने आपको बताया था ना अपनी पिछले सेक्शन में, law of the gut, कि things have to move in the direction towards the anus, they don't move backward. At least normally they don't move backward. Okay, so resistance to emptying, this is not high yield. Feedback control of ileocecal sphincter by reflux from the cecum. अच्छा, ये भी हमारे जीआई ट्रैक्ट का एक नॉर्मल फिनोमिना है कि मूवमेंट जो है, यानी डिओडेनम में जब फूड आएगा तो डिओडेनम में फूड एंट्री स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करेगी. बिल्कुल ऐसे ही जब काइम लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ काइम की एंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी. तो आगे जैसे जैसे फूड जाता है वो पीछे की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. सो द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इलियोसिकल स्फिंक्टर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द पेरिस्टाल्सिस इन द small intestine is controlled by the cecum. When the cecum is distended, यानी जब cecum में काइम पहुंच जाता है तो ये जो valve है ये close हो जाता है और contraction of the intestine slow हो जाती है. So intestinal emptying goes down and the valve, the ileocecal sphincter, is tightly closed. Okay, now we are left with the movements in colon. Let's see the principal function of the colons are. आपको ये देखना होगा ना कि यहाँ पे function है क्या. यहाँ पर main function है absorption of water and electrolytes from the chyme, and by reabsorption of water the chyme becomes semi-solid structure and this is what we call the feces. ये हम अपनी body से बाहर निकालते हैं as waste product. और दूसरा काम है large intestine का storage of the fecal matter until we go to the toilet and we do the process of defecation. तो ये दो jobs हैं large intestine की. The proximal half of the colon is concerned principally with the absorption of water and electrolytes and the distal half is concerned with the storage. Because
colon wall movements are not required for these function. The movement of the colon are normally sluggish. So यहाँ movement इतनी ज़्यादा powerful नहीं है, because यहाँ पे काम ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे कोई ज़्यादा forward movement करनी नहीं है. Simple pressure की वजह से feces move करते रहते हैं and things move in the forward direction. इसलिए contractions are literally sluggish. Mixing movements होती हैं which are what we call the hostrations. In same manner as the segmentation movement occur in the small intestine, there are also some sort of movements in the large intestine. और यहाँ पे longitudinal muscles की strips हैं, जब ये contract करते हैं so hostrations are produced. So but these are not very powerful movements, so you don't need to worry about the movement bit in the large intestine. Each hostration यानी contraction is another name for कितने seconds के लिए रहती है, not important. Okay. Propulsive movement, mass movement, that is what is important in colon context. Much of the propulsion in the cecum and ascending colon results from the slow but persistent haustral contractions, requiring as many as 8 to 15 hours to move the chyme from the ileocecal valve through the colon, while the chyme becomes fecal in quantity, a semi-solid instead of semi-fluid. So ये काफ़ी टाइम लगता है इसमें, यानी पूरा जो ileocecal valve में जब chyme enter हुआ था, इसको ये ileocecal valve है, ascending colon, transverse colon, descending colon, it takes hours to reach from the ileocecal junction to the end of the colon. From the cecum to the sigmoid, the mass movements can, for many minutes at a time, take over the propulsive role. These movements usually occur only 1 to 3 times each day. In many people, especially for about 15 minutes during the first hour after eating the breakfast. So that's the time when you go to the toilet for pooping out, for defecation. A mass movement is a modified type of peristalsis characterized by, the following sequence of events. First, there is a constrictive ring that occurs in response to distended irritated point in the colon, usually the transverse colon. Then rapidly 20 or more centimeters colon distal, the contraction develops progressively with more force. और ये timing important नहीं है. A series of mass movement usually persists for 10 to 30 minutes. Then they cease, but perhaps return later, half a day later. When they have forced mass feces into the rectum, and then the desire for defecation is felt. So it is the rectum when it is filled by the mass movement. ये movement करके muscles ज़्यादा contract करेंगे, और जब rectum में एक दफ़ा fecal material आ जाएगा, then you will have the desire to defecate. अभी मैं ये अलग से heading है पूरी बताता हूँ. Initiation of the mass movement by the gastrocolic and the duodenocolic reflexes. Now, gastrocolic from the stomach to the colon, from the duodenum to the colon. Duodenocolic. The appearance of mass movement after meals is facilitated by gastrocolic and duodenocolic reflexes. इसका क्या मतलब है? These reflexes result from distension of the stomach and the duodenum. They occur either not at all or hardly at all when extrinsic autonomic nervous control to the colon have been removed. Well, क्या confuse कर रहे हो? Now, मैं आपकी स्टोरी समझाता हूँ क्या. Irritation of the colon can also initiate the intense mass movement. आप देखें इसको इस तरह ना, again, think about the philosophy. This part of physiology is very philosophical. So, see for example, if there is distension of the stomach and distension of the duodenum, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर से नया फूड आपने भर लिया अपने स्टमक में और काइम भर गया है इंटेस्टाइन में, तो अब यहाँ से सिग्नल जाते हैं टू द कोलॉन कि भाईजान आपके अंदर जो पुराना माल पड़ा है ना उसको खाली करो. दिस इज व्हाट वी कॉल द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एंड द ड्यूडेनोकोलिक रिफ्लेक्स. जब स्टमक भरेगा तो आपको पॉटी आनी है. रीजन ये है क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है कि भाई पुरानी चीजें खाली करो, ऊपर से नया माल आ रहा है. That's the story. Okay, so let's now talk about defecation और इस reflex में कौन कौन सी nerves involved हैं that we have to talk. Most of the time rectum is empty of the feces because once it filled you initiate the defecation reflex. When a mass movement forces feces into the rectum, यानी अब जितना भी waste product है वो rectum में enter हो गया है, the desire for defecation immediately happens. Continual dribble of the fecal material through the anus is prevented by tonic constriction of the following. There is an internal anal sphincter and then there is an external anal sphincter. ये हमने anatomy में discuss किया हुआ है ताकि ऐसा ना हो कि भाई थोड़ा 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 करके जो है ना feces निकलता रहे. ऐसा नहीं होता. External
Anal sphincter is controlled by pudendal nerve, which is part of the somatic nervous system. ये हमने anatomy में detail में discuss किया हुआ है. This is what I have to talk right now. Defecation reflex. Ordinarily, defecation is initiated by the defecation reflex. One of these reflexes is an intrinsic reflex mediated by local enteric nervous system, जो आपके intestine में fit है. When feces enter the rectum, distension of the rectal wall initiate the afferent signals which are present in the myenteric plexus to initiate the peristaltic wave in the descending colon, sigmoid colon as well as the rectum, forcing the feces towards the anus. As the peristaltic wave approaches the anus, the internal anal sphincter should be relaxed. By inhibition from the external sphincter is also consciously voluntarily relaxed. तो जब जाहिर है देखें ये आपका नर्वस डिज़ाइन है ना पूरे कॉलॉन का पूरे इंटेस्टाइन का कि there are afferent signals. These are the afferent fibers. They go from the wall of these intestinal structures to the higher centers, and then they are ये वाला सारा part जो है this will be contracted, लेकिन जो sphincters हैं these will be relaxed ताकि you release the feces. Normally when the intrinsic myenteric defecation reflex is functioning by itself, it is relatively weak. To be effective in causing defecation, it usually must be fortified by another type of reflex, which is strengthened further by the parasympathetic reflex. और वो reflex को बताता हूँ क्या है, which deals with the sacral segments. When the nerve ending in the rectums are stimulated, signals are transmitted first into the spinal cord and then reflexly back to the descending colon, sigmoid colon, rectum and anus via the pelvic nerves. These parasympathetic signals greatly intensify the peristaltic waves. तो अब आप ये देखें डायग्राम में यहाँ पे these are the pelvic nerves. So they are coming back to different parts of the large intestine और इनका ऑर्डर ये है कि और पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करो और पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करो और पावरफुली ताकि फीसेस बॉडी से निकल के बाहर चले जाए. सो देयर इज अ वेरी सो दो तरह के नर्वस सिस्टम है, एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम डिफिकेशन करवा रहा है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको हेल्प आउट कर रहा है. ठीक है जी. Then defecation signals entering the spinal cord initiate other effects such as taking deep breath or not important. When it becomes convenient for a person to defecate, the defecation reflex can purposely be activated by taking a deep breath. You can poo out easily when you're taking deep breath, okay? Now, other autonomic reflexes that affect the bowel activity, what does that talk about? A very small paragraph. Aside from the duodenum, अब आप ना अपने आप से ये पूछेंगे ये सारे reflexes आपको आने चाहिए इस वीडियो के बाद. You should know what is a duodenocolic reflex, gastrocolic reflex. इन दोनों का मतलब ये है कि जब स्टमक फिल होगा या जब इंटेस्टाइन फिल होगी तो कोलॉन तेजी से एम्प्टी होगा. गैस्ट्रोआइलियल रिफ्लेक्स क्या चीज़ है? एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था कि जब डिओडेनम फिल होगा तो स्टमक की एम्प्टिंग रुकेगी. सो लर्न अबाउट दीज. Several other important nervous reflexes also can affect overall degree of bowel activity. They are peritoneointestinal reflex, renointestinal reflex, vesicointestinal reflex. Now remember, अभी तक हमने इस वीडियो में जितने रिफ्लेक्सेस की बात की है वो विद इन द जीआई ट्रैक्ट डेवलप हो रहे थे. यानी अगर हम एक रिफ्लेक्स जिसको हमने एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कहा था वो एक पार्ट जो कि एंटेरो है यानी डिओडेनम है और दूसरा पार्ट जो कि स्टमक है यानी गैस्ट्रिक है, तो वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक्ट वाज कंट्रोलिंग द अदर पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. लेकिन अब मामला चेंज हो गया, अब पेरिटोनियम का इनपुट है and intestine में effect है, renal and intestine and bladder and intestine. So now these are some external reflex measures as well. So peritoneal-intestinal reflex result from irritation of peritoneum. It strongly inhibits the excitatory enteric nerves and thereby causing intestinal paralysis. So if there is peritonitis, for example, it leads to intestinal paralysis. Now it makes sense to you कि what is peritoneal-intestinal reflex, especially in patients with peritonitis. Okay, the renointestinal and vesico-intestinal reflexes inhibit intestinal activity as a result of the kidney or the bladder irritation. Now imagine a scenario, somebody is presenting to you with say for example pyelonephritis. Pyelonephritis के patient में consider that there will be intestinal paralysis or there can be. इसी तरह bladder irritation either because of tumor or stone or cystitis, it can also lead to shutdown of intestinal system. So these are some other reflex mechanisms that you need to know. So with this the chapter is done and let us now begin chapter number 65. We are doing GI tract
binge watch. ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द सिक्रीशंस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. अब देखें, मैं स्टार्ट में भी पहले ये बात कर चुका हूं कि पूरा जो आपका जीआई ट्रैक्ट है ये ऑल टुगेदर 7 to 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड को हैंडल करता है. एंड ये जो 7 to 8 लीटर लिक्विड है ये सारे का सारा आपके फूड से नहीं आ रहा होता. देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्रीशन entering into the GI tract. So if this is esophagus, then we have stomach and then small intestine and then different areas पर there are different secretions entering into the GI tract. So for example, stomach की अपनी secretions हैं वो enter होती हैं, फिर small intestine की और even large intestine में. But then we have a very big organ, liver, जो कि अपनी secretions भेजता है via the bile duct. We have pancreas here, जो pancreatic duct के जरिए. So the point is कि जो GI tract है it is receiving a lot of different types of secretions. उनका हमें डिस्कशन करना है इस चैप्टर में कि वो secretory functions क्या हैं GI tract के और किस तरह से वो secretion क्या काम करती हैं. So throughout the GI tract there are secretory glands that subserve the two primary functions. Number one is digestive because they contain digestive enzymes, and the other one is that these glands produce mucus ताकि जो GI tract है वो protected रहे. ठीक है? Most digestive secretions are formed in response to the presence of food in the alimentary tract, and the quantity secreted in each segment of the tract is usually the amount needed for the proper digestion. So it's very well balanced. यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा secretion unnecessarily release हो रही है. जितना food हम ले रहे हैं, consume कर रहे हैं, उसके लिए जितना digestive enzymes चाहिए, उतने enzymes release होते हैं. And even the type of enzyme. So if you are consuming a particular type of diet, a particular type of enzyme is required, that will be produced in larger quantity. So that's a very beautiful system. मैं बार-बार पूरी जब मेडिसिन पढ़ा रहा होता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी, बायोकेम, मेरा वर्ड यही होता है, यू हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी, योर बॉडी इज डिजाइंड ब्यूटीफुली. ओके, सो इस चैप्टर में हमें करना ये है कि पहले हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे अबाउट द सिक्रीशंस इन द जीआई ट्रैक्ट, फिर मुख्तलिफ एरियाज की सिक्रीशंस पे बात करेंगे कि जी स्टमक की सिक्रीशंस कौन सी हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस कौन सी हैं, liver की secretions कौन सी हैं. We'll talk like this. Okay, so the first heading that I have to cover is the general principles of alimentary tract secretion. अब उसमें आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से glands हैं आपके GI tract में. Several types of glands provide the different types of alimentary tract secretions. First, on the surface of the epithelium is the most parts of the GI tract are the single cell mucous glands. So they are numerous and they are simply called mucous cells, or they are also known as goblet cells, and their job is to produce mucus which protects your GI mucosa from the effects of digestive juices and the rough food particles. Second, many surface areas of the GI tract are lined by small pits that represent invagination of the epithelium into the submucosa. In the small intestine, they are called crypts of Lieberkühn. They are deep and contain secretory cells as well. अब ये इस तरह से है कि अगर ये एपिथेलियम कंटिन्यूस चल रही है, ऐसा नहीं होता. हमारे जीआई ट्रैक्ट में कई जगहों पे फिनोमिना ये है कि ये कंटिन्यूस एपिथेलियम चल रही है और वो फिर ऐसे अंदर की तरफ चली जाती है और फिर कंटिन्यू, तो इस अंदर जाने को नाम देते हैं, या इसको इनवेजिनेशन बोल लो या इसको क्रिप्ट बोल लो. सो दैट क्रिप्ट इज ऑल्सो lined by cells. Okay, so we have crypts. Intestine में crypts का particular नाम है, crypts of Lieberkühn. Then the third source of gland, या third category of gland, which are present in the stomach and upper duodenum, they are large number of deep tubular glands. और ये बाकायदा tubular glands हैं, so they secrete something very very important. अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे भी. A typical tubular gland can be seen in this figure. देख लेते हैं अभी. Which shows an acid and pepsinogen secreting gland of the stomach, which is also called the oxyntic cell. So let's have a look of the typical tubular gland. I think, well, this is not the one. Where is 65-4? Let me find it out for you. This is 3 and here, yeah. So this is a good diagram representing. So there is a gastric pit and then you have this tubular gland. So that is typically showing gastric oxyntic gland. और इस तरह से ये पूरा देखें glandular structure है. So there are parietal cells, there are enterochrom ECL cells, there are peptic cells. So in this invagination, we see different types of cells. So there are cells which produce mucus, and because they are present at the neck, they are called mucous neck cells. Then there are these funny cells which are called parietal cells. Then there are ECL cells. Then there are chief cells. Each cell is producing something interesting.
और वो इस ग्लैंड से होता हुआ स्टमक में स्टमक की पूरे ल्यूमन में एंटर हो जाएगा. सो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो ये इन्वेजिनेशन है इसको क्रिप्ट कहते हैं, और इस क्रिप्ट की जो लाइनिंग है इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो इस तरह का ग्लैंडुलर अरेंजमेंट होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में. फोर्थ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. हमने बात की म्यूकस ग्लैंड्स की, हमने बात की क्रिप्ट्स की कि क्रिप्ट्स क्या हैं. देन वी टॉक अबाउट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द ग्लैंड्स. एंड नंबर 4, also associated with the alimentary tract are the several complex glands, the salivary glands. These salivary glands, अब ये वो glands हैं, pancreas, liver, which are not associated with the epithelial lining of the GI tract. They are separate designated organs. लेकिन इनकी secretions भी आपके GI tract में enter जरूर हो रही हैं. तो चूंकि इनकी secretions भी GI tract में enter हो रही हैं, they are important to mention. We will talk about them कि pancreas में क्या बनता है, कैसे enter होता है. So that will be our discussion as well. So हम अगर इसको मैं usually students को बताता हूँ इस तरह कि glands को आप divide कर लें GI tract के into either glands which are intrinsic glands, and then there is a gland category which are called extrinsic glands. Okay. Intrinsic and extrinsic. So ये दो तरह के glands हैं, intrinsic and extrinsic. Right. Then basic mechanisms of stimulation of the alimentary tract glands. Contact of food with the gut epithelium activates the enteric nervous system and stimulates secretion. The presence of food in a particular segment of the gastrointestinal tract usually stimulates the glands of that region and adjacent regions to secrete moderate to large quantities of juices. मतलब ये हुआ कि जब फूड की एंट्री होती है that is a basic stimulatory factor for release of a lot of glands in the GI tract. Part of this local effect, especially the secretion of mucus by the mucus cell, result from the direct contact stimulation of the surface glandular cells by the food. I mean it makes sense. So if this is stomach और ये stomach cell की lining है और यहाँ पे goblet cells हैं, mucus producing cells, these mucus producing cells will produce mucus only when food is in contact with them. And obviously mucus required भी तब है जब food enter हो रहा है, because food enter होगा, gastric acid release होगा, उस वक्त protection चाहिए होगी. So excessive production of mucus होगा भी फिर उसी वक्त. Okay. Right. Then in addition, local epithelium stimulation also activates enteric nervous system, which is present in the gut wall, myenteric and Meissner's plexus. The type of stimuli that activate the system include tactile stimulation, chemical irritation, distension of the gut wall. So all these increases production of secretions from the glands in the GI tract. So that's a general phenomena कि कोई food enter होगा तो glandular secretion increase होगी. Okay. Then there is autonomic control. Autonomic control में आपको पता है there are two types of systems, parasympathetic nervous system which stimulates it. अगर ये stimulate होगा it will further stimulate the glandular secretion. So parasympathetic nervous system increases the secretion. Stimulation of parasympathetic nervous system to alimentary tract almost invariably increases the rate of alimentary यानी GI tract का glandular secretion, and that's the rule of thumb. Whenever parasympathetic nervous system is activated, secretions from the GI tract are activated. अच्छा, sympathetic system जो है ये थोड़ा different है. It is a dual effect on the alimentary glandular secretion. Stimulation of the sympathetic nerves going to the GI tract causes a slight to moderate increase in secretion by some of the local glands. However, sympathetic stimulation also constrict the blood vessel, and therefore they also have a tendency to reduce the secretions. Therefore, sympathetic stimulation can have dual effect. One, it alone usually increases the secretion, but if parasympathetic or hormonal stimulation is already causing copious secretion by the glands, then superimposed sympathetic stimulation usually reduces the secretion because it vasoconstricts the blood supply. So that's kind of a complicated role of sympathetic system. So आपको इतना याद रखना है कि अगर sympathetic system अकेला काम कर रहा है जो कि नहीं करता, obviously it works in context with other control mechanisms. So if it is working alone, then increases the secretion. If it is working with other parameters such as peripheral nervous system, it has a tendency to decrease the secretion because it causes vasoconstriction. Then hormones are also important players. In stomach and intestine, several different gastrointestinal hormones help regulate the volume as well as the composition of the secretion. These hormones are liberated from the GI mucosa itself, and they have the tendency to either increase the secretion or decrease the secretion. So there are nervous control mechanisms, enteric nervous system, there are autonomic control mechanisms, there are hormonal mechanisms, there are direct food contact mechanisms to control secretions. Okay. A basic mechanism क्या है? How is it secreted?
secretion of organic substances. Although all the basic mechanism by which glandular cells function are not known, experimental evidence are there that how do they work. उसकी कोई एक brief summary यहाँ दी है that nutrient material needed for the formation of secretion must first diffuse or be actively transported by the blood capillaries into the base of the cell. अब देखो ये तो general बात है कि if this is a cell and suppose this is a cell which has to produce substance X and substance X contain iodine, तो ब्लड से आयोडीन यहाँ पहुंचेगी तभी ये सब्सटेंस एक्स तैयार होगा ना. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेलेवेंट सब्सटेंसेस टू द ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ताकि एटीपी यूज की जा सके. एनर्जी फ्रॉम द एटीपी अलोंग विद एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट. सो मशीनरी बराबर होनी चाहिए तब जाकर के सिक्रीशन होगी. अब वो मशीनरी क्या है देखिए. एंजाइम्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनता है और प्रोसेस होता है पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम्स का रोल है, फिर गोल्गी अपैरेटस जो कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में हेल्प करेंगे. तो ये सारी मशीनरी इन सेल्स में होना जरूरी है. Then the secretory material are transported through the tubules of endoplasmic reticulum, passing in about 20 minutes all the way to the vesicles of the Golgi complex. So ये normal protein handling है. Point ये है कि ये सब चीजें secretory vesicle, Golgi bodies ये होंगी तभी सेल ठीक से secrete कर पाएगा. These vesicles remain stored. अब एक सेल में जब कोई भी एंजाइम बनता है तो वो वेसिकल फॉर्म में होता है और फिर these vesicles they move and that requires calcium and calmodulin and calcium binding proteins so that this can go to the surface और सरफेस पे जाके ये एक्सोसाइटोसिस करके केमिकल को निकाल सके. सो ये जनरल फीचर्स हैं जो किसी भी ग्लैंड में काम करते हैं और गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में भी ऐसे ही काम होता है. Now, water and electrolyte secretion. A second necessity of the glandular secretion is secretion of sufficient water and electrolytes to go along with the organic substances. तो एक तो say for example lipase बन रहा है ना, lipase आपके या amylase की बात कर लेते हैं. amylase बन रहा है आपकी oral cavity में. तो ये जो amylase बन रहा है this is called the organic compound. इसके साथ पानी भी निकलना, खाली अमाइलेज नहीं निकलेगा. अमाइलेज ज़ाहिर किसी लिक्विड मीडियम में जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही जो पैंक्रियास से, सो दिस इज योर पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक डक्ट में जो जूसेस एंटर हो रहे हैं, दीज पैंक्रियाटिक जूसेस will not only be lipase and amylase and trypsin, इसमें लिक्विड भी तो होगा ना, पानी भी होगा. So that liquid is also needs to be secreted. Water has to be secreted, and that's a very logical thing. इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है. Lubricating and protective properties of mucus in the GI tract. ये हम सबको पता है अगर mucus नहीं होगा तो अल्सर फॉर्मेशन होगी and इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी. So अब तक जो मैंने बात की है that all focuses on some very basic general principles. ग्लैंड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें से क्या निकलता है, simple stuff. अब बात करेंगे स्पेसिफिक्स की. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद हाउ सलाइवा इज सीक्रेटेड. अच्छा, सलाइवा से रिलेटेड आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहां से सलाइवा प्रोड्यूस होती है. सो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स. अब आपकी बॉडी में जाहिर है यू नो देयर आर पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, और फिर कुछ छोटे ग्लैंड्स भी हैं विच आर द बकल ग्लैंड्स. टोटल कितनी सलाइवा आप डेली प्रोड्यूस करते हैं? अबाउट 1 लीटर से आसपास. सो 800 to 1.5 लीटर्स. एंड दो तरह की सिक्रीशंस होती हैं सलाइवा. सो आइदर यू कॉल देम सीरस सिक्रीशन और म्यूकस सिक्रीशंस. जो सीरस सिक्रीशंस हैं दे कंटेन एंजाइम. सो कौन सा एंजाइम होता है हमारी सलाइवा में? टाइलिन अल्फा अमाइलेज है. सो व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो आइदर वी हैव अ सीरस कंपोनेंट इन द सलाइवा and then the other component is the mucus component which is for lubrication. So that produces mucus. अब जो parotid gland है it is almost entirely serous. यानी पूरा parotid gland से जो भी secretion आ रही है उसमें enzyme भरा हुआ है, tannin भरा हुआ है. और submandibular और sublingual जो glands हैं they are mixed gland because उनमें से serous secretion भी निकलती है और mucus भी produce होता है. buccal glands जो है they secrete only mucus. These are small glands. pH सलाइवा की होती है about 6 to 7 and it is a favorable range for working of टाइलिन. क्योंकि pH इससे कम होगी एसिडिक या इससे ज्यादा होगी बेसिक, तो फिर टाइलिन काम नहीं करेगा. ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होगी. सिक्रीशन ऑफ आयंस, ये आयोनिक सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सलाइवा का. सलाइवा कंटेन्स स्पेशली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट. Conversely, the concentrations of both sodium and chloride are several times less compared to the plasma. One can understand these special concentrations of iron in saliva from the following description. So let's start talking about this. Secretion by submandibular gland, a typical compound जो इस फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ है, gland that contains acini and salivary ducts.
The salivary secretion is a two-stage operation. The first stage involved the acinus, जो ऐसे गोला होता है, and the second stage involved the ducts. तो इसमें से जब cells secrete करते हैं, फिर वो duct में travel करती है saliva. The acini secrete primary secretion that contain ptyalin, if we are obviously talking about the serous gland, and or mucin, if we are talking about the mucus gland. ठीक है? As the primary secretion flows through the ducts, two major active transport processes take place that modify the ionic concentration in the saliva. Firstly, what happens is sodium is actively reabsorbed from all salivary ducts and potassium is actively secreted. So potassium बाहर निकल जाएगा into the ductular lumen or sodium into the cell. Therefore, sodium concentration of the saliva becomes greatly reduced क्योंकि आप reabsorb कर रहे हो ना. So अगर आप somewhere they have also shown this in a diagram. Let me find it out for you. Where is the? So चलो देखते हैं. अभी मुझे नहीं मिल रही. थोड़ी देर बाद देखते हैं. फिगर नंबर वैसे इन्होंने दिया था 65-2. So इधर किधर होनी चाहिए यार? 65-1, 65-2. So basically यार okay. This is the compound tubuloalveolar gland और इसमें बात ये basically it's a submandibular gland. So these are the acini. In acini से जो secretion आएगी that will come into the duct और फिर ये duct जो है इसमें processing होगी और processing क्या हो रही है? It is reabsorbing a lot of sodium and it is secreting a lot of potassium. So that is what happens. So sodium absorption and potassium active secretion. So obviously जो salivary secretion है उसमें ultimately as a result of this what will happen कि sodium की concentration कम हो जाएगी. Okay, easy peasy stuff. However, there is excess sodium reabsorption compared to potassium secretion, which creates electrical negativity of about -70 millivolt in the salivary duct. अब ये duct है, इसमें से आप positive ion sodium बहुत सारा निकाल रहे हो, तो यहाँ negativity बनेगी ना यार. अब आप मुझे बोलोगे यार positive ion डाल भी तो रहे हैं, potassium डाल भी तो रहे हैं, लेकिन ये 1-for-1 exchange नहीं है. यानी से फॉर एग्जाम्पल अगर 3 सोडियम आपने एब्जॉर्ब कर लिए तो 1 पोटेशियम आप रिलीज कर रहे हो, सो 3 पॉजिटिव चार्जेस चले गए, 1 पॉजिटिव चार्ज आया, अभी भी नेट रिजल्ट तो -2 है ना. सो देयर इज अ नेगेटिविटी, सो देयर इज अ -70 मिलीवोल्ट जनरेशन इन द डक्ट. This negativity in turn causes chloride to be reabsorbed passively. इसकी वजह से chloride भी reabsorb होता है from the duct into your body system. Therefore, chloride concentration in the salivary fluid also becomes very very low. So remember, salivary fluid के अंदर there is low sodium up till now and there is low chloride up till now. सही है? Second, तो ये पहला इफेक्ट हो गया कि सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम रिलीज हो रहा है और क्लोराइड भी एब्जॉर्ब हो रहा है. Second effect ये है कि bicarbonate is secreted by the epithelium into the lumen of the duct. This secretion is at least partly caused by passive exchange of bicarbonate for chloride. So duct में मैंने अभी आपको बताया ना कि chloride जा रहा है तो इसके बदले में बाइकार्ब आता है. This is what is a normal phenomenon in the body कि जब कोई चीज एक एब्जॉर्ब होती है तो आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए वो चीज किसी और चीज से काउंटर एक्सचेंज भी होती है. तो बाइकार्ब सीक्रेट हो रहा है इनटू सलाइवा. तो अब जो सलाइवा है वो बेसिक होती जा रही है. तो अब तक का इफेक्ट सलाइवा पर अब तक का ये हुआ कि देयर इज लो सोडियम इन सलाइवा, लो क्लोराइड इन सलाइवा एंड नाउ आल्सो more bicarbonate in saliva. The net result of these transport processes is that under resting condition what happens कि the concentration of sodium and chloride in the saliva are only about 15 milliequivalent. बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप सोडियम भी reabsorb कर रहे हो और chloride भी reabsorb कर रहे हो, and then there is high concentration of bicarbonate. So your saliva becomes having more bicarbonate. इसकी concentration ज़्यादा होती है, right? Potassium concentration भी ज़्यादा है और bicarbonate concentration भी ज़्यादा है. During maximal salivation, the salivary ionic concentration change considerably because the formation rate of the primary secretion of the acini can increase as much as 20-fold. अब ये बड़ा important point है. This acinar secretion then flows through the duct so rapidly that the ductal reconditioning of the secretion is considerably reduced. Therefore, when copious quantities of saliva is being secreted, sodium chloride concentration about 1/2 to 2/3 of the plasma and potassium is 4 times. So point क्या है? Point ये है कि अगर ये मेरे salivary duct है और इसमें से saliva ने गुजरना है और ये है salivary acinus, इसमें saliva प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर बहुत ज्यादा saliva प्रोड्यूस होगी, जैसे कि जब हम खाना खा रहे हैं या अच्छी खाने की स्मेल आपकी नाक तक पहुंच रही है, so when you are in a hyper stimulatory effect for saliva production, so you are producing a lot of saliva.
अब ये ज्यादा सलाइवा है तो ज्यादा सलाइवा यहाँ से गुजरेगी, जब ज्यादा सलाइवा तेजी से गुजरेगी तो उसको कम टाइम मिलेगा सोडियम रीअब्सॉर्ब करवाने के लिए, पोटेशियम एक्सक्रीट करवाने के लिए, बाइकार्ब, तो ये सब चीजों की जो मात्रा है वो बदल जाएगी। यानी सोडियम अब सलाइवा में ज्यादा होगा क्योंकि वो रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ। रीअब्सॉर्ब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सलाइवा तेजी से गुजर गई, तेजी से इसलिए गुजर गई क्योंकि बहुत ज्यादा बन रही है, तो सलाइवा को टाइम ही नहीं मिला सोडियम रीअब्सॉर्ब करवाने का, क्लोराइड रीअब्सॉर्ब करवाने का, पोटेशियम सीक्रेट करवाने का। सो बेसिकली पॉइंट मेरे डिस्कशन का ये है कि सलाइवा की जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन स्पीड फॉर सलाइवा। अगर सलाइवा बहुत तेजी से बन रही है, बहुत ज्यादा बन रही है, तो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी, और अगर सलाइवा कम बन रही है तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी। ओके, अच्छा, अब व्हाट इज द नर्वस रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन? Parasympathetic nervous pathway for regulating salivating and demonstrate this figure that the salivary gland are controlled mainly by the parasympathetic nervous signals all the way from the superior and inferior salivatory nuclei. So there are specific nuclei in your brainstem. The salivatory nuclei are located approximately at the junction of the medulla and the pons, and they are excited both by the taste as well as the tactile stimuli by the tongue, and also sometimes by the smell. Many taste stimuli, especially sour taste, खट्टी तुर्श चीजें जैसे कि ऑरेंज, लेमन, एलिसिट कोपियस सैलिवरी सिक्रीशन। ओके, बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है अगर आप सिट्रस चीजें लेते हैं, सोर चीजें लेते हैं। Also, certain tactile stimuli such as presence of smooth objects in the mouth, put a pebble in a mouth for example, causes marked salivation, whereas rough objects less salivation. So that these are general norms. Salivation can also be stimulated or inhibited by nervous signals arriving in the salivatory nuclei from higher centers. So ये जो salivatory nuclei जो at the junction of pon and medulla है, they are also controlled by the higher centers. अभी diagram में दिखाता हूँ. So for example, when a person smells or eat favorite food, salivation is greater than when the food is disliked. Okay, so ये जो डिसलाइक वाला कंपोनेंट है, दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हायर सेंटर्स। हायर सेंटर से इनपुट आ रहा है, और यहाँ जो सैलिवेटरी न्यूक्लियाई, दीज आर द सुपीरियर एंड इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई, एंड दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू, नाउ देयर वी हैव डिफरेंट एंड ऑर्गन्स जो है ना, जो इफेक्टर ऑर्गन्स है, वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, और पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड में जो सप्लाई आ रही है पैरासिम्पैथेटिक की, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ओटिक गैंग्लियन, और सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल में आ रही है फ्रॉम द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। ये प्री सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये इसके पोस्ट सिंपैथेटिक फाइबर्स, और ये इनके गैंग्लिया। ओके, एंड दे आर ट्रैवलिंग इन रेलेवेंट नर्व्स सच एज फेशियल नर्व, ग्लोसोफैरिंजियल। ये सारा जो पैरासिम्पैथेटिक डिजाइन है हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेक्चर्स में पढ़ रखा है, तो ये वहां समझ लीजिएगा। The appetite area of the brain, which partially regulate the salivatory effect, is located in proximal, closeness to the parasympathetic center. So they work together. भूख लग रही होती है तो ख्याल आ रहा होता है अच्छे अच्छे खाने का, salivation हो सकती है, that sort of thing. Salivation also occurs in response to reflexes originating in the stomach and upper small intestine, particularly when irritating food are swallowed or when a person is nauseated because of some GI abnormality. The saliva, when swallowed, helps to remove the irritating factor. So अगर आपकी स्टमक में फॉर एग्जांपल कोई अल्सर है, that will produce more saliva so that it goes down and try to dilute that factor. Sympathetic stimulation can also increase salivation, but to a lesser degree. Mainly it is controlled by the parasympathetic system. Also, the saliva formed in response to sympathetic activity is thicker compared to the saliva produced during the parasympathetic activity. The sympathetic nerves originate in the superior cervical ganglia. तो ये एक्चुअली पूरा पाथवे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सुपीरियर एंड इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई, और अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, पैरावर्टिब्रल चेन जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया की है। A secondary factor that also affects salivary secretion is the blood supply of the glands, because secretion always required adequate nutrients from the blood. The parasympathetic nerve signal that induce copious salivation also moderately dilate the blood vessel. So parasympathetic supply जो gland को blood vessels पहुंच रही हैं उनको dilate करते हैं ताकि more and more secretions are produced. In addition, salivation directly dilates the blood vessel as well. Part of this additional vasodilatory effect is also caused by kallikrein and bradykinin, while not so important, but the point is salivation is controlled by and large by the parasympathetic nervous system. Okay, तो ये थी saliva. आपको ये different important discussion हमारे हुए कि what is serous saliva, what is mucus या mucinous saliva,
and then what are the different ionic composition and what is the ionic handling of saliva. It's all very important for your exam. सोडियम हम रीअब्सॉर्ब करते हैं, क्लोराइड हम रीअब्सॉर्ब करते हैं, पोटेशियम हम सिक्रीट करते हैं और बाइकार्ब भी सिक्रीट करते हैं इनटू द सलाइवा, बट इट ऑल डिपेंड्स कितने तेजी से सलाइवा बन रही है. अब ओरल कैविटी के बाद इसोफेगस है. इसोफेगस में कोई पर्टिकुलर सिक्रीशन इस तरह की है नहीं जिसका हम डिस्कशन करें. तो नेक्स्ट वी लैंड अप टू स्टमक. अब देखते हैं स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं वो क्या हैं और किन सेल से बनते हैं और क्या काम करते हैं. Stomach is an important organ as far as the secretions are concerned. In addition to mucus secreting cells that line the entire surface of the stomach, और इस पर हमने काफ़ी दफ़ा बात की है कि ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे ऑब्वियसली प्रोड्यूस म्यूकस which is very important in the environment of stomach which produces a lot of HCl. तो protection के लिए mucus वाले cells तो हैं ही, but it also has very important glands. Tubular glands हैं basically. पहले glands को हम नाम देते हैं oxyntic glands and they are generally also known as gastric glands. And the other glands are called pyloric. So stomach में ये दो glands आपको लाजमी पता होने चाहिए, oxyntic glands and pyloric glands. Oxyntic glands जो हैं जिनको हमने gastric glands भी कहा, they are basically HCl producing acid forming glands and they secrete hydrochloric acid, pepsinogen, intrinsic factor and mucus. So these are the secretion profile of oxyntic cells, okay, या oxyntic glands. So बड़ी important चीजें इसमें से निकल रही हैं. So if you consider इसमें से HCl निकल रहा है, pepsinogen जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, intrinsic factor which is very important for absorption of vitamin B12, and it also releases mucus. The pyloric glands secretes, अब ये दूसरी category है. So these are the other types of gland. One is oxyntic and the other is the pyloric. The pyloric glands secrete mainly mucus for protection of the pyloric mucosa, and the pyloric glands also secrete very important hormone which is gastrin, जो हमने पिछली sections में देखा भी है कि gastrin क्या काम करता है. Oxyntic glands are located on the inside surface of the body and fundus of the stomach. So these are the location, body and fundus. Proximal 80% of the stomach में ये glands मौजूद हैं. And the pyloric glands are located in the antral portion of the stomach, which is the distal 20%. So stomach का अगर हम division करें proximal 80% में, तो यहाँ oxyntic cells ज़्यादा हैं और later end में pyloric glands ज़्यादा हैं. ठीक है, तो अब थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं कि oxyntic glands की जो secretions है, मैंने आपको बता तो दिया ऑलरेडी कि इसमें से HCl निकलता है, उसमें से पैप्सिन निकलता है, so intrinsic factor. A typical stomach oxyntic gland is shown in 65.4. This is the diagram, okay? You see these are the oxyntic cells and let us study some details. It is composed of three main type of cells. One, the mucous neck cells. Two, the peptic or the chief cells, which secrete, because इनका नाम peptic cell है, so they will secrete pepsinogen. And the third cells are the oxyntic cells, or they are also called the parietal cells, which secrete HCl and intrinsic factor. अब देखो ये डायग्राम जो है ना, ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, because this is the ये पूरा ग्लैंड है, और ये जो पूरा ग्लैंड है, this is basically an overview of oxyntic gland. तो ये पूरा oxyntic gland है. अच्छा, gland आपको पता है कि there is always a acinar portion and then there is a duct, और जो acinar portion है, it is lined by different types of cells. यहाँ पर भी ऐसे ही है. So that is the secreting portion, और इसमें different तरह के cells हैं. So it contains mucous neck cells, obviously ये mucus produce करेंगे. Contains oxyntic cells, parietal cells, इसमें से HCl produce होना है, and they contain the peptic cells. So these are the three type of cells which are present in oxyntic glands, right? So they are important for you to remember कि कौन-कौन से oxyntic, सबसे पहले तो ये कि कौन-कौन से glands हैं stomach में. दो तरह के gland हैं. One, oxyntic gland, and two are the pyloric glands. अब oxyntic gland में कितनी तरह के cells हैं? तीन तरह के. Mucous neck, peptic, and the third category is the oxyntic. फिर हर एक का एक और नाम भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि peptic cells are also known as chief cells, and parietal cells are also known as oxyntic cells, and what they release is just written here and we just discussed it. Oxyntic glands also contain some additional cells which are called enterochromaffin like cells, ECL cells. इनका काम है histamine produce करना. Hydrochloric acid by the parietal cell involves a specific mechanism as follows. उसकी थोड़ी सी details दी हैं, देख लेते हैं. When stimulated, तो HCl कौन से सेल से निकलता है? parietal cell से. When the parietal cells are stimulated, they secrete an acid solution which contains about 160 millimole per liter of HCl, so very heavy concentration.
एंड बॉडी फ्लूइड्स में भी यही कॉन्सेंट्रेशन होती है. द pH of this acid is about 0.8, pretty acidic. Okay, at this pH hydrogen concentration is about 3 million times that of the arterial blood. आप देख रहे हैं very heavy hydrogen ion concentration, इसीलिए pH इतनी कम है. To concentrate the hydrogen ion this tremendous amount तक ले जाने के लिए more than 1500 calories of energy is required. अब obviously मतलब आपके ये जो cells हैं parietal cells, they are secreting a very heavy concentrated amount of hydrogen ion. So they are producing a very acid. मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये बैटरी एसिड की तरह हैवी एसिडिक एनवायरनमेंट है, और इतना सारा हाइड्रोजन निकालने के लिए ऑब्वियसली इन सेल्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए. सो इट्स अबाउट 1500 कैलोरीज दैट यू रिक्वायर पर लीटर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. एट द सेम टाइम द हाइड्रोजन आयन इज secreted. Bicarbonate is also diffused back into the blood. Again, that's normal biochemistry of your body. If you are secreting hydrogen, you usually secrete a bicarbonate back, which diffuses into the blood. So the gastric venous blood has a higher pH than the arterial blood. Obviously, अब यहाँ से जो venous blood return जा रहा होगा, it is getting a lot of bicarbonate being reabsorbed in exchange of the hydrogen which is being secreted in the gastric juice. So जो venous blood है, उसकी pH high होती है. The venous blood of stomach is particularly alkaline. ठीक है. अब ये फिगर देखते हैं. Shows schematically the functional structure of a parietal cell, which is also called the oxyntic cell. We know this, demonstrating that it contains large branching cellular canaliculi. So if you look this, these are the canalicular structure. Okay, so this is the diagram of a parietal cell. These canaliculi, इसमें इस तरह से canaliculi है. The hydrochloric acid is formed at the villus-like projection inside these canaliculi and is then conducted through the canaliculi to the secretory end of the gland. So ठीक है, यहाँ बनेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा. इसमें कोई ऐसी मुश्किल मैं कहता हूँ ना कि अरबी फारसी नहीं है. The main driving force for hydrochloric acid secretion by the parietal cell is a hydrogen potassium pump. So that is the key pump which produces your HCl in the stomach, and obviously it is ATP dependent. And the chemical mechanism is as follows. The first step, water. तो हो सब कहाँ रहा है? ये HCl रिलीज हो रहा है आपके स्टमक में, और कौन सा सेल इन्वॉल्व है? parietal cell. So water inside the parietal cell becomes dissociated. तो सबसे पहले स्टेप में पानी ब्रेकअप होता है into hydrogen and hydroxyl ion. The hydrogen ion is then actively secreted into the canaliculi in exchange for potassium. ये देखें अगर इस डायग्राम को. So the first step would be the breakup of water. This is the water molecule. It breaks up into hydrogen and hydroxyl ion. The hydrogen ion gets into the lumen and it is secreted. Okay, so और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन चला गया, potassium is coming out, because ये जो पंप है, that's a hydrogen potassium counter transport. So hydrogen release होगा into the lumen of the GI tract और potassium reabsorb होगा. So that's what happens at the expense of ATP. Potassium ion transported into the cell by this particular pump is then also handled by the cell. ऐसा नहीं है कि वो जो है, अब वो मल्टीपल तरीके से हैंडल होता है पोटेशियम. It also leaks out into the GI lumen, and the potassium is also being handled by the sodium potassium pump which is present on the basolateral side. So basically होता ये है कि आपकी सेल में as a result of the activity within the parietal cell, ultimately पोटेशियम की concentration बढ़ रही है. देखें, एक तो ये हाइड्रोजन निकल रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो पोटेशियम बढ़ेगा. दूसरा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है, जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, ये भी पोटेशियम को अंदर ला रहा है सेल के और सोडियम को बाहर ले जा रहा है. तो अल्टीमेटली पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, बट देन इट लीक्स आउट बैक इनटू द ल्यूमेन. देखते हैं अभी. So potassium ion transported into the cell by the sodium potassium ATPase on the basolateral membrane side of the membrane tend to leak into the lumen and are recycled back into the cell by hydrogen potassium ATPase. तो ये गेम ऐसे चलता रहता है. आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम ATPase क्या कर रहा है, ये पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है, और हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase क्या कर रहा है, ये भी पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है. फिर पोटेशियम लीकी चैनल से पोटेशियम वापस बाहर जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करने के लिए. The basolateral sodium potassium ATPase creates low intracellular sodium which contributes to sodium transport. ये हमने पढ़ा था जब हम सोडियम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, reabsorption from the lumen into the cell. Thus most of the potassium and sodium in the canaliculi are reabsorbed into the cytoplasm and hydrogen gets out. So it's a simple stuff. Overall story आपको समझनी है कि कौन सा पंप क्या काम कर रहा है. हो ये रहा है कि सोडियम पोटेशियम ATPase एक तरफ है, that is the basolateral membrane, this is the luminal membrane. Luminal membrane पर हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट है, और ये जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है ये हाइड्रोजन को ल्यूमन में ले जा रहा है ताकि HCl, यही तो काम है,
पोटेशियम को सेल के अंदर ला रहा है, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएज भी सोडियम को बाहर ले जा रहा है और पोटेशियम को अंदर ला रहा है. सो एज अ रिजल्ट सेल के अंदर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली बढ़ रही है और सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इससे फिर सोडियम ऑब्वियसली सेल के अंदर आएगा फ्रॉम द ल्यूमेन, और जो पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इससे पोटेशियम लीक हो जाएगा आउट ऑफ द पैराइटल सेल. सो दैट्स व्हाट इज द आयोनिक एक्सचेंज. देन द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आउट ऑफ द सेल by hydrogen potassium ADPase permits the OH to accumulate and form bicarbonate from carbon dioxide, either formed during metabolism in the cell or while entering cell from the blood. So what's happening here? Start कहाँ से हुई थी सारी स्टोरी? स्टार्ट ये हुई थी कि वाटर ब्रेकअप हुआ था and water broke up into hydrogen and OH. हाइड्रोजन तो निकल गया था and the OH accumulates. तो ये OH ultimately कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या चीज बना रहा है? बाइकार्बोनेट. So that's what they're talking about. अब सेल के अंदर, पैराइटल सेल के अंदर बाइकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गई. This reaction is catalyzed by carbonic anhydrase. We know that bicarbonate handling is by this enzyme. The bicarbonate is then transported across the basolateral membrane into the extracellular fluid in exchange for the chloride. अब ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ जमा हो गया था, ये बाहर निकल जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसके बदले क्लोराइड अंदर आ जाता है. तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये पढ़ते जाना है और डायग्राम देखते जाना है और समझते जानी है बात. अब ये जो क्लोराइड सेल के अंदर आया है, they are secreted through the chloride channels into the canaliculi, giving a strong solution of hydrochloric acid. अब क्लोराइड आ गया, ये क्लोराइड का क्या होगा? This chloride will get out here. We had in the lumen hydrogen, now we have chloride. So what else do we need? This is hydrochloric acid, and that is the purpose of whole mechanics within the parietal cell. Water passes into the canaliculus by osmosis because of extra ions secreted into the canaliculus. We understand how water moves. Thus, the final secretion from the canaliculus contains water, hydrochloric acid at a concentration of 150 and 160 के बीच में milliequivalents per liter. Potassium chloride भी निकल रहा है and a small amount of sodium chloride. So these are the secretions. Primarily, parietal cell is secreting HCl, hydrochloric acid. Okay. Also, it is secreting some water as well as some sodium chloride. Obviously, potassium as well, because it is leaking out because of the whole cycle that we discussed. The product of a concentration of hydrogen ion as great that found in the gastric juice requires minimal back leak into the mucosa. A major part of stomach's ability to prevent back leak of acid can be attributed to the gastric barrier. अब ये सारी मेहनत जो करी है, इतनी सारी, देखो ये इतना सारा खिचड़ पिचड़ जो आयोनिक एक्सचेंज यहाँ बना हुआ है, ये सब बेकार हो जाएगा अगर जो हाइड्रोजन यहाँ आया, ये हाइड्रोजन वापस लीक करके अंदर चला जाए. सो ये लीकेज को रोका जाता है बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग गैस्ट्रिक बैरियर मेड अप ऑफ म्यूकोजा एंड सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स. तो हाइड्रोजन का बैक लीक बेसिकली नहीं होता. ओके. द बेसिक फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन आर पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव, acetylcholine, gastrin, and histamine. ये तमाम चीजें are the major players of they are the major stimulants for secretion of HCl. Acetylcholine, gastrin, histamine. बस ये नाम याद रख लो, काफी है. Secretion and activation of pepsinogen. अच्छा, pepsinogen जो है, they are secreted by the peptic cells, mucous cells of the gastric gland, and the job of the pepsinogen, is the digestion of protein. When pepsinogen is first secreted, it has no digestive activity because this is inactive. It has to be first converted into its active form, which is pepsin. In this process, the pepsinogen molecule, having a molecular weight of very heavy actually, 42.5 K Dalton, is split to form a pepsin molecule, which is a little smaller. Pepsin function as an enzyme when it is exposed to an acidic environment basically, but above the pH of 5 it does not work. So everything is going fantastic, that your stomach has acid, your stomach has this enzyme pepsinogen which only works in the acidic environment, so HCl is there, so everything is going in concerted fashion, एक साथ सब काम हो रहा है. अच्छा जी, parietal cells also secrete intrinsic factor which is important for absorption of vitamin B12. Otherwise, if parietal cells have antibodies and the cells are destroyed, they do not produce HCl, they also do not produce intrinsic factor, as a result of which vitamin B12 is not absorbed, and this condition is called pernicious anemia. So pernicious anemia होगा इस पेशेंट को जिसमें parietal cells ठीक नहीं है और obviously HCl नहीं produce होगा, so they will also not be making hydrochloric acid, so achloride. Okay, so these are all the terms that you actually need to remember. Now, pyloric glands secrete mucus and gastrin. The pyloric glands are structurally similar to the oxyntic glands, जो अभी हमने यहाँ डायग्राम देखी थी, इसी तरह का glandular structure होगा, कुछ पर्टिकुलर तरह के उसमें cells होंगे, so they are almost similar, but they contain few peptic cells and almost no parietal cells, so that's the difference.
Instead, they contain mostly the mucus cells. So their job is largely to produce mucus, okay? And these cells secrete a small amount of pepsinogen, very small. They also produce a hormone called gastrin, which regulates other functions of the cells which are present within the walls of the stomach, okay? Then the next heading that I have to talk is the surface mucus cells. Obviously, इनका काम है जो produce mucus. इसमें no fancy stuff. Another characteristic of this mucus is that it is a little alkaline. Therefore, normal underlying stomach wall is not directly exposed to the very high acidic environment. So basically, it is protective. Mucus का काम है protection of the GI mucosa. ठीक है? Now, stimulation of gastric acid secretion. Parietal cells of the oxyntic gland. Oxyntic भी पूरा gland था. उसमें एक particular तरह का cell था जिसका नाम था parietal cell. They are the only cells that secrete hydrochloric acid in your GI tract. As noted earlier in this chapter, the acidity of the fluid secreted by the parietal cells of the oxyntic gland can be great, pH as low as 0.8. However, secretion of this acid is under continuous control by both endocrine as well as nervous signals. And there are also some, association with the ECL cells which release histamine. So ECL cells lie deep recesses of the oxyntic glands में and therefore release histamine in direct contact with the parietal cell. The formation of the secretion rate of this is, basically ECL controlling the acid secretion. In turn, ECL cells are stimulated to secrete histamine by the hormone gastrin, which is formed almost entirely in the antral portion. The ECL cells may also be stimulated by hormones secreted by the enteric nervous system. We will first discuss कि gastrin mechanisms of ECL क्या है. यहाँ पे basically ये highlight कर रहे हैं कि देखो, these were the glands ना, these are the glands. और इन ग्लैंड्स में ये एक स्पेशल तरह का सेल है which is the ECL cell and they are in close proximity with the oxyntic cells जिनमें से एसिड निकलना है and these ECL cells seem to be very much in coordinated fashion with other hormones like gastrin and stuff. So for example, gastrin is produced by the gastrin cells या G cells. They are located in the pyloric glands in the distal stomach. And gastrin is a large polypeptide. This is not very important stuff. Although both of these forms are important, the smaller is more abundant. When meats or other food containing protein-rich, stuff, they enter the antral area of the stomach, the distal area. Some of the proteins from the food have a special stimulatory effect on the gastrin cells, and they release a lot of gastrin. And then this gastrin is transported to the ECL cells. The vigorous mixing of gastric juices transports the gastrin rapidly to the ECL cells. और ECL जो cells हैं इसमें से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? Histamine. और वो histamine कहाँ act करेगा? On the oxyntic glands. And then it acts quickly to stimulate the hydrochloric acid production. So imagine this glandular structure again. So if there is more gastrin, it stimulates the ECL cell. ECL cells release histamine. Histamine acts on the neighboring oxyntic cells and more HCl is produced. So that's the mechanism. और पेप्सिनोजिन कैसे काम कर रिलीज होता है? तो ये तो हाइड्रोजन और क्लोराइड यानी HCl की सिक्रेशन की बात हो रही थी. ECL गैस्ट्रिन. Pepsinogen के लिए, oxyntic cells occur in response to two main types of signal. So pepsinogen की stimulation जो peptic cell से होनी है उसमें दो signals याद रखने हैं आपने. एक acetylcholine parasympathetic drive and the other one is the acid itself in the stomach. So just remember these two things. The acid in the stomach indicates that there is a load in the stomach to be digested, and acetylcholine is the parasympathetic drive. So these two things stimulate pepsinogen. So basically what you have to remember is what are the different glands in the stomach, what are the different cells in the stomach, how they are stimulated, what they secrete, or what are the different cell types secreting different hormones. Okay, so with this stomach के बाद we now have to discuss what are the pancreatic secretions. अब pancreas obviously is the hero of the whole digestive process. आपको पता है कि इसमें से काफी rich pancreatic juice निकलना है जिसमें बहुत important enzymes हैं such as trypsin, such as lipases, such as chymotrypsin and so many other things, So तीनों आपके फूड के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ योर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बेसिकली. सो पैंक्रियास से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कंट्रीब्यूट होती हैं टुवर्ड्स द जीआई ट्रैक्ट. Number one is obviously the pancreatic juices and the other thing which is contributed by pancreas is bicarbonate. ठीक है, तो pancreas which lies
lies parallel to and beneath the stomach, is a large compound gland, and most of its internal structure is similar to that of the salivary gland. इसके दो portion हैं basically, exocrine portion and endocrine portion. Endocrine portion is associated with release of insulin, and exocrine portion is the one which basically releases its secretion, यानी कि enzymes and sodium bicarbonate into the duodenum by the long pancreatic duct. So that's the exocrine portion, okay? And it enters into the duodenum through a small papilla of water surrounded by a sphincter called sphincter of Oddi, all anatomical beds. Pancreatic juice is secreted most abundantly in response to presence of chyme in the duodenum. जैसे ही duodenum में chyme पहुंचता है, pancreatic juice पहुंच जाता है कि आजा भाई डाइजेशन शुरू कर, तेरा काम स्टार्ट. सो दिस इज डिओडेनम, और जैसे ही इसमें काइम आएगा पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी. ओके अच्छा, पैंक्रियाटिक जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं आपको पता है उनके नाम. बेसिकली दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट्स यानी एमाइलेजेस, फैट्स यानी लाइपेजेस. Now pancreatic juices also contain large quantities of bicarbonate which play an important role in actually neutralizing the acidic content जो स्टमक से आते हैं duodenum में. The most important of the pancreatic enzymes for digestion of protein are the trypsin, chymotrypsin, carboxy, polypeptidases. By far, the most abundant of these is trypsin. Okay, trypsin and chymotrypsin split the whole partially digested. ये हम actually पढ़ चुके हैं कि how do they help in digestion. The pancreatic enzyme for digesting carbohydrate is the pancreatic amylase, which is very much similar to that of the salivary amylase. The main enzymes for fat digestion are lipases as well as phospholipases and cholesterol esterases. We have talked about these when we discussed the digestion. When first synthesized in the pancreatic cells, the proteolytic digestive enzymes are in their enzymatically inactive form. आपकी बॉडी का ये जनरल प्रिंसिपल्स है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड एज इनएक्टिव एंड देन देयर इज एन इवेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट द इनएक्टिव फॉर्म इज देन कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म. सो दैट्स द रूटीन सिस्टम ऑफ योर बॉडी. They become activated only after they are secreted into the intestinal tract. Trypsinogen is activated by another enzyme called enterokinase, which is present in the intestinal mucosa. So, इनका जो activating mechanism है वो intestine के अंदर है. Okay? Trypsinogen also can be autolytically activated by trypsin that has already been formed from previously secreted trypsinogen. So, इसे कहते हैं auto, यानी एक दफ़ा trypsinogen एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन बना देता है, तो ये ट्रिप्सिन खुद भी जाकर के फर्दर ट्रिप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करता है. दिस इज कॉल्ड ऑटो एक्टिवेशन. Secretion of trypsin inhibitor prevents digestion of the pancreas. That's a very important point. It is important that the proteolytic enzymes of the pancreatic juice not become activated until after they have been secreted in the intestine. वरना ये होता कि सोचें ये pancreas है, इस pancreas में ये एक्टिव ट्रिप्सिन होता तो वो यहाँ अपने ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता. सो इसकी इनहिबिशन, इसकी एक्टिवेशन की इनहिबिशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वरना ऑटोलिसिस हो जाती पूरे पैंक्रियास की. और एक तो ये फैक्टर है कि ये एक्टिवेट नहीं होता. दूसरा, अगर कुछ थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो भी जाता है तो वी ऑल्सो प्रोड्यूस अ ट्रिप्सिन इनहिबिटर ताकि दिस इज actually inhibited. Okay, so fortunately the same cells that secrete proteolytic enzyme into the SNI also secrete trypsin inhibitor. Alright, so that's the body's important. और ये trypsin inhibitor की formation में अगर कोई यानी ये एक प्रोटीन है ना, दिस इज अनदर एंजाइम, दिस इज अनदर सब्सटेंस विच इज प्रोटीन. और प्रोटीन ऑब्वियसली किस चीज़ से मिलकर बनेगी? जीन से मिलकर बनेगी. और अगर उस जीन में किसी भी तरह की म्यूटेशन है तो ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं बनेगा, एंड देन यू आर मोर प्रोन टू एक्यूट पैंक्रेटाइटिस बिकॉज योर ट्रिप्सिन विल नाउ डिस्ट्रॉय योर ओन पैंक्रियाज. Now, ये था juices में enzymes की secretion. Now we also secrete a lot of bicarbonate in the pancreatic secretions. Although the enzymes of the pancreatic juice are secreted entirely by the acini of the pancreatic gland, जो गोल acini होते हैं glands में, the other two important components of pancreatic juice are bicarbonate and water. They are secreted mainly by the epithelial cells of the ductules. यानी जो glandular portion है, उस glandular portion से what is released? This glandular portion release important enzymes. लेकिन जो डक्ट्यूलर एपिथेलियम है, इस डक्ट्यूलर एपिथेलियम से बाइकार्बोनेट और वाटर रिलीज होता है. ओके, when the pancreas is stimulated to secrete copious quantities of pancreatic juice, the bicarbonate concentration can rise to as high as 145, which is a value of 5 times in plasma. So it's a very high value of bicarbs which is secreted into the pancreatic, and it is required. आप सोचें ना कि स्टमक से
कितना एसिडिक इन्वायरमेंट है स्टमक में, और ये सारा कुछ आता है डिओडेनम में। तो यहाँ भी एसिड पहुँचता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज भी तो करना होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट का होना बहुत ज़रूरी है। The basic steps in the cellular mechanism for secreting sodium bicarb in the pancreatic ducts are as follows. Number 1. Carbon dioxide diffuses into the anterior of the cell from the blood, and under the influence of carbonic anhydrase क्या बनेगा? ये carbonic acid, और carbonic acid break होगा bicarb और hydrogen में, और ये जो additional bicarb enters the cell through the basolateral membrane. So cell के अंदर basically bicarb की value को बढ़ाया जा रहा है, and this bicarb is then secreted into the lumen of the duct in exchange for chloride by the second reactive transport. So if you look at the diagram here, this is carbon dioxide coming in, water, they are making bicarbonate, because you know this reaction first produces carbonic acid, and the carbonic acid is then converted into bicarbonate as well as hydrogen ion. So this bicarb is then secreted into the lumen of the pancreatic duct in exchange for chloride, obviously, which then back leaks into the lumen. और ये जो hydrogen generate हुआ है, that goes into the interstitium in exchange for sodium, and then sodium potassium ADPase is also working, which brings in potassium and takes out sodium, and this potassium back leaks into the interstitial space. So it's a very simple diagram to understand, but that's how you secrete bicarbonate in your pancreatic duct. So pancreas secretes a lot of bicarb. ये सारी चीज़ अब यहाँ लिखी हुई है कि sodium is then exchanged at the basolateral membrane in exchange for potassium. It also brings in bicarb from the interstitial fluid, and then the overall movement of sodium and bicarbonate from the blood into the ductal lumen creates an osmotic pressure gradient also here, because इस lumen के अंदर काफ़ी सारा सोडियम भी जमा हो गया है, काफ़ी सारा बाइकार्ब जमा हो गया. सो देयर आर मोर सॉल्यूट्स नाउ. मोर सॉल्यूट्स मतलब मोर ऑस्मोटिक प्रेशर. मोर ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वाटर विल कम इन. सो द पॉइंट इज that from the cells, these pancreatic duct cells, not only the bicarb is coming out but also water is coming out. So pancreas से आने वाला जो overall secretion होगा वो glandular portion से आएंगे enzymes और ductular epithelium से आएगा bicarbonate और water. Okay, इसकी regulation कैसे होती है? 3 basic stimuli are important in causing pancreatic secretion. The first one is acetylcholine, which is the parasympathetic drive via vagus nerve. Then cholecystokinin, which is secreted by the duodenum and the upper jejunum. और ये तब रिलीज होता है जब फूड एंटर होता है into the small intestine. It starts releasing cholecystokinin. And then the third stimulus is secretin, which is also secreted by the duodenum in response to the acidic food. The first two stimuli, यानी कौन कौन से थे first two stimuli? Acetylcholine and cholecystokinin. देखते हैं इनके बारे में क्या कह रहे हैं. The first two stimuli, acetylcholine and cholecystokinin, stimulate the acinar cells of the pancreas, causing production of enzymes. Because acinar cells में enzymes बनते हैं और कम अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है. लेकिन जो थर्ड स्टिमुलस था दैट इज एक्चुअली सिक्रेटिन. इसका नाम ही सिक्रेटिन है. सो इट इज मोर associated with secretion of water and bicarb. Secretin, secrete more water and bicarb. So it's important information. Multiple effect of different stimuli. Not important heading. Phases of pancreatic secretion. There is a cephalic phase, a gastric phase, and an intestinal phase. Cephalic और gastric phase ये होते हैं कि during the cephalic phase of the pancreatic secretion, the same nervous signals from the brain that causes secretion in the stomach also cause acetylcholine released by the vagal nerve, obviously, और वो pancreas पे भी इफेक्ट करता है. So stomach की भी secretion बढ़ती है, pancreatic secretions भी बढ़ती हैं, because that's the combined signal कि भाई food आ गया है, उसको डाइजेस्ट करना है. तो स्टमक को भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पेंक्रियास को भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं. ठीक है. गैस्ट्रिक फेज में ये होता है कि द नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ द एंजाइम सिक्रीशन कंटिन्यूज अकाउंटिंग फॉर अनदर 5 to 10%. सो बेसिकली पॉइंट ये है कि सेफेलिक और गैस्ट्रिक फेज में स्टमक को जब सिग्नल्स जा रहे होते हैं फ्रॉम द हायर सेंटर्स, उसी वक्त पेंक्रियास को भी जाते हैं. एंड देन देयर इज एन इंटेस्टिनल फेज. दिस इज हैपनिंग व्हेन the chyme leaves the stomach and enters the duodenum. So this is because of the chyme. So stomach से जैसे ही food particle duodenum में enter होगा, pancreatic secretion का एक surge आता है. This is called intestinal phase. Secretin stimulates the copious secretion of bicarb ions, which neutralizes the acidic environment. So that is easily understandable thing, because यहाँ भी हमने बात की थी कि जो secretin है, this is a stimulus for secretion of water and bicarb. So it is basically neutralizing the acidic environment. Okay, so that's important. ये numbers याद रखना. pH, this is not too important, but the point is कि ये जो बाइकार्बोनेट आ रहा है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा. सो एसिड इन दी डाइजेस्टिव मटेरियल जो काइम ड्यूडेनम में एंटर हुआ है उसमें ये एसिड मौजूद है, एंड दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम दी पैंक्रियाटिक जूसेस. डक्ट से निकल के आ रही है, और रिएक्शन ये होगा कि देखें अब सोडियम क्लोराइड बन गया विच इज सॉल्ट, एंड
And now strong acid is converted into a very weak acid, and this acid will ultimately also be converted into hydrogen ion and bicarbonate ion. So basically आप इस strong acid के effect को minimize कर रहे हैं, इसको dilute कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं. Okay? अच्छा, cholecystokinin क्या करता है? It contributes to the control of digestive enzyme secretion by the pancreas. So cholecystokinin मैंने पहले भी बता दिया कि इसका काम है to work on the acinar cells so that you make big amounts of enzymes so that foods can be digested. Okay, the presence of food in the upper GI tract, which is the duodenum, also causes a second hormone, cholecystokinin, which speed up the whole process of secretion of digestive enzyme. This release of CCK results especially from the presence of proteoses and peptone. यानी भाई आओ मुझे digest करो, ये वाली story है, ठीक है? CCK, like secretin, passes via blood to the pancreas, but instead of causing sodium bicarbonate secretion, it causes pancreatic digestive enzymes to be secreted. The difference between the pancreatic stimulatory effect of secretin and cholecystokinin, simple है यार, it gets water and bicarb secreted and it gets enzymes secreted. That's it. यही difference है जो आपने याद रखना है भाई, और क्या? ठीक हो गया जनाब. अब बात करते हैं what are the secretions from the liver. Now liver is obviously a big metabolic machinery and it produces a lot of different things. यहाँ हमें focus करना है onto bile. One of the many functions of the liver is to secrete bile, normally 600 to 1 liter per day. और bile के दो important काम हैं. पहला, bile plays an important role in fat digestion and absorption, not because of any enzyme in the bile that causes fat digestion, but because bile acids perform emulsification. So bile के अंदर fat digestion का कोई directly enzyme नहीं है, लेकिन ये जाके करता ये है कि fats को smaller particles में emulsify कर देता है, so that the surface area is increased. So bile actually help emulsify the large fat particle into smaller fat particles, so that pancreas से आने वाले enzymes इन पे अच्छे से action कर सकें. दूसरा, bile aid in the absorption of digested fat because micelle formation, ये मैंने digestion में पढ़ा है, तो ऊपर देख लीजिएगा कि किस तरह से bile help करता है in the absorption. So it is emulsifying the fat, helping digestion. It also helps absorption. Okay. Then physiologic anatomy of biliary tree. This is actually not relevant here. Go watch my video on liver. Liver की मैंने anatomy भी पढ़ा रखी है. Liver की मैंने histology भी पढ़ा रखी है. So go study that, and same is for gallbladder, which is store. So इसके भी anatomy के lectures पूरे available हैं. So आप देख सकते हैं मेरी anatomy की playlist में. अब bile में होता क्या है? Bile is composed of so many different things. So by far the most abundant substance is known as the bile salt, which account for about 1/2 of the total composition of the bile. अगर आपको पूरी composition देखनी है, so here it is. So that's the composition of the bile. Contains water, bile salts, bilirubin, and so many other things. Okay, so you can actually compare these के ये values याद रखना obviously important नहीं है. I mean, I don't want any one of you to remember this. Just the major components. Also secreted or excreted are large quantities of bilirubin, cholesterol, lecithin, electrolytes. These electrolytes, sodium, potassium, calcium, chloride, bicarbs. अब ये important है. Cholecystokinin stimulates gallbladder emptying. So gallbladder पे cholecystokinin काम करेगा, इसको contract करेगा, bile को निकालेगा, bile पहुंचेगी through the sphincter of body into the duodenum. Okay. Now by far, क्योंकि आपको anatomy पता है ना, this is the duodenum, this is the gallbladder here, bile duct combines with the pancreatic duct, they open in the duodenum. So जो भी bile gallbladder में store है, it will reach to the duodenum, और जो भी pancreatic juice है, it will also reach to the duodenum. Okay, by far the most potent stimulus for causing gallbladder contraction is the cholecystokinin. It's the most important. ये आपको लाजमी याद रखना है if you are talking about gallbladder contraction. The gallbladder is also stimulated less strongly by acetylcholine secreting nerve fiber, but this is secondary signal. The primary signal is cholecystokinin. That's what you have to remember, okay? And that's the story about bile juice. That's it. Function of bile salts in fat digestion. अब ये बार-बार repeat कर रहे हैं एक चीज को. मैंने आपको बता दिया एक ही साथ कि there are twofold jobs of bile. Number one, they help in emulsification of fat, which means bada molecule into chota molecule. And number two, bile also helps in absorption by micelle formation. अब liver जो cells हैं, they synthesize about 6 grams per day of bile salts, and these bile salts are very, very important. The precursor of the bile salt is cholesterol. They are made up from cholesterol. Therefore, cholesterol is important also in your diet. The cholesterol is first converted to cholic acid or chenodeoxycholic acid. These acids in turn combine principally with glycine. That's the second step. So this is the first step
conversion of cholesterol into these compounds and then combined with glycine to form glycoconjugated tauroconjugated bile acids. The bile salts have two important actions. First, they have a detergent action. इस detergent action की वजह से होता है कि ये जो बड़ा सा fat globulate होगा, it will be converted into small, again emulsification. ये बात आपको याद रखनी है. और दूसरा important effect in bile salts का ये है कि even more important than emulsification, they say bile salts help in absorption of fatty acid cholesterol by micelle formation. ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं और बार बार ये बात रिपीट हो रही है. So it designates the importance of the discussion that is going on at the moment. And so अब तक हमने we have talked about secretions from oral cavity, secretions from stomach, secretion from pancreas, secretion from liver. Now we have to talk about कि जो small intestine है उसमें से क्या सीक्रेट होता है. तो सिक्रेशंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऑब्वियसली एपिथेलियल लाइनिंग है, यहाँ पे भी बहुत सारे तरह के सेल्स हैं. सो देयर आर फॉर एग्जांपल ब्रुनर्स ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस म्यूकस. एन एक्सटेंसिव array of compound mucus glands, also called the Brunner gland, are located in the wall of the first few centimeters of duodenum. ये important है क्योंकि first few centimeters of duodenum में acidic chyme आ रहा है and it can damage the mucosa और हमें mucosa damage नहीं होने देना, इसलिए यहाँ पे mucus चाहिए. देखो कितना प्रोटेक्शन रखा है duodenum का नेचर ने, क्योंकि नेचर को पता है ना ऊपर स्टमक से एसिड निकल के यहाँ duodenum में आ रहे हैं. तो अब पैंक्रियास से बाइकार्बोनेट आ रहा है, पैंक्रियास से वाटर आ रहा है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए. खुद डिओडेनम में ब्रुनर ग्लैंड है जो म्यूकस प्रोड्यूस. इस सारी चीज़ों का पर्पस क्या है कि जो डिओडेनल वॉल है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें अल्सर वल्सर ना बने. यार समझ में आ रही है बात. सो दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ ब्रुनर्स ग्लैंड इज. दीज ग्लैंड secrete large amount of alkaline mucus which is very important to protect the mucosa of duodenum. And कौन से स्टिमुलस हैं जो इन ब्रुनर ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं? Number one, tactile movement, यानी जैसे फूड आता है, these glands are stimulated. Parasympathetic drive, vagal stimuli, and secretin. So all these are good stimuli for. देखो GI ट्रैक में जितने भी हार्मोन्स वगैरह है ना, दे आर ऑल लॉजिकली डिजाइंड. आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि अगर फूड आ रहा है डिओडेनम में तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इनहिबिट नहीं होगी, ऑगमेंट होगी, क्योंकि फूड आ रहा है ना, फूड को डाइजेस्ट होना है तो अब पैंक्रियास से ज्यादा जूसेस आने पड़ेंगे. ये लॉजिकल चीजें हैं, आप समझ के पढ़ोगे तो इजीली याद होगा. अच्छा, बर्नर्स ग्लैंड आर आल्सो सीक्रेटेड. सो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से और सीक्रेटिन से तो ये स्टिमुलेट होता है, बट बर्नर ग्लैंड्स आर आल्सो इनहिबिटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इनहिबिटरी स्टिमुलाई फॉर दीज म्यूकस सिक्रेशन. Now, secretion of the intestinal digestive enzyme juices by the crypts of Libercrin, located over the entire surface of the small intestine or small pits. यानी अगर ये flat, इस तरह से ट्यूब की आप बात करें तो this is the flat lining of the GI tract. लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें कि these are the crypts, इसकी वॉल में इस तरह invaginations है. So these are called crypts of Libercrin. These crypts lie between the intestinal villi and the surfaces of both the crypts and the villi are covered with the epithelium. So ये जो invagination है इसकी अपनी epithelial lining होगी, इसके पास अपने epithelial cells होंगे, उसमें goblet cells हैं, उसमें enterocytes हैं, and they secrete. So this is for example a diagram of a crypt. You see, ये normal surface होगी epithelium की, यहाँ पे villi वगैरह होंगे और ये ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ है. So this is a crypt. It contains mucus cells, it contains other epithelial cell, it also contains Paneth cells. So different types of cells are there and they obviously secrete things. The intestinal secretions are formed by the enterocytes of the crypts at the rate of about 1800 ml per day. You see कितना सारा liquid बन रहा है इन cells में. These secretions are almost pure extracellular fluid and have a slight alkaline pH, or slight alkaline, not too alkaline, not too acidic. This flow of fluid from the crypt into the villi supplies watery vehicle for the absorption. देखो यहाँ ये लिक्विड चाहिए बिकॉज यहाँ इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है. इंटेस्टाइन में आगे डिओडेनम के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन होनी है. उसमें मोनोसैकेराइड्स ने एब्जॉर्ब होना है, डाइसैकेराइड्स ने एब्जॉर्ब होना है, अमाइनो एसिड्स ने एब्जॉर्ब होना है. सो वी नीड अ लिटिल मीडियम हियर. वाटर वगैरह यार लिक्विड चाहिए तो वो लिक्विड यहाँ से भी आ रहा है. ठीक है. सो इट्स बीइंग कंट्रीब्यूटेड आल्सो बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. The exact mechanism, how marked quantities of water are secreted by the cells of the crypts of Libercrin are not very clear, but it is believed that it is involved by ionic movement. So for example, there is active secretion of chloride into the crypts, active secretion of bicarb or sodium exchanges की वजह से there is osmotic drift of the water. So obviously ions move करेंगे इधर उधर. तो अगर एक ही सेल है और काफी सारा आयन यहाँ ल्यूमेन में जमा कर दो आप तो osmotic पावर बढ़ गया, पानी बाहर आएगा. इसी तरह की कोई चीज होती होगी, एग्जैक्टली नहीं पता.
नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पैंक्रियास से आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखते हैं, when secretions of the small intestine are collected without cellular debris, they have almost no enzymes. The enterocyte mucosa, however, there are enzymes, एक बात मैंने आपको बताई थी कि there are enzymes actually attached on the mucosal epithelial structures. So the enterocytes of the mucosa, especially those cover the villi, contain the digestive enzyme. They don't secrete it, they contain it. इसमें difference है. So ये एक सेल है, उसमें यहाँ पर enzymatic structure है. तो जब कभी डाइसैकेराइड इस पे लगेगा तो ये दो मोनोसैकेराइड्स में ब्रेकअप हो जाएगा जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. और ऐसे कई सारे एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल पेप्टाइडेजेस है, लैक्टेज है, माल्टेजेस थे, सक्रेजेस, ये हमने पढ़ा भी है, ऊपर वीडियो के सेक्शन में बात कर चुके हैं इसके बारे में. बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द epithelial cell. Now the epithelial cells deep in the crypts of liver cone continually undergo mitosis. They keep on dividing and new cells are being formed. There's a life cycle going on. इसमें कोई funny बात नहीं है, easy stuff. Regulation of small intestinal secretion, local stimuli. By far the most important means of regulating small intestine secretion are the local reflexes. पूरा nervous system है यार GI tract के अंदर, so that is activated. Secretion of mucus by the large intestine. अब large intestine में mainly mucus secrete हो रहा है, mucus secretion. अब इंजाइम की जरूरत भी नहीं है ना, वो क्यों सीक्रेट होंगे, क्योंकि डाइजेशन तो हो गई जितनी डाइजेशन होनी थी स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ द म्यूकोसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन लाइक दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकिन, उसमें भी ऐसे इन्वेजिनेशंस होते हैं, एंड दे आल्सो कंटेन म्यूकस सेल्स. दीज म्यूकस हैव सिक्रीशन ऑफ मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ बाइकार्ब, बट लार्जली द म्यूकस स्टफ इज रिलीज्ड. ओके, स्टिमुलेशन ऑफ द pelvic nerves of the spinal cord, which carry the parasympathetic fibers to the distal half of the large intestine, can also cause marked increase in mucus secretion. So parasympathetic drive is stimulatory to the whole GI tract generally. Okay. Asha. Diarrhea caused by excessive secretion of water and electrolytes in response to irritation. So whenever there is inflammation or an infection or enteritis, then more water is released, more mucus is released, more bicarb sometimes is also released. But diarrhea can result as a consequence of irritation. So that's a very generic heading yaar, kya baat kar rahe ho. Okay, so that is all done, I guess. This chapter is done. Now let's talk about chapter number 66, which is the second last chapter of unit 12 of the GI tract. In this chapter we will talk about digestion as well as absorption from the GI tract. अब obviously जो पूरा GI tract है, अब तक हम जितना प्रीएम्बल पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये बात अब आपको पता है कि पूरे GI ट्रैक्ट का ऑब्वियसली काम ही डाइजेशन है. देखिए हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट जो मेजर डाइटरी कंपोनेंट्स जो हमें डाइजेस्ट करने हैं, जब मैं कह रहा हूँ मेजर तो इसका मतलब ये कि बेसिकली मेक्स द चंक ऑफ द फूड दैट वी ईट. They include the carbohydrates, they include the proteins, and they include the fats. तो इन तीनों की digestion हमको समझनी है अच्छे तरीके से कि how do we digest carbohydrate, proteins, and fats, and then after the digestion, how do we absorb them? So that's basically the chapter all about. The major food on which the body lives, apart from other things such as vitamins, the major ones are carbohydrates, fats, and proteins. They generally cannot be absorbed in the natural forms through the GI mucosa. यानी as such carbohydrate जो है जो हमारी डाइट में होता है, it is largely in the form of polysaccharides. यानी these are big chains. एक monosaccharide unit होगा, then दूसरा monosaccharide, फिर तीसरा, फिर चौथा. So that is what we call a polysaccharide. और ये polysaccharide आपकी बॉडी में ऐसे absorb नहीं हो सकता, ऐसे large protein molecule absorb नहीं हो सकते. They generally cannot be absorbed in the natural forms, therefore they have to be digested. इस चैप्टर में हम ये सारी डाइजेशन की बात करेंगे. सो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट के हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड, देन हाउ प्रोटीन्स एंड फैट्स आर. लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल मैं आपको स्टार्ट में बता देना चाहता हूं कि देखें, जब स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एनीथिंग आपस में मिलते हैं, वो स्मॉलर यूनिट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ मोनोसैकेराइड एंड दिस इज अनदर मोनोसैकेराइड. तो जब ये मोनोसैकेराइड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो व्हाट हैपेंस कि एक मोनोसैकेराइड में से हाइड्रोजन और दूसरे मोनोसैकेराइड में से OH ये निकल जाते हैं और वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, और फिर एज अ रिजल्ट ये एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ बाउंड हो जाता है. सो हियर वी हैव अ बॉन्ड फॉर्मेशन. तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, एक मोनोसैकेराइड से हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, दूसरे से OH, एंड वी विल गेट रिड ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल. एज अ रिजल्ट द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. अब अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा,
इस वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन जाके इधर लग जाएगा, OH जाके इधर लग जाएगा जैसे पहले था, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये जो बॉन्ड टूटने का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो जितना भी डाइजेशन का, अब ये जनरल रूल अप्लाई होता है कार्बोहाइड्रेट्स पर भी, प्रोटीन्स पर भी और फैट्स पर भी। सो कार्बोहाइड्रेट्स में भी छोटे यूनिट्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं और इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वाटर यूज होता है। फैट्स में भी ऐसे ही है, फैट्स में भी स्मॉलर यूनिट्स हैं और फैटी एसिड्स को तोड़ने के लिए वाटर यूज होगा। इसी तरह प्रोटीन्स में है। सो जनरल रूल है हाइड्रोलिसिस का। कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसा है, फैट्स में भी आप देखेंगे यही हेडिंग है, हाइड्रोलिसिस, और इवन प्रोटीन्स में भी हाइड्रोलिसिस है। तो दैट्स द जनरल प्रिंसिपल। एक चीज समझ ली तो बाकी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द डाइट आर आइदर वेरी लार्ज पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड। सो अगर दो मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ डाइसैकेराइड। इफ देयर आर मोर देन 3 in number monosaccharides joining together, then we call it a polysaccharide, and they are joined together by this phenomena जो मैंने आपको बताया था, इनमें से पानी निकलता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं condensation. This phenomena of condensation basically means that a hydrogen has been removed from one monosaccharide and OH ion has been removed from the other, and as a result the bond is formed. अब जब इस प्रोसेस को रिवर्स होना होगा, यानी जब डाइजेशन का प्रोसेस होगा, द प्रोसेस इज रिवर्स। द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स। स्पेसिफिक एंजाइम्स इन द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प दिस प्रोसेस एंड दे रिटर्न द हाइड्रोजन इन OH। जो कंडेंसेशन में निकला था वाटर, अब वो वाटर वापस ऐड होता है, और जैसे ही वो वाटर मिलता है तो पॉलीसैकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, एंड द फिनोमिना इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। यानी अगर ये एक मोनोसैकेराइड है और ये दूसरा मोनोसैकेराइड है और इनके बीच में ये बॉन्ड है, पानी ऐड हो रहा है, एंजाइम्स मौजूद हैं, एंड देन सी व्हाट हैपेंस कि एक मोनोसैकेराइड पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, दूसरे मोनोसैकेराइड पर OH अटैच हो गया। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड अलग हो गए, इनके बीच में अब कोई बॉन्ड नहीं है। सो बेसिकली आपने एक डाइसैकेराइड को कन्वर्ट कर दिया दो मोनोसैकेराइड्स में, या दूसरे अल्फाज में आपने डाइजेशन कर दी डाइसैकेराइड्स की, आपने डाइजेस्ट कर दिया डाइसैकेराइड को, आपने हाइड्रोलाइज कर दिया डाइसैकेराइड्स को इनटू द मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये इस तरह होती है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब बाकी के चैप्टर में हमको बेसिकली ये देखना है कि कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सिमिलर होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। फैट में ये होता है कि देयर इज अ ग्लिसरॉल बैकबोन और उस पर फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। फैटी एसिड अटैच होते हैं ऑन अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। सो इफ यू वांट टू ब्रेक दीज फैटी एसिड बॉन्ड्स देन यू हैव टू डू हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर भी हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। सेम प्रोसेस है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स में एक अमाइनो एसिड बॉन्ड बनाएगा, दूसरा अमाइनो एसिड बॉन्ड बनाएगा, तीसरा अमाइनो एसिड। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू नीड टू थिंग्स, नंबर वन वाटर एंड यू नीड एंजाइम्स। सो दैट इज व्हाट वी विल स्टडी के कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन बैकबोन्स को तोड़ते हैं। सो डाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये है कि जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ा जाए by using water, a process known as hydrolysis. Okay, so the hydrolysis here is also involved. So all digestive enzymes actually try to help the process of hydrolysis ताकि बॉन्ड टूटें। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो मोनोसैकेराइड्स बन जाएं, अगर फैट्स की डाइजेशन हो रही है तो फैटी एसिड लिबरेट हो, और अगर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है तो अमाइनो एसिड लिबरेट हो। सो दैट्स व्हाट द जॉब इज। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, और फिर फैट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब किसी भी यूनिट की डाइजेशन पढ़ने से पहले आपको दो चीजें देखें समझनी है। नंबर वन कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स का इस वक्त जिक्र कर रहे हैं तो हम क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हम चीनी लेते हैं ना, शुगर विच इज ऑल्सो द सक्रोज। सो एक हम सक्रोज कंज्यूम करते हैं विच इज डाइसैकेराइड नोन पॉपुलरली ऑल्सो एज शुगर। Then we also consume lactose, which is by and large present in milk. या तो हम डायरेक्टली मिल्क ले रहे होते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स है या बेकरी के आइटम्स है, इस तरह की चीजें। अच्छा, तीसरी चीज जो हम काफी बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं एज कार्बोहाइड्रेट आर द स्टार्चेस, जैसे कि पोटैटोज में है। सो नॉन एनिमल बेसिकली जो फूड है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर बेसिकली, जैसे कि पोटैटोज के एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, दीज आर स्टार्चेस। तो ये तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें स्टार्च काफी दे आर लार्ज पॉलीसैकेराइड्स। बाकी सुक्रोज जो है ये तो डाइसैकेराइड है, यानी इसमें सिर्फ एक मोनोसैकेराइड और दूसरा मोनोसैकेराइड। तो एक सिंपल हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और ये मोनोसैकेराइड अलग और ये मोनोसैकेराइड अलग, लेकिन ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार्च इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। सो इसका मतलब ये है कि इसमें काफी ठीक ठाक डाइजेशन होनी होगी। देयर आर सो मेनी मोनोसैकेराइड्स जॉइंड टुगेदर बाय द बॉन्ड्स।
अच्छा, और भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, सच एज अल्कोहल इज अ कार्बोहाइड्रेट, पायरुविक एसिड, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन, सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट द मेजर वंस आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड स्टार्च। एक ये आपको पता होना चाहिए कि हम डाइट में कंज्यूम क्या क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती किधर है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारी बॉडी में दो तीन पॉइंट्स पर हो रही है। एक तो ओरल कैविटी में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, अभी बताऊंगा। देन स्टमक में ये डाइजेशन होती है और फिर इंटेस्टाइन में भी होती है। सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज, बट बिफोर वी प्रोसीड कि ओरल कैविटी में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, वी नीड टू ऑल्सो नो कि सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ वेरी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आवर डाइट। इट्स ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, सब्जियों में होता है, वेजिटेबल्स में है, बट हमारी बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम नहीं है। इट्स प्रेजेंट इन लाइक काउ और अदर हर्बीवोरस एनिमल्स, बट हमारी बॉडी में वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, सो इट इज देयर फॉर नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड इट इज रिलीज आउट इन द फीसेस, so it makes the bulk of the feces. So these are the common carbohydrates that we consume in our diet. अब हमें ये देखना है कि ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कैसे होती है, फिर स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में। सो व्हेन द फूड इज च्यूड, जब आप खाना चबा रहे होते हैं, इट इज मिक्स्ड विद सलाइवा, और सलाइवा में एंजाइम है विच फॉर एग्जांपल इट इज द टाइलिन एंजाइम, आल्सो नोन एज द अल्फा अमाइलेज। ये मुंह में खाने के साथ मिक्स होता है, इट हैज अ मिक्सिंग एक्टिविटी विद द फूड। ये रिलीज हो रहा है फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड और आ रहा है इनटू द ओरल कैविटी बीइंग मिक्स्ड विद द फूड. This enzyme hydrolyzes the disaccharide, maltose, and other small polymers of glucose, which contain only 2 to 3 glucose molecules. However, the food remains in the mouth only for a short time. इसीलिए बहुत ज्यादा माल्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता. अच्छा, माल्टोज बेसिकली ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है. सो बिकॉज द फूड इज ओनली फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इन द माउथ, सो इट इज नॉट completely digested. So only about 5% of the food is digested in the oral cavity. Food तो नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट भी लार्जली कौन सा, maltose, because maltose पर कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, टाइलिन. Starch digestion sometimes continues in the body and fundus of the stomach as well for as long as 1 hour before the food becomes mixed with the stomach secretion, because stomach की जो secretions are very acidic और उनका pH बहुत ही कम होता है. उस कम pH पे ये एंजाइम जो है टाइलिन, ये काम नहीं करता. तो बेसिकली डाइजेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की इन द ओरल कैविटी एंड फॉर सम टाइम इन द स्टमक, बट वंस इट इज मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूसेस द डाइजेशन स्टॉप्स. देन द डाइजेशन कंटिन्यूज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा है कि जब ये डिओडेनम के अंदर काइम पहुंचेगा, यानी फूड डाइजेस्ट होकर पहुंचेगा, तो यहाँ पर देयर विल बी अ फ्लक्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस. और इन पैंक्रियाटिक जूसेस में देयर आर सो मेनी एंजाइम्स. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अल्फा अमाइलेज, एंड दिस अल्फा अमाइलेज विल ट्राई टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग maltose, and this is a very very powerful enzyme, and it functions fully because duodenum में food as compared to oral cavity obviously ज़्यादा रहता है. So therefore within 15 to 30 minutes after chyme empties the stomach into the duodenum and mixes with the pancreatic juice, virtually all the carbohydrate will have become digested. In general, carbohydrates are almost totally converted into maltose or other small glucose polymers before passing beyond the duodenum. So जितना भी बड़ा polysaccharide होगा, ultimately वो smaller units of glucose में, maltose में या दूसरे disaccharides में convert हो जाएगा. So that's what happens in the small intestine. ठीक है? तो हुआ ये कि आपने पॉलीसैकेराइड कंज्यूम किया था आपकी ओरल कैविटी में, इंटेस्टाइन में आके अब वो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड बन चुका है. जो मोनोसैकेराइड बन गया वो तो डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो डाइसैकेराइड्स हैं ये फर्दर डाइजेस्ट होते हैं. और कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? आपकी इंटेस्टाइन में जो सेल लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल लाइनिंग, अब उस लाइनिंग में एंजाइम्स मौजूद हैं. और ये जो एंजाइम्स हैं, इनका काम ये है कि जब एंजाइम्स के साथ, यानी इन एपिथेलियल सेल्स के साथ जब डाइसैकेराइड्स इन टच होते हैं, तो these enzymes which are lining the epithelium of the small intestine, they convert the disaccharides into smaller units which is the monosaccharide. So the enterocyte का मतलब है ये सेल जो आपकी small intestine को लाइन कर रहे हैं, they contain 4 very important enzymes: lactase, sucrase, maltase and alpha dextrinase. So lactase lactose को डाइजेस्ट करेगा, sucrase sucrose को डाइजेस्ट करेगा, maltase maltose को डाइजेस्ट करेगा. So all these are disaccharides. So all the disaccharides are then converted into monosaccharides. So these enzymes are located in the enterocytes and they cover the intestinal microvilli brush border. Lactose जो है वो split हो जाएगा into a molecule of galactose and glucose. So if
Imagine this is your intestinal lining and these are the epithelial cells, और ऊपर से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड डाइजेस्ट होकर अब यहाँ पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ डाइसेक्राइड, और वो डाइसेक्राइड जो है वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्टेज. सो ये लैक्टेज यहाँ आके टकराया, यहाँ एंजाइम्स ने उस पर काम किया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज में और एक मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में. इसी तरह अगर सुक्रोज यहाँ आकर के अटैच होगा तो एंजाइम्स उस सुक्रोज पे एक्शन करेंगे और उससे निकलेगा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, बिकॉज दिस इज व्हाट सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ. एंड दिस इज हाउ यू गेट in the small intestine by these enterocytes you get monosaccharides liberated. और ये जो monosaccharides निकलेंगे ये फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाती है. So in ordinary diet which contain far more starches than other carbohydrates combined, glucose represent more than 80% of the final product. क्योंकि ये सुक्रोज में से भी ग्लूकोज निकल रहा है, फ्रक्टोज में से भी आप आखिर में I mean you get glucose from all these sort of things. स्टार्चेस जो आप कंज्यूम करते हैं ये आपके ओरल कैविटी में टाइलिन इस पर एक्शन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्शन करते हैं, एंड देन माल्टोज से अल्टीमेटली यू गेट ग्लूकोज. अदर डाइसेक्राइड्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं वो गैलेक्टोज हैं, सुक्रोज हैं, एंड दीज आर ऑल देन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मोनोसेक्राइड्स. लैक्टोज पे जो एंजाइम काम करेगा वो लैक्टेज है, सुक्रोज पे जो एंजाइम काम करेगा वो सिक्रेज है, माल्टोज पे जो एंजाइम काम करेगा वो माल्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रोनेज. ये चारों एंजाइम यानी माल्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रोनेज, लैक्टेज एंड सिक्रेज, ये चारों एंजाइम्स बेसिकली आपके एंटेरोसाइट्स पर हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन कर रहे हैं. सो दिस इज द स्टोरी. नाउ इमेजिन यू ईट स्टार्च एंड नाउ यू हैव गॉट फ्रॉम द स्टार्च मोनोसैकेराइड्स एंड दीज मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. एब्जॉर्प्शन हम अलग से पढ़ेंगे. सो दैट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? टाइलिन. फिर दूसरा कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में अमाइलेज है. और सबसे ज्यादा एंजाइम तो हैं एंटेरोसाइट्स पर. 4 डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया, मल्टेज, डेक्स्ट्रीनेज, लैक्टेज और सुक्रेज. ओके, अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की. डाइटरी प्रोटीन्स आर केमिकली लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड बाउंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेजेस. यानी इफ दिस इज वन अमाइनो एसिड, दिस इज अदर अमाइनो एसिड, इनमें से वाटर निकल जाएगा. सो नाउ दिस बॉन्ड इज व्हाट वी कॉल द पेप्टाइड बॉन्ड एंड सो मेनी अमाइनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. तो इनको भी एंजाइम्स के जरिए, हाइड्रोलिसिस के जरिए तोड़ना होगा. अब देखते हैं वो एंजाइम्स किधर है. सो प्राइमरीली वो एंजाइम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 2 जगह हैं जहां पे प्रोटीन डाइजेस्ट होती है. स्टमक में जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन. It is an important peptic enzyme of the stomach. Is most active in the pH 2 to 3 because it is present in the stomach. It works in the acidic environment. और इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करता है. सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ प्रोटीन मॉलिक्यूल व्हिच इज 1 अमाइनो एसिड, दिस इज 1 अमाइनो एसिड बॉन्ड अनदर अमाइनो एसिड बॉन्ड अनदर अमाइनो एसिड बॉन्ड अनदर एंड बॉन्ड अनदर. सो देयर आर 5 अमाइनो एसिड्स एंड 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो पेप्सिन क्या करेगा? यहां से काट देगा तो 2 अमाइनो एसिड इधर हो गए, 3 इधर हो गए, या यहां से काट देगा तो 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए. सो ये रैंडमली पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है. सो दैट्स व्हाट इज द जॉब ऑफ पेप्सिन. और दूसरा, पेप्सिन इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट इन डाइजेस्टिंग कोलेजन. अच्छा, कोलेजन की डाइजेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज आप मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें भर भर के कोलेजन होता है. ये कोलेजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो बाकी प्रोटीन्स जो मीट में हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं होंगी. और कोलेजन को डाइजेस्ट करना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ योर एंजाइम पेप्सिन. ओके, सो कोलेजन इज अ मेजर कॉन्सेप्ट. ये सारी बात हम कर चुके हैं. Pepsin only initiates the process of protein digestion, usually providing 20% of the total protein digestion to convert protein into proteases, peptones and a few polypeptides. यानी मैंने जैसे आपको बताया ना कि it divides, protein molecule, polypeptide molecule into smaller chunks. 3 अमाइनो एसिड अलग हो गए, 2 अलग. तो ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई. कंप्लीट डाइजेशन तब होगी जब एक अमाइनो एसिड अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग. अभी हमको अलग अलग अमाइनो एसिड्स नहीं मिले. ओके, now most protein digestion results from action of pancreatic proteolytic enzyme. So pancreas is the key factor because pancreas में different sets of enzyme हैं. So it contains trypsin, chymotrypsin, carboxypolypeptidases, elastases. Both trypsin and chymotrypsin split proteins into small polypeptide. अब ये
पेप्सिन ने क्या किया था, बड़े से पॉलीपेप्टाइड को रैंडमली मुख्तलिफ चेन्स में डिवाइड किया था. अब ये फर्दर इसको डिवाइड करेंगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन. सो दे विल मेक डाइपेप्टाइड्स फॉर एग्जांपल, जिसमें दो दो फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स होंगे. प्रोइलास्टेजेस इन टर्न, इलास्टेजेस दे डाइजेस्ट द इलास्टिक फाइबर्स, एंड देन अल्टीमेटली यू नो व्हाट विल हैपन. फिर वही होगा कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ये एंटेरोसाइट्स हैं, इन एंटेरोसाइट्स पर एंजाइम्स बैठे हुए हैं. ये एंजाइम डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट कर देंगे. सो द लास्ट डाइजेस्टिव स्टेज ऑफ प्रोटीन in the intestinal lumen is achieved by the enterocyte. ये बिल्कुल वैसे है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हुआ था, सेम चीज कि एंटेरोसाइट्स हैं, इन पर आकर के प्रोटीन्स लगेंगे यानी डाइपेप्टाइड्स जो ऑलरेडी काफी हद तक डाइजेस्ट हो चुके हैं. अब यहाँ आके वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग वेरी स्मॉल अमीनो एसिड्स. सो द टू टाइप्स ऑफ पेप्टाइडेजेस. अब ये जो एंजाइम्स आपके एंटेरोसाइट पर होते हैं, इन एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइडेज. So peptidases can be dipeptidases, amino polypeptidases. They split the remaining large polypeptide into tripeptide, dipeptide, and also into amino acid. Finally, inside the cytosol of the enterocyte are multiple other peptidases. So they make sure कि further अगर कोई dipeptide रह गया है जिसमें दो अमाइनो एसिड हैं तो उसका बॉन्ड भी तोड़ दिया जाए और सिंगल अमाइनो एसिड रिलीज हो जाए, और ये अमाइनो एसिड फिर आपकी सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है. More than 99% of the final protein digestive product are absorbed as individual amino acid. और ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रहा है. सो बेसिकली हमने जो कार्बोहाइड्रेट की बात की, कार्बोहाइड्रेट से स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बन रहा है हमारे पास, इन मोस्ट केसेस ग्लूकोज. हमने प्रोटीन की बात की, प्रोटीन से डाइजेशन के बाद स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बन रहा है, अमाइनो एसिड. और फिर अब हम बात करते हैं, आइए फैट्स की देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट्स पे क्या स्टोरी है. फैट्स of the diet हैं क्या? By far the most abundant fat of the diet are the neutral fats, also known as the triglyceride that we eat. Neutral fat is the major constituent in food of animal origin, but much less so in food of plant origin. So triglyceride mostly animal origin. Small quantities of phospholipid, cholesterol, and cholesterol esters are also present in our usual diet. The phospholipid and cholesterol esters contain fatty acids, and therefore they are also considered as fats. Cholesterol is a sterol compound that contains no fatty acid, but it does exhibit some physical and chemical characteristics of fats. तो basically आपको बताना चाहिए आपकी फैट में क्या क्या चीजें शामिल हैं. It includes triglyceride, it includes phospholipid, cholesterol. ये सब फैट में कंसिडर किया जाता है. Okay. Now, digestion of fats occurs mainly in the small intestine. It does not, by and large, happen in the stomach or oral cavity. It is mainly happening in the small intestine. A small amount of triglyceride digested in the stomach by lingual lipases, but it's a very small percentage. Mainly it happens in the small intestine. That's the point to remember. अच्छा, fat की digestion में एक phenomena जरूरी है which is called emulsification. The first step in the digestion of fat is known as emulsification. And emulsification happens by bile acids and lecithin, जो कि gallbladder से आ रहा है obviously. The first step is to physically break the fat globules into smaller sizes so that the water-soluble digestive enzymes can act on the globule surface. अब fat जो है इसमें water-soluble enzyme enter नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको shatter कर दें छोटे 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 globule इस तरह के छोटे छोटे particles में, इस बड़े ग्लोब्यूलर पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देना कहलाता है इमल्सिफिकेशन. और ये इमल्सिफिकेशन काम है बाइल सॉल्ट्स का, बाइल एसिड का, लेसिथिन का, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट. सो इफ देयर इज नो बाइल, फॉर एग्जांपल, फैट डाइजेशन विल बी डिस्टर्ब. ओके. So most of the emulsification then occurs in the duodenum under the influence of the bile. So there are bile salts and lecithin which are involved in this. If this does not happen, fat is not going to be digested. Therefore, fat-soluble portions of these liver secretions dissolve the surface of the fat globules, and then the enzymes act. When the interfacial tension of a globule non-miscible fluid is low, this non-miscible fluid, upon agitation, can be broken up into many tiny particles far more. This is not important discussion. Each time the diameter of the fat globule are significantly decreased as a result of agitation in the small intestine, the total surface area of the fat increases. Obviously, if this is the larger molecule and now we have smaller molecules, surface area is increasing. And then the lipase enzyme performs its job. It goes and digests the fat. Okay, so emulsification is the important step number one.
Then there are triglycerides which are digested by the pancreatic lipases. By far the most important enzyme for digestion of triglyceride is the pancreatic lipase. मैंने आपको बताया ना हमारी डाइट में कौन कौन से फैट्स हैं. We have triglycerides and it is digested by the pancreatic lipase. So fat जो आपने डाइट में लिया, first by the bile and the agitation movements, contractions of the duodenum, it it's a बड़ा globular cheese into a smaller particle, emulsified fat. अब जो emulsified fat है, it is then converted into smaller units by pancreatic lipase. और जो end product है fat का, they are free fatty acid. So ultimately you get free fatty acid. So lipase का काम है to generate free fatty acid and monoglycerides. So free fatty acids are the product from triglycerides. Bile salts form micelles that accelerate the fat digestion. ये भी हमने बात कर ली already. Emulsification. ये जो छोटे छोटे units बनते हैं इनको हम micelles कहते हैं. Missile की तरह micelles. And it increases the surface area for the action of lipase. Okay? Right. Digestion. ये तो triglyceride की कहानी थी. अब cholesterol esters and phospholipid. Most cholesterol in the diet is in the form of cholesterol esters, which are combination of free cholesterol and one molecule of fatty acid. So that's the biochemistry bit you should know. Phospholipids also contain fatty acids within their molecule, and they are digested by enzymes known as cholesterol ester hydrolases, phospholipases, also coming to the small intestine by pancreatic secretions. Okay, so bile salt micelles play the same role in ferrying free cholesterol. So again, emulsification is important. अगर fat products की बाइल के जरिए इमल्सिफिकेशन नहीं होगी तो पैंक्रियाटिक लाइपेज भी काम नहीं करेगा. सो यू सी, हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, वो ओरल कैविटी में भी डाइजेस्ट होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और फिर एंटेरोसाइट्स में. हमने प्रोटीन की बात की, वो स्टमक में भी डाइजेस्ट होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर एंटेरोसाइट्स में. फिर हमने लिपिड्स की बात की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं बाय द पैंक्रियाटिक लाइपेजेस. Okay, so now as a result of digestion, from the carbohydrate you get glucose, from the protein you get amino acids, and from the fats you get fatty acids. ठीक हो गया. तो आपके जो स्मॉलर यूनिट्स बन गए वो हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड. अब हमें इन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन की बात करनी है. सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के जनरल प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे अगर आप चैप्टर 4 की वीडियो पहले देखते हुए आओगे, जिसमें जनरल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात की है. बिकॉज एब्जॉर्प्शन is quite a lot of transport ना, facilitated diffusion, membrane transport, तो वो सब यहाँ पे जिक्र होगा, हम नाम ले रहे होंगे. तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी थी मेरी तो आपको वो नाम समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होगी. सो इट इज रिकमेंडेड यू गो वॉच माय वीडियो चैप्टर नंबर 4 की, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है मेरी फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल्स. एनाटॉमिकल बेसिस सबसे पहले समझ लो. द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड daily by the intestine is about 1.5 liters. इतना लिक्विड फॉर्म में हमको डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करना है. इसके अलावा कुछ अमाउंट सीक्रेट भी होता है इनटू द इंटेस्टाइन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 7 liters, and then it comes to a total of 8 to 9 liters to be reabsorbed daily. All but 1.5 liter of this fluid is absorbed in the small intestine, leaving only about 1.5 liter to pass through the ileocecal wall into colon each day. Now the stomach is poor absorptive area. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, दैट इज अच्छा, इस जुमले का मतलब आई होप कि आपकी समझ में आ गया है. ऑल बट 1.5 लीटर ऑफ फ्लूइड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका मतलब बेसिकली ये है कि सारा ये जो 8-9 लीटर आपको फूड एब्जॉर्ब करना है या लिक्विड एब्जॉर्ब करना है, ये सारे का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है. पीछे बच कितना जाता है? सिर्फ 1.5 लीटर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है. स्टमक में ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती. इट्स अ बैड एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन एरिया बिकॉज उसमें ऐसे विलाय मौजूद हैं, तो absorptive surface बहुत ज़्यादा है. Only a few highly lipid soluble substances such as alcohol and some drugs such as aspirin, they are largely absorbed, not largely, in small quantities I must say. They are absorbed in stomach in small quantities, but there are few examples. Most absorption takes place in the small intestine. Now, fold of Kerckring villi and microvilli increase the mucosal absorptive area by nearly as much as 1000-fold. So, ये जो villi की small intestine की wall के folds हैं, फिर उसमें brush border है, villi, microvilli, इस सबसे surface area बढ़ रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा absorption हो सके. ठीक है? So, these are very very important. So, there are valvuli convenants which are also called folds of these are the folds. You see, every fold is increasing the surface area, and that happens in the small intestine.
These folds extend circularly almost very way 8 mm. That's not important detail. Also located on the epithelial surface of the small intestinal all the way down are millions of villi. So there are villi, a lot of villi, and on the villi there are microvilli as well. So Sara arrangement, look at this electron microscopic diagram. So this is the epithelial lining and then the brush border. So brush border always increases the surface area. The presence of villi on the mucosal surface itself increases the surface area another 10-fold. Finally, each intestinal epithelial cell on each villus is characterized by a brush border microvilli, which further increase the surface area by 20-fold. The combined effect तीन चीजों का fold of Kirk rings, villi and microvilli का ये है कि total surface absorptive area जो है वो 1000-fold increase हो जाता है. यानी अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे प्लेन होती और इसमें से फूड गुजर रहा होता और यहाँ पे सिंपल किस्म के एंटेरोसाइट्स होते तो फूड एब्जॉर्प्शन इतनी एफिशिएंट नहीं होती. अब यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट है इन सेल्स का और इन स्पेशल अरेंजमेंट्स की वजह से फोल्ड्स भी हैं, माइक्रोविलाई विलाई है. नाउ योर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड 1000 folds. Okay, so that's very very important. अच्छा, longitudinal section में there is general organization of villas जो आपको पता होनी चाहिए, and particularly the advantageous arrangement of the vascular system for absorption of the fluid and the dissolved material, the arrangement of the central lacteal, which is the lymph vessel, which is very very important because a lot of things get absorbed into the lymphatics by means of penocytosis. And let's look at the diagram. So that's the general arrangement. This is a villus, and in villus में you see there is a central lymphatic vessel which is called the central lacteal. Then there are arteries, and then there are veins, and a lot of capillary networks. So all this heavy and rich network is there because they have to absorb a lot of things. 7 to 8 or 9 liters of liquid has to be absorbed, largely in the small intestine. अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है क्या. एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ईच डे कंसिस्ट ऑफ सेवरल 100 grams of carbohydrate. So this is what we absorb. 100 or more grams of fat and 50 to 100 grams of amino acid. Now that actually depends also upon the type of diet that we are consuming, but that's the general average healthy diet. 50 to 100 grams of iron, 7 to 8 liters of water. So that is what your small intestine has to absorb daily. The absorptive capacity of the small intestine is far greater than this. यानी ये जो चीजें हमको एब्जॉर्ब करनी है एक्चुअली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इससे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है. Each day as much as several kilogram of carbohydrate can be absorbed. About half a kilogram of fat can be absorbed. Half a kilogram of protein can be absorbed. 20 or more liters of water. अब इन नंबर से जो आपकी इंटेस्टाइन की कैपेसिटी है, इन नंबर से जरा इन नंबर्स को कंपेयर कीजिए, then you will have an idea कि आप कितना अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी इंटेस्टाइन को. Isosmotic absorption of water. Water is transported through the intestinal membrane entirely by the process of diffusion. Furthermore, the diffusion obeys the law of osmosis. यानी osmosis के principles मैंने chapter 4 में आपको बताएं कि if this is a semi-permeable membrane और इस तरफ अगर osmoles ज़्यादा है यानी solute ज़्यादा है और यहाँ solute कम है, then the water concentration is more on this side. It will move in this side from the higher concentration of water to the lower concentration of water. So ये osmosis आपको समझ में आएगा जब आप बात मेरी chapter 4 की वीडियो में गौर से सुनेंगे. Okay, so conversely, the water can also be transported in opposite direction, which means from plasma into chyme. This type of transport occurs especially when the hyperosmotic solutions are discharged from the stomach into the duodenum. That is something that we will talk about in diarrheal diseases. Now, absorption of ions. Ions किस तरह मूव करते हैं? Ions के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना चाहिए ताकि आपको ions की मूवमेंट समझ में आए. 20 to 30 grams of sodium are secreted in the intestinal secretion every day. In addition, the average person eats about 5 to 8 grams of sodium. नमक खाते हैं ना, खाने में नमक डालते हैं यार. Therefore, to prevent the net loss of sodium into feces, the intestine must absorb about 25 to 30 grams of sodium daily. Whenever significant amount of intestinal secretions are lost into the exterior, such as in diarrhea, sodium reserves of the body can be depleted because you are losing sodium in the diarrhea. Normally, however, less than 0.5% of the intestinal sodium is lost in the feces each day. This is in the absence of diarrhea in a normal healthy routine. The basic mechanism for sodium absorption is shown in the figure. It's an important figure. अभी देखते हैं. The principles are explained in chapter number 4. And chapter number 4 is very, very important. So let's have a look at this diagram. So here we are looking at the cells of the intestine, and this is the intestinal lumen.
ये ल्यूमेन है तो इसमें बहुत सारा सोडियम है फॉर एग्जांपल, एंड यू हैव टू एब्जॉर्ब द सोडियम, एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ द सेल व्हिच मींस द पैरासेलुलर स्पेस. सो गट है ये, दिस इज द गट एंड दिस इज आउटसाइड द गट एंड दिस इज सोडियम. सो सोडियम enters into the cell with amino acid, sodium enters into the cell with glucose, and sodium counter transported with hydrogen. So in all these cases sodium is getting into the cell of the small intestine, and then sodium gets into the body in exchange of the potassium by the sodium potassium pump. और ये सब मैंने chapter 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. So sodium is basically powered by active transport of sodium from inside the epithelial cell through the basolateral wall. So basically हो ये रहा है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये सोडियम को बाहर फेंक रहा है, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल कम होती जा रही है और सोडियम अंदर आता जा रहा है along with glucose, amino acid and other important nutrients. Okay, active transport of sodium through the basolateral membrane of the cell of the soil. यही बात हो रही है. basolateral membrane का बेसिकली ये मतलब है, ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, these are the basolateral membrane, क्योंकि इन दोनों मेम्ब्रेन पे ये जो सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं, ये सोडियम को फ्रॉम द सेल ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द पैरासेलुलर स्पेस भेज रहा है. इस पंप का भी यही काम है, सोडियम को बेसिकली निकाला जा रहा है सेल्स में से बाहर. ओके, सो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम हो रही है थ्रू द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल रिड्यूसेस द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड देयरफॉर द सोडियम रशेस इन. Go watch chapter number 4. Okay. Right, so sodium is also co-transported through the bridge border by several specific carrier proteins, including the sodium glucose co-transporter, which we see here, sodium glucose co-transporter. There is also sodium amino acid, but right now we are talking about the sodium glucose co-transporter, SGLT1, sodium amino acid co-transporter, and sodium hydrogen counter transport. ये exchanger, because sodium अगर अंदर आ रहा है तो hydrogen बाहर जा रहा है. Okay. Then these transporters function similar as renal tubule, as we talked in renal physiology. At the same time, it also provides secondary active reabsorption of glucose and amino acid powered by the active potassium. So the main story is beginning with the sodium potassium pump. ये जो sodium potassium pump basolateral membrane पर है, ये basically cell के अंदर से sodium को paracellular space में बाहर निकाल रहा है. As a result, sodium concentration cell के अंदर कम हो रही है, and then sodium from the lumen is getting entered into the cell along with sodium, along with amino acid, and in exchange for hydrogen. Osmosis of water. The next step in the transport process is osmosis of water by the transcellular and paracellular pathway. Osmosis occurs because large osmotic gradient has been created by elevated concentration of ions in the paracellular space. Much of this osmosis occurs through the tight junctions. Osmotic movement of water is basically follow. होगा क्या देखें, ultimately जब ये sodium move करेगा from the lumen into the cell and then from the cell into the para. अब यहाँ पे paracellular space में we have a lot of sodium, so we have sodium, a lot of sodium is there. अब जब यहाँ सोडियम बहुत ज़्यादा है, so sodium is an osmotic force. More sodium, less water, and water moves out into the cell. So from the lumen to the cell to the outside. This is because of the sodium high concentration in the paracellular space. So osmosis के ज़रिए पानी भी absorb हो गया. Then aldosterone क्या काम करता है भाई? That's an important thing. Aldosterone greatly enhances sodium reabsorption. When a person becomes dehydrated, this can happen in situation of vomiting, for example. This can happen in situation of diarrhea, for example. So in any situation when the person becomes dehydrated, it's a signal for aldosterone secretion. Within 1 to 3 hours, this aldosterone causes increased activation of enzymes in the transport mechanisms for all the aspects of sodium, because the more sodium you reabsorb, the more water will follow, and this is what we need in a situation of dehydration. We need water. So if you absorb sodium, you also absorb water. The effect of aldosterone is especially important in the colon because it allows virtually no loss of sodium chloride in the feces. ये भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे जब feces की formation डिस्कस करेंगे. Absorption of chloride ion in the small intestine. You see it is being absorbed in exchange for bicarbonate. So that is the mechanism which exists in the small intestine. In the upper part particularly, chloride ion absorption is rapid and occurs mainly by diffusion in counter exchange for bicarbonate. Okay. Then absorption of bicarbonate in the duodenum and jejunum. So this happens in the upper intestine, and in the lower intestine what happens is
Often large quantities of bicarbonate must be reabsorbed from the upper small intestine because large amount of bicarbonate have been secreted into the duodenum. So it makes sense actually कि क्लोराइड के एक्सचेंज में बहुत सारा बाइकार्ब बाहर निकल जाता है, तो यहाँ बाइकार्ब एब्जॉर्ब भी होना पड़ेगा, वरना you will have disturbances in bicarb values. When sodium ions are absorbed, moderate amount of hydrogen are secreted into the lumen of the gut in exchange for the sodium. These hydrogen in turn combine with carbonic bicarbonate to form, ये सेम वो स्टोरी चल रही है जो याद है हमने डिस्कस की थी रीनल फिजियोलॉजी में. कार्बोनिक एसिड बनेगा एंड दिस कार्बोनिक एसिड विल डिसोसिएट टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द वाटर रिमेन्स एज पार्ट ऑफ द काइन, ये इंटेस्टाइन में ही रहेगा, बट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, and this carbon dioxide giving back into the blood gives back the bicarb. So हो ये रहा है कि see what happens. Let me tell you how does that happen. You cannot afford to leave bicarb because that's the main one to maintain your pH. अब ये bicarb आप lose कर रहे हैं. जब ये bicarb intestine में आता है, ये lumen है ना intestine का, so this bicarb basically combines with something very interesting. उसके साथ मिलकर ये कार्बोनिक एसिड बनाता है. सो बाइकार्बोनेट किसके साथ मिलेगा? यहाँ से ये हाइड्रोजन आ रहा है. सो दिस हाइड्रोजन एंड कार्बोनिक एसिड विल फ्यूज विद ईच अदर, कंबाइन विद ईच अदर टू मेक कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये वाटर ल्यूमन में ही रहेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के थ्रू दोबारा अंदर. अब एक दफा जब ये अंदर आएगा तो अंदर आके कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिलेगा, वाटर के साथ मिलेगा तो H2CO3 बनाएगा, हाइड्रोजन आयन फिर बनेगा, बाइकार्ब आयन दोबारा ये बाइकार्ब एब्जॉर्ब जाएगा. सो व्हेनेवर यू आर releasing bicarbonate into the lumen, you also get bicarbonate into the paracellular space because carbon dioxide absorb हो रहा है. Similar story as we discussed in the renal physiology. Secretion of bicarb and absorption of chloride ion in the ileum and large intestine. The epithelial cells on the surface of the villi in the ileum as well as on the surface of the large intestine have a special capability of secreting bicarb in exchange for absorption for chloride. This capability is important because it provides alkaline bicarbonate that neutralizes the acid products from the bacteria. So that is the capacity of your large intestine. लेकिन large intestine का system जो है ना, उसमें the colon has a lot of bacteria, for example. And these bacteria produce acids. उस acids को dilute करने के लिए you need bicarbonate. Therefore, this bicarbonate is utilized for neutralizing the acidic environment created by the bacteria. Okay, extreme secretion of chloride ions, sodium ions, and water from the large intestinal epithelium in some types of diarrhea. Well, we'll talk about this more in pathology section, but there are some toxins from cholera which causes immense severe diarrhea, and they causes severe electrolyte deficiencies and abnormalities. Active absorption of calcium, iron, potassium. There are so many other things which are also absorbed in your GI tract, and they include all these ions. So calcium are actively absorbed into the blood, especially by the duodenum, and the amount of calcium ion absorption is exactly controlled to supply and demand type of thing. You need more calcium is absorbed. One important factor controlling the calcium absorption is the parathyroid hormone secreted by the parathyroid gland as well as the active vitamin D. इन दोनों की मौजूदगी में ही calcium absorb होता है, वरना हो भी नहीं सकता. Iron ions are also actively absorbed from the small intestine. The principle of iron absorption and regulation of its absorption in proportion to the body's need for iron. You need more iron is absorbed. फिर ये potassium, magnesium, phosphate probably are other ions which are also absorbed into the small intestine. Okay, so bivalent ions are normally absorbed in only small amounts. जो bivalent ions है, जैसे कि बड़े magnesium bivalent है, phosphate तो actually फिर trivalent है. For example, maximum absorption of calcium is only 1/50th as great as the normal absorption of sodium. Sodium छोटा है, univalent है, calcium बड़ा है, bivalent है, कम absorb होगा. Okay. अच्छा जी, other nutrients. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसैकेराइड्स. डाइजेशन करके यही बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले. और सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो कौन सा है? वो ग्लूकोज है. सो एसेंशियली ऑल द कार्बोहाइड्रेट इन द फूड आर एब्जॉर्ब्ड in the form of monosaccharides. Only a small fraction is absorbed as disaccharides, and almost none absorbed as large. So most of them 80% glucose absorb कर रहे हैं basically आप, ठीक है? 80% glucose, ठीक है? The remaining 20% are other things such as galactose and fructose. Virtually all the monosaccharides are absorbed by the secondary active transport process. ये समझने के लिए chapter 4 के वीडियो देखें. And glucose is usually transported by the sodium co-transport mechanism. So there is sodium and glucose, and they together enter into the cell of the intestine from the lumen, and then they are
pumped back by GLUT2 receptors on the basal side into the body, paracellular space. ठीक है जी, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. सोडियम और ग्लूकोज जा रहे हैं बाय SGLT1, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1. सोडियम और गैलेक्टोज भी इसी रिसेप्टर से जा रहे हैं, लेकिन फ्रक्टोज का अलग रिसेप्टर है, GLUT5. Okay, so all this is explained here. Just look at the diagram, you understand what we are talking about. Absorption of other monosaccharides, ये भी हमने एक्चुअली बात कर ली है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रक्टोज की बात की, 5 is F, fructose is GLUT5. Easy to remember. अच्छा, प्रोटीन्स किस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं? द प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. ऐसे ही था ना, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बना रहे थे? प्रोटीन्स मेड अमाइनो एसिड्स. एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, मोस्ट प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर अमाइनो एसिड और डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड, या फ्री अमाइनो एसिड. पॉलीपेप्टाइड एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, आफ्टर बाइंडिंग द सोडियम आयन, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, जैसे अभी मैंने ये डायग्राम आपको दिखाई दी थोड़ी देर पहले. दिस इज हाउ बेसिकली अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद सोडियम. सो सिंपल स्टोरी, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. चैप्टर 4 की वीडियो देख के आओगे, ये सब टर्म समझ में आएंगी, वरना घंटा नहीं समझ में आने लगी, सर पे से गुजर जाएंगी. फैट्स कैसे एब्जॉर्ब होती हैं? अर्लियर इन दिस चैप्टर वी पॉइंटेड आउट दैट व्हेन फैट्स आर डाइजेस्टेड फ्रॉम मोनोग्लिसराइड्स and free fatty acids are produced. ठीक है ना, और ये बाइल मिसल्स वगैरह सब बात हमने की थी. Now because the molecular dimension of these missels are only 3 to 6 nanometers in diameter, and because they are highly charged exterior, they are soluble in chyme. In this form, monoglycerides and free fatty acids are carried. Although ये fats हैं, but water soluble हैं because of the formation of missels. They are carried on the surface of the microvilli of the intestinal bridge border and then penetrate into the recesses among the moving, agitating microvilli. Here, both the monoglycerides and fatty acids diffuse immediately out of the micelles, and now they become really fat soluble, and into the interior of the epithelial cell, and if possible, because the lipids are also soluble in the epithelial cell membrane, which also contains phospholipid. So fat is soluble in the membrane. This process leaves the bile micelles still in the chyme, and the fat has entered into the cell. Thus, micelles perform ferrying function that is highly important for fat absorption. In the presence of an abundance of bile micelles, about 97% of the fat is absorbed. In the absence of the bile micelles, only half of the fat is absorbed. And then after entering into the epithelial cell, the fatty acids and the monoglycerides are taken up by the cell's smooth muscles endoplasmic reticulum. Here they are processed and chylomicrons are produced, and these chylomicrons enter into the lymphatics, thoracic duct, and enter into the venous side of your circulation. So enterocyte में fats enter होंगे, यहाँ से ये lymphatics में जाएंगे in the form of chylomicrons, okay, and direct absorption of fatty acid into the portal blood is small quantity. So that's the major transport of fats into the chylomicron formation and then into the lymphatics. But some can directly be absorbed into the portal blood, but that's a small component. The cause of this difference between not important. Metabolism में पढ़ेंगे ये चीजें. अच्छा जी, अब so we have been talking about absorption कैसे हो रही है, उससे पहले digestion कैसे हो रही थी. Now I have to talk about how the feces are formed. अब इमेजिन जो आपने खाना खाया था वो सारा डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से सब कुछ गुजर गया, सब एब्जॉर्ब भी हो गया. पीछे जो थोड़ा बहुत बच गया है, दैट थोड़ा बहुत जो कि मैंने आपसे कहा था 1.5 लीटर है, क्योंकि 7 to 8 लीटर टोटल लिक्विड था जो आपको एब्जॉर्ब करना था, सारा आप एब्जॉर्ब कर लेते हो स्मॉल इंटेस्टाइन तक. पीछे 1.5 बच जाता है जो बेसिकली कोलॉन में एंटर होता है. सो अबाउट 1.5 लीटर ऑफ काइम नॉर्मली पासेस थ्रू द ileocecal valve into the large intestine each day. Most of the water and electrolyte in this chyme are absorbed into the colon. अब colon further absorb करता है water और electrolyte को, usually leaving less than 100 ml of the fluid to be excreted in the feces. Also, essentially all the ions are absorbed, leaving only 1 to 5 milliequivalents of sodium. So you don't lose sodium in your feces quite much. You kind of retain it, okay? इसीलिए डायरिया में जब सोडियम लूज होता है, then your sodium concentrations can be disturbed. Most of the absorption in the large intestine occur in the proximal half of the colon, because जो later half है that is largely storage. उसमें storage होता है. Earlier ascending colon जो है उसमें absorption हो रही है, बाकी later parts जो है उसमें feces store होते हैं. Absorption and secretion of electrolytes and water. The mucosa of the large intestine, like that of the small intestine, has a very high capability for active absorption of sodium.
and the electrical potential gradient created by sodium absorption causes chloride absorption as well. So एक cell है उसमें sodium भी enter होगा, chloride भी enter होगा. This characteristic prevents significant amount of back diffusion and this is not relevant. In addition, as occur, मैंने आपको बताया था कि they secrete large quantities of bicarb so that they neutralize the acids produced by the bacteria. Okay. Now, maximum absorption capacity of the large intestine. The large intestine can also absorb about 5 to 8 liters. Usually, large intestine के पास challenging liquid आता कितना है 1.5 liter, but capacity इसकी काफी ज़्यादा है. So the capacity is 5 to 8 liters. So it can actually, absorb quite a lot as compared to what it actually does. कंपोजिशन ऑफ द फीसिस. अब एंड में जो कुछ बच गया सारा पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, हर चीज एब्जॉर्ब, पीछे फीसिस बच गया ना. फीसिस में क्या है? इट कंटेन्स सम वाटर, 3/4 ऑफ इट इज एक्चुअली वाटर, 1/4 इज सॉलिड मैटर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डेड बैक्टीरिया, 30% बिग अमाउंट, 10 to 20% fat, 10 to 20% inorganic matters, 2 to 3% protein, 30% undigested rough food. और इसमें undigested stuff हो सकता है such as cellulose. The brown color of the feces is because of the stercobilin and urobilin. जो order है feces की, that is principally because of the products of the bacterial action, और bacteria के action से जो products बन रहे हैं उसकी smell है, which you feel in the toilet. The actual odoriferous product include indole, scatol, mercaptans, and hydrogen sulfide. So my god, these are the type of things that you have in your feces, and because of this there is really bad odor, and it all depends upon the diet as well. So for example, if you are producing a lot of hydrogen sulfide there, it will really be a bad odor. Okay, so you need to know what are the components of feces, right? So with this very important chapter is done. And this is a small little heading, bacterial action in the colon. There are numerous bacteria in the colon. आपको यहाँ बता भी रहे हैं कि about feces का जो solid component है उसका 30% is dead bacteria. So it's a big number. So there are so many bacteria in the colon. They are capable of digesting small amounts of cellulose, because cellulose आपके पूरे digestive system में undigested चला आ रहा है from the mouth to the anus. Because हमारे पास cellulose को digest करने वाला enzyme cellulase है ही नहीं. अच्छा, in herbivorous animal this source of energy is significant, because herbivorous animals it is not negligible importance in human beings. हम में भी ये कुछ ना कुछ काम का है, because जब ये digest करते हैं cellulose को, we are giving a few calories in the form of this digestive action. So bacteria हमें कुछ ना कुछ फायदा दे रहे हैं, but anyways that's not something too important. हमें major energy मिल रही है from other carbohydrates, proteins and lipids. Okay, now other substances formed as a result of bacterial activity in the large intestine particularly are vitamin K, very important, vitamin B12, very important, thiamine, riboflavin. So they are good, bacteria are doing good to us, है ना. And a lot of gases. जो gases बनती हैं वो bacterial action से बनती हैं, and इसीलिए जो हम firing करते हैं flares, that is because of the bacterial action as well. और वो gases कौन कौन सी हैं आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन है. So a lot of organic chemistry going on in your large intestine. The bacteria form vitamin K is especially important because the amount of this vitamin is daily ingested food is normally insufficient. So you need a lot of bacteria so that you can produce vitamin K. Now imagine a clinical scenario. Antibiotics ले रहे हैं heavy dose की, bacteria खत्म हो जाएंगे colon में, vitamin K बनना कम हो जाएगा, bleeding disorders. That sort of thing. You have to correlate whatever you study across different disciplines of medicine. Physiology, anatomy, pathology, pharmacology, medicine, all are interconnected. Okay, so this chapter is done, and let us now talk about the last chapter of GI unit number 12, and that is chapter number 67, which talks about the physiology of GI disorders. So basically इस chapter में what we'll be talking about is some diseases और उसके कुछ physiological aspect. ठीक है. अच्छा, अब जो पहला topic है, and इसीलिए you see this chapter completely in the blue boxes because this is more sort of disorder type of thing. और Guyton में आपको पता है कि जो clinical stuff है, जो clinical disorders है, they are more sort of given in these blue boxes. So the first one is the disorder of swallowing and esophagus. Paralysis of the swallowing mechanism. That is also something which is not uncommon. It is commonly reported. Particularly कुछ diseases के साथ इसका association है swallowing difficulty का. So for example, poliomyelitis. There is still incidence and prevalence of polio in developing countries, such as even the cases are reported in Pakistan and in some other countries. So polio
कि जो patients हैं उनमें swallowing is damaged because there is a swelling center in the brainstem which is affected by this viral infection. Paralysis of the swelling muscles as occur in the person with muscular dystrophies or myasthenia gravis. So old age problem, myasthenia gravis या Clostridium अगर botulism है ये infection, then muscular dystrophies, these things can all be associated with problems in the process of swallowing. Or when the swallowing mechanisms are partially or totally paralyzed, abnormalities that occur include the following: complete abrogation of the swelling act, that swelling cannot occur, so it will not happen. You cannot take the food, deglutination का process नहीं होगा, यानी खाना निगल के नीचे स्टमक तक नहीं जाएगा. Failure of the glottis to close so that food passes into the lungs, and if this happens, अगर swallowing का जो पूरा एक पैकेज था हमने डिस्कस किया था जिसमें एपिग्लोटिस जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन लेता है, फिर फूड डायरेक्ट होता है इनटू द इसोफेगस, नॉट इनटू द ट्रैकिया. सो वो सारा सिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो फूड विल एंटर रादर इनटू द ट्रैकिया एंड देयर विल बी इन्फेक्शंस इन द लंग्स. Failure of the soft palate and uvula to close the posterior nares, so the food refluxes into the nose as well. So there are all sort of problems if the swallowing reflex is disturbed. One of the most serious instances of paralysis of swallowing mechanism occurs when the patient are in a state of deep anesthesia. That's very important. While on the operating table, they sometimes vomit large quantities of materials from the stomach into the pharynx. Then instead of this swallowing back into the stomach या esophagus में, this material can simply go into the trachea, and this is very very serious because it can then cause pneumonia and all sort of different problems. Even it may choke the respiratory system अपने ही vomitus से, and death can occur. So anesthesia के patient में इसीलिए appropriate NG tube, endotracheal tube, ये सारी चीजें अपनी जगह पर होना बहुत जरूरी है. Otherwise हुआ ये कि stomach से वॉमिटस बाहर आया और निकल के चला गया ट्रैकिया के अंदर और जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर दिया. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. देन एकेलेजिया एक पूरा डिसऑर्डर है और ये हम सर्जरी में भी कई दफा पढ़ते हैं, या इसको एकेलेजिया कहें. एकेलेजिया बेसिकली होता है जिसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं होता, और अब अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली दिस विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो सारा फूड यहीं इसोफेगस में जमा रहेगा और इसकी वजह से देयर विल बी डायलेटेशन ऑफ द इसोफेगस, which is what we call the mega esophagus. As a result, the food swallowed into the esophagus fails to pass into from the esophagus into the stomach. Pathophysiological studies have shown damage in the neural network of the meningeal plexus. This is where the problem lies, in the lower two-thirds of the esophagus. So that is the problem. And as a result, the musculature of the lower esophagus remain spastically contracted. So it's a very high pressure contraction all the time. And the meningeal plexus has lost its ability to transmit the signal for receptive relaxation. ये हमने पढ़ा था कि जब food downward the esophagus move करता है, so there is a receptive relaxation in this sphincter. It does not happen, and therefore esophagus becomes dilated. When achalasia becomes severe, the esophagus often cannot empty this swallowed food into the stomach for many hours, and sometimes even over days. Over months and years, the esophagus become tremendously enlarged, and this is what we call the mega esophagus. Okay, considerable benefit can be achieved by stretching the lower end of the esophagus with a balloon. So what they do is जो constricted part है esophagus का, just put a balloon, इसको dilate करने की कोशिश करते हैं ताकि food pass हो, and then there are some surgical options available as well. ये थी esophagus की कुछ diseases जिसमें achalasia obviously बहुत important है. अब यहाँ पे further इन्होंने चीजें डिस्कस नहीं की कि रेडियोग्राफी पे बर्ड बीक साइन और तो वो सर्जरी के लेक्चर्स में आएंगी. यहाँ आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि these are the sort of disorders which have been reported in esophagus. Now the disorders of the stomach. पहला जो रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर gastritis, which means inflammation of the gastric mucosa. Mild to moderate gastritis is especially common in middle to later ill. So that's something common. आप इतना कुछ खाते पीते हैं, spices हैं वगैरह वगैरह, so irritants हैं, so there is some degree of inflammation present. The inflammation of gastritis may only be superficial and therefore not very harmful, or it can also penetrate deeper into the gastric mucosa. Now this will be something serious. In few cases, gastritis can be very acute and severe and ulcerative. Therefore, it can excoriate the stomach walls. Easily, it can be very dangerous. Research suggests that gastritis often is caused by chronic bacterial infection of the gastric mucosa.
This condition often can be treated successfully with intensive regimen of antibacterial therapy, but this is usually not required because पता ही नहीं होता कि gastritis चल रहा है, तो जब पता ही नहीं होगा तो क्या उसको treat करेंगे. In addition, certain ingested irritant substances can be especially damaging to the protective mucosal layer of the stomach. और ऐसे बहुत सारे substances such as alcohol, such as aspirin, what they can do is they can destroy the protective gastric mucosa. And therefore ulcers are very common if you take aspirin. Ulcers are very common also if you take alcohol, for example, because they destroy the gastric mucosa. Then increased permeability of gastric barrier in gastritis. Absorption of the food from stomach directly into the blood is normally slight. Obviously we know that कि stomach का major काम जो है वो storage है और chopping up of food है. Main जो digestion का phenomena है वो small intestine में हो रहा है. We know this very well. This low level of absorption and particularly absorption तो हो ही small intestine में रही है. Absorption तो digestion तो फिर कुछ ना कुछ stomach में हो रही है, but absorption का तो सारा काम हो ही small intestine में रहा है. So this low level of absorption is mainly due to two specific features of the stomach mucosa. It is lined by highly resistant mucus cells that secrete viscid and adherent mucus, and it has very tight junction. So because of these two features, stomach के अंदर absorption इतनी efficient नहीं होती है. Okay, and these two features are therefore sometimes called the gastric barrier to stomach absorption. The gastric barrier normally is resistant enough to diffusion, and well, this is not very important. However, this term we know this कि अगर gastric mucosa में there is a breach, then that breach, that zakham, is known as gastric ulcer. Now, chronic gastritis can lead to gastric atrophy and loss of stomach secretions. अगर बहुत ज़्यादा inflammation होगी तो जो secretions हैं, जो भी cells हैं, वो अपनी secretions बनाना छोड़ देंगे, and then there will be loss of those secretions. In many people who have chronic gastritis, the mucosa gradually becomes more and more atrophic. Atrophy मतलब cells die हो रहे हैं obviously, until little or no gastric glands remains. It is also believed that in some people autoimmunity develops against the gastric mucosa, and loss of stomach secretions happen. And this leads to achlorhydria, which means you are not producing HCl anymore, and occasionally also to pernicious anemia because there will be, deficiency state of certain vitamins. Achlorhydria क्या चीज है? Basically, achlorhydria is absence or reduced amount of HCl. The stomach basically fails to secrete hydrochloric acid. It is diagnosed when the pH of the stomach, fails to be maintained at a level below 6.5. जितना भी स्टिमुलेट कर ले उसका इतना pH हो ही नहीं रहा, pH कम नहीं हो रहा, इसका मतलब एसिड है ही नहीं. Hypochlorhydria means diminished acid secretion. Achlorhydria is complete absence and hypo is decreased. When acid is not secreted, pepsin is not secreted as well, and it does not work. And if it does not work, किस चीज की digestion affect हो जाएगी? Protein की digestion. So this is what is hypo या achlorhydria. Then there is a term known as pernicious anemia. देखिए ये क्या चीज है? Pernicious anemia commonly accompanies gastric atrophy and achlorhydria. Normal gastric secretion contain a glycoprotein called intrinsic factor. ये gastric secretions में release होता है normally, and it is also separated by the same parietal cells जिनमें से HCl निकलता है. तो अगर parietal cells में damage है तो HCl तो नहीं निकलेगा, साथ साथ intrinsic factor भी नहीं निकलेगा. और ये जो intrinsic factor है, it is required for the absorption of vitamin B12. यानी अगर achlorhydria होगा यानी parietal cells डैमेज होंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं होगा और विटामिन B12 भी रिलीज नहीं होगा, सो एब्जॉर्ब नहीं होगा. सो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, and this B12 deficiency will then lead to its own symptoms. जो hematopoiesis के मसले होंगे वो इस B12 deficiency. So if you trail that back, it goes to the problem with the parietal cells. There are autoantibodies, so these are parietal cells sitting there. There are autoantibodies destroying the parietal cells, for example, as a result of which ना HCl बन रहा है ना intrinsic factor बन रहा है, तो vitamin B12 भी absorb नहीं हो रहा. In the absence of intrinsic factor, only about 1/50th of the vitamin B12. So you see, it is almost gone negligible. और इस disease को, इस vitamin B12 deficiency को, जो intrinsic factor की कमी की वजह से है, this is particularly known as pernicious anemia. Anemia तो होगा ना, because you are not having a vitamin which is very much required for the process of hematopoiesis. So you need to know all these terminology and the concepts. Then the peptic ulcers. Peptic ulcer basically is an excoriated area of the stomach, यानी एक जख्म है स्टमक के अंदर. सिंपल वर्ड्स में म्यूकोजा डैमेज हो गई है तो अल्सर बन गया है. It's as simple as that. Okay, so
A type of peptic ulcer called marginal ulcer also often occurs wherever a surgical operation such as gastrojejunostomy has been made between the stomach and the jejunum of the small intestine. Not very important in high yield. The definition of ulcer is more important. अब causes पता होनी चाहिए कि ulceration होती क्यों है. The usual causes of peptic ulceration is an imbalance between the rate of gastric juice secretion and the degree of protection. देखो दो ही फिनोमिना है ना, ये स्टमक है, इसमें कितना HCl बन रहा है और कितना इसका म्यूकस बन रहा है. अगर HCl ज्यादा बनने लग जाए और म्यूकस कम बने तो अल्सर हो जाएगा. अगर किसी भी वजह से म्यूकस नहीं बन रहा, HCl भले ही नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है, तब भी अल्सर हो जाएगा. So it depends upon what is the balance. All areas are normally exposed to gastric juices. And they are well supplied with the mucous gland, beginning with the compound mucous glands in the lower esophagus plus the mucus cell coating. So, in the stomach, there are pretty busy mucous glands which secrete high mucus, और उनका काम है basically acid से protect करना. ठीक है जी? Then there are also duodenum के अंदर Brunner glands हैं which secrete alkaline stuff which neutralizes HCl. So there are mechanisms in place. In addition to the mucous protection of the mucosa, duodenum is also protected by the alkalinity of the small intestine by the Brunner because they secrete alkaline mucus. Especially important is pancreatic secretion which contains large quantities of sodium bicarbonate. So this also, तो देखें ये बड़ा जबरदस्त डिजाइन है कि duodenum में स्टमक से जब काइम एंटर होता है तो वो एसिडिक होता है. अब इसको न्यूट्रलाइज करना है इस एसिड को, क्योंकि जो डिओडेनम की वॉल है वो एसिड से प्रोटेक्टेड नहीं है. उसका डिजाइन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हैवी म्यूकस हो और प्रोटेक्शन हो, तो वो नहीं मिलती इसको. देयरफॉर जो पैंक्रियाटिक जूसेस यहाँ आते हैं बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ बाइकार्ब, सो उस बाइकार्ब की वजह से यहाँ पे जो एसिड पहुंचता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है. In addition, the large amount of bicarbonate are provided in the secretions of the Brunner gland, जो अभी मैंने बताया भी था. Also, they are present in bile. So overall, जो duodenum है, इसको alkalinize किया जाता है ताकि acidic effect मसला न करे. Finally, there are two feedback control mechanisms normally ensuring that this neutralization of gastric juices is complete. The first one is when excess acid enters the duodenum, it inhibits the gastric secretion ताकि मजीद acid न निकले. And peristalsis in the stomach ताकि मजीद काइम duodenum में ना आए. This is called enterogastric या duodenogastric reflex. And then the other system is the presence of acid in the small intestine liberates secretin from the intestinal mucosa, which then passes by the way of blood to the pancreas to produce more pancreatic juice ताकि neutralize हों चीजें. Therefore, a peptic ulcer can be caused by either excess secretion of the acid or diminished ability of the gastroduodenal mucosa to protect things, and then peptic ulcer will be there. And then you will see that ulcer can be present in different sites. There can be ulcers in the cardiac region, in the peptic region, pyloric region. Marginal ulcers are at the borders. So these are all the different flavors of peptic ulcer. अब स्पेसिफिक कॉजेज की अगर बात करें तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का नाम आपको लाजमी पता होना चाहिए कि दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर्स. So bacterial infection by H. pylori breaks down the gastroduodenal mucosal barrier and it stimulates the gastric acid secretion. अब ज़ाहिर है gastric acid ज़्यादा बनेगा और mucosal barrier खत्म होगा तो अल्सर फॉर्मेशन के चांसेस तो है ना, प्रोटेक्शन अगर खत्म करेंगे आप. At least 75% of the persons with peptic ulcer have been found to have chronic infection with H. pylori. Therefore, इसकी eradication therapy बहुत ज़रूरी है. अक्सर लोगों में ये asymptomatically भी present होता है, but whenever it is diagnosed, it should be treated to eradication ताकि इससे जान छूटे और future में अल्सर वगैरह ना हो, because H. pylori is also associated with gastric cancer. So that is something very serious. Now, other causes of ulceration are also there. In many people who have peptic ulcer in the initial portion of the duodenum, the rate of gastric acid secretion is greater than normal, and that makes sense. ज़्यादा acid बनेगा तभी अल्सर होगा. Sometimes as much as twice that of normal. Although part of this increased secretion may be stimulated by bacterial infection, there are some other reasons listed such as smoking, alcohol, aspirin use, and it is obviously treatable. H. pylori को खत्म करने के लिए you use triple regime antibiotics और acid suppressant therapy use की जा सकती है ताकि acid production को कम करें, such as ranitidine. And this is usually working fine. These physiological approaches to therapy have been proven to be effective in most of the patients. In few cases, however, the patient's condition is so severe
इंक्लूडिंग मैसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द अल्सर। अब देखें ये जो अल्सर बेड होता है ना, वो अगर किसी ब्लड वेसल को टच करेगा तो देयर विल बी मैसिव ब्लीडिंग, एंड उस केस में देन ऑब्वियसली सर्जरी करनी होगी, सर्जिकल करेक्शंस होंगे, इवन द वेगस नर्व की कटिंग, you can think of extreme things like this. So that's about the ulcers and stuff. Now let's talk about some disorders of small intestine. अब पहला सिनेरियो है abnormal digestion of the food in the small intestine, और एग्जांपल है pancreatic failure की। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेन फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो पैंक्रियाटिक जूसेस से हो रहा है। सारे एंजाइम्स आ रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है, एंड देन वी हैव trypsin, chymotrypsin, lipases. So these are all being released from the pancreas. So if there is for any reason such as pancreatitis, अगर pancreatic failure है तो ये सारे एंजाइम नहीं पहुंचेंगे डिओडेनम तक, और डिओडेनम तक अगर ये एंजाइम नहीं पहुंचे तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। So this is pancreatic failure. Or if there is for any reason pancreatic duct blockage. So देखें anatomy इस तरह से है कि this is the pancreatic duct. Here we have the duodenum and the pancreatic juices are released into the duodenum. अगर स्टोन की वजह से ये ब्लॉक हो जाए, या अराउंड दिस देयर इज हेड ऑफ पैंक्रियास, उसमें कैंसर हो और ये ब्लॉक हो जाए, so all these things can actually block the pancreatic duct. और अगर pancreatic duct ब्लॉक होती है तो juices बन तो रहे हैं पैंक्रियास में, but they are not being transferred to the duodenum. Okay, right. Loss of pancreatic juice means loss of trypsin, loss of chymotrypsin, loss of amylase, lipase, carboxypeptide. ये सारे एंजाइम्स नहीं गए। अब जब ये एंजाइम्स नहीं रहे तो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा? Without these enzymes, up to 60% of the fat entering the small intestine may not be digested and absorbed, and 1/3 to 1/2 of the protein and carbohydrates will be not absorbed. So that's a serious problem. Pancreatitis अभी इसका हमने जिक्र किया कि पैंक्रेटाइटिस अगर सीवियर है तो उससे पैंक्रियाटिक फेलियर हो सकता है और डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। खुद पैंक्रेटाइटिस है क्या? इट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास। Pancreatitis can occur in the form of either acute pancreatitis or chronic pancreatitis. The most common cause of pancreatitis is alcohol consumption, excessive alcohol consumption, और गॉल स्टोन्स की वजह से ये हमने पैंक्रियास की पैथोलॉजी अलग से भी डिस्कस की हुई है। सो फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट, इट कंबाइंस विद द बाइल डक्ट एंड देन ओपन्स इनटू द duodenum, एंड इफ फॉर एग्जांपल देयर इज अ गॉल स्टोन ब्लॉकेज, तो बैकफ्लो होगा पैंक्रियाटिक जूसेस का, एंड दोस पैंक्रियाटिक एंजाइम्स विल रिलीज इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द पैंक्रियास एंड दे विल कॉज इन्फ्लेमेशन. So this is one of the very common causes of acute pancreatitis. When a gallstone, so ये gallstone की बात हमने कर ली कि it can cause pancreatitis. Then there are some disorders. अच्छा, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ये चूंकि पैथोलॉजी की बुक नहीं है, this is a physiology book, so you should understand कि यहाँ बहुत लिमिटेड पैथोलॉजी डिस्कस की है। आपको हर ऑर्गन की पैथोलॉजी पे मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूँ, so that you know कि किस ऑर्गन की पैथोलॉजी में क्या डिटेल्स हैं। So यहाँ पे just remember the names and take the flavor. अच्छा, फिर there is malabsorption by the small intestine. So occasionally nutrients are not adequately absorbed from the small intestine even though it has been digested properly. Several diseases can cause this, and they all come under the heading of sprue. Sprue means malabsorptive problem. Malabsorption also can occur when large portion of the small intestine have been removed. Obviously, if you, because of any surgery, if you remove large intestine, फूड कहाँ एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन काम ही लार्ज इंटेस्टाइन का था, है ना। अब ये जो स्प्रूज हैं, यानी जो मैल एब्जॉर्प्शन है, दे कैन बी नॉन ट्रॉपिकल स्प्रूज. वन टाइप ऑफ स्प्रू कॉल्ड वेरियसली सच एज celiac disease, idiopathic sprue या gluten enteropathy. They are because of sensitivity to gluten, as a result of which the villi are destroyed. And once the villi are destroyed, there is a destructive effect on the villi, then definitely absorption will be affected. और ये बेसिकली रिवर्सिबल कंडीशन होती है। सो अगर डाइट में से वीट निकाल दें, देन द कंडीशन एक्चुअली रिवर्सेस एंड द पर्सन फील्स वेरी मच बेटर. देन स्प्रू की एक कैटेगरी है ट्रॉपिकल स्प्रू. सो नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू इज द celiac disease, and tropical sprue is it happens in the tropical areas and can often be treated with antibacterial agents. So that's the simplest thing that you have to remember. कोई खास बैक्टीरिया इसके साथ लिंक नहीं किया गया, but it is thought that it is improved by using the antibiotics. Then there is a concept of malabsorption in sprue. देखें, in the early stages of sprue, intestinal absorption of fat is more impaired than absorption of any other digestive product. The fat that appears in the stool is almost entirely from the salt of the fatty acid rather than the undigested fat. Unnecessary point, demonstrating that the problem of absorption, not digestion, not important. In fact, the
condition is frequently known as steatorrhea. So because the fat is appearing in the stools, fatty stools are called steatorrhea. Okay, जैसे fatty liver is known as steatohepatitis. In severe cases of the sprue, अगर फैट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो फैट के साथ साथ जो जो चीजें एब्जॉर्ब होती थी वो भी नहीं होंगी. सो फैट एसोसिएटेड एब्जॉर्प्शन क्या है? फैट related vitamins. So they are vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. They are all fat soluble vitamin. इनकी absorption भी disturb हो जाएगी. Okay, and then you can have associated problems such as osteomalacia, nutritional deficiency, inadequate blood coagulation because vitamin K नहीं absorb हो रहा ठीक से, macrocytic anemia as well because there may be associated B12, folic acid absorption as well as production. So if there is absorptive problem, चीजें absorb नहीं हो रही तो हर चीज जो काम कर रही थी वो काम नहीं होगा, and there will be a lot of different symptoms in the patient. Now let's talk about some large intestinal problem. Large intestine का basically काम है to store the feces और वक्त आने पे वो feces body से बाहर निकालना. So constipation, you should know, it means slow movement of the feces through the large intestine. Constipation is often associated with large quantities of dry and hard feces, and that's usually in the descending colon. They may be sometimes as hard that once they come out of the anal canal, they may ulcerate the cushions, and bleeding can also be seen. Infants are seldom constipated, but part of their training in the early years of life, that's not too important of a stuff. Constipation can also result from spasm of the small segment of the small intestine. Motility normally is weak. Again, this is not so important stuff. So just remember what is the definition, and then we talk about this more in medicine. Now, जैसे mega esophagus की हमने बात की थी, ऐसे there is a disease called megacolon, and it is also called Hirschsprung disease. Occasionally, constipation is so severe that bowel movements can only occur once several days में. So that is something which is noticeable. This phenomena allows tremendous quantities of the fecal matter to accumulate in the colon, causing colon sometimes to distend to 3 to 4 inches. So that's a big distension because इसमें fecal matter store हो गया ना, pass out नहीं हो रहे feces, so they are stored here, and this is known as megacolon या Hirschsprung disease. Basically इसमें होता ये है कि जो meninteric plexus है, that is supposed to be faulty. इसमें ganglions का मसला है, there are developmental issues. तो meninteric plexus अगर नहीं बनेगा तो meninteric plexus के ना बनने से contraction of colonic muscles नहीं होगी. Contraction नहीं होगी तो obviously feces pass out नहीं होगा, and constipation will happen, and megacolon can result. Okay. Now, opposite to constipation is obviously the diarrhea, which means rapid and frequent movement of fecal matter. The frequency is increased as well as the amount of the excreta, they are also increased. And there can be so many different causes. Enteritis is the inflammation of the intestinal tract. Enteritis means simple inflammation. It can be because of any infective material such as bacteria and can lead to infective diarrhea. Okay, simple terms हैं. Cholera, for example, Vibrio cholera से होता है. So these are very, very, very superficial things. Now, psychogenic diarrhea. Most people are familiar with the diarrhea that accompanies period of nervous tension. So if you have something, exam है आपका, for example, जो कहते हैं ना पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई, so that sort of thing, psychogenic diarrhea. So if there is an emotional event associated with diarrhea, that is what we call psychogenic diarrhea. Okay. It's caused by excessive stimulation of the parasympathetic nervous system, जिससे secretions भी ज़्यादा निकलती हैं और movement भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है GI tract की. So more motility and more secretions. Then ulcerative colitis and Crohn disease. ये दो diseases हैं, Crohn disease and ulcerative colitis. They are combined, known as the inflammatory bowel diseases. इनकी pathology में बहुत डिटेल से हमने बात कर रखी है. Okay, so we talk about them in pathology. यहाँ पे वैसे भी एक पैराग्राफ लिखा है, but remember IBDs are very important because they may have increased tendency to develop cancer. So ulcerative colitis and Crohn disease, इन दोनों का spectrum of phenotype and spectrum of pathology हमने already pathology के lectures में discuss किया हुआ है. Okay. Then paralysis of defecation. Now what is that? Defecation is normally initiated by accumulating feces in the rectum. When rectum receives feces, the defecation reflex is initiated. Okay. And if this is disturbed, then this is called paralysis. When the spinal cord is injured, for example, somewhere between the conus medullaris and the brain, the voluntary portion of the defecation act is blocked because this is where it is controlled, while the basic cord reflexes of defecation is still intact. Nevertheless, the loss of the voluntary aid to defecation, that is the loss of increased abdominal pressure, the relaxation of the voluntary anal sphincter,
often makes defecation a difficult process. यानी होता ये है कि जो defecation reflex है initially it begins involuntarily, but you then increase your abdominal pressure. You can voluntarily relax the aerial sphincter. So आप aid करते हैं, you help and facilitate the process of defecation by your voluntary muscle contraction. तो अगर spinal cord में injury है above the level of the conus medullaris, then this voluntary action will be disturbed and people will have difficulty in defecation. Okay, now very general stuff. Vomiting, कुछ terms हम देखेंगे which are very common in GI tract. Vomiting की अक्सर बात होती है कि what is vomiting, and then some nausea क्या है, GI obstruction की क्या concepts हैं, and again the flatus, the gases in the GI tract. So कुछ general चीजें हैं, general terms हैं, definitions हैं जो आपको पता होनी चाहिए. Vomiting is basically antiperistalsis. So there is a law of gut, and the law of gut states that the movement of food particle and the digested product always move in a forward direction, and when we say forward it means towards the anus. So ये direction होगी. लेकिन अगर for any reason the direction reverses and it goes in this direction, this is known as antiperistalsis. So the word, and this can be because of infection, it can be because of excessive irritation, over distension, over excitability. All these things can lead to vomiting, which is known as antiperistalsis. Okay, ये बाकायदा एक vomiting reflex है. So there is a sensory signal that initiate the vomiting, and these can be the sensory signals: irritation, over distension, even too much movement. So अगर balance disturbance होगा तब भी ये vomiting sensory input initiate हो जाए. Okay, and then what happens? These impulses are transmitted by vagal and sympathetic afferent fibers to multiple distributed nuclei in the brainstem, and especially the area called area posterema. Now this area posterema is associated with vomitus. Okay, vomiting के साथ ये associated है. अब यहाँ से area posterema से motor impulses निकलती हैं, and they are transmitted from the vomiting center by way of the 5th, 7th, 9th, and 10th and 12th cranial nerves. ये सब याद होनी चाहिए आपको. To the upper GI tract through vagal sympathetic fibers as well, and then you contract the abdominal muscles and diaphragm to push things upward. That is what we call antiperistalsis. Okay. ये जनरल टर्म्स में वॉमिटिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअली एंटीपेरिस्टाल्सिस इज अ प्रील्यूड टू वॉमिटिंग. सो पेरिस्टाल्सिस गोज इन दिस डायरेक्शन, इट गोज इन दिस डायरेक्शन. More than that, nothing important. Timing, centimeters, you don't have to remember them. At the onset of vomiting, the strong intrinsic contraction occur in both the duodenum and the stomach. Well, okay, understandable, easy बातें. Vomiting act. Once the vomiting center has been sufficiently stimulated, the vomiting act has been instituted. The first effects are following. One takes deep breath, then raising the hyoid bone, then close the glottis, then lift the soft palate to the posterior nares, and then things come out. Walk bar out of the body. Again, this is not so important. ये पूछते नहीं है एग्जाम में, इसलिए इसकी कोई खास importance नहीं. Now, chemoreceptor trigger zone in the brain medulla for initiation of vomiting by drugs and by motion sickness. अगर आप माउंटेनस एरियाज में जा रहे हैं, जैसे शिमला है, इस तरह के एरियाज में जब आप जाते हैं तो बहुत गोल गोल रोड घूम रहा होता है, तो अक्सर लोगों को उन एरियाज में जब ड्राइव करते हैं तो वॉमिटिंग आती है. दैट्स बिकॉज ऑफ द मोशन सिकनेस. या अगर आप समंदर में हैं और बोटिंग कर रहे हैं तो अक्सर लोगों को जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है समंदर के पानी में, उससे मोशन सिकनेस होता है एंड दे वॉमिट. या बाज ड्रग्स हैं जो वॉमिटिंग करवाती हैं. दिस ऑल हैपेंस व्हेन वी ट्रिगर द कीमोरिसेप्टर जोन. Aside from the vomiting initiated by the irritative stimuli in the GI tract, जिसके भी मैंने बात की थी कि there is inflammation, there is distension, there is any sort of irritation, उनके अलावा motion sickness और drugs से भी vomiting होती है. ठीक है. This mechanism is particularly true for a small area called the chemoreceptor trigger zone for vomiting, located again in the area posterema. So मैंने आपसे कहा कि जो area posterema है, that is the main area for vomiting center. और कई सारी ड्रग्स हैं जो एसोसिएट की गई हैं वॉमिटिंग के साथ. एमॉर्फिन, मॉर्फिन, सम ऑफ द डिजिटालिस डेरिवेटिव. सो दे आर ऑल इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वॉमिटिंग. अब जो मोशन सिकनेस है, रैपिड मूवमेंट, दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद द रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वेस्टिबुलर लैबिरिंथ ऑफ द इनर एयर. जब मैंने एयर की एनाटॉमी पढ़ाई थी तो ये बात डिटेल में डिस्कस की थी. वीडियो मेरे चैनल पर है, देख लीजिएगा कि जब उनमें रैपिड चेंजेस होते हैं. सो व्हेन यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट ऑन अ रोड लाइक दिस, तो जब गाड़ी इस तरह से घूमती है तो आपके ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, एंड देन द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द एरिया पोस्टेरिमा इज एक्टिवेटेड एंड यू वॉमिट आउट. ठीक है जी. सो पॉइंट ये याद रखना है कि वॉमिटिंग के कॉजेज क्या हैं. इट कैन बी सम ऑर्गेनिक कॉजेज जैसे कि इरिटेशन इन द स्टमक, इन्फ्लेमेशन इन द स्टमक, डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, या फिर देयर आर सम ड्रग्स,
या फिर there is motion sickness. All these things can cause vomiting. There is a terminology called nausea. Nausea मतलब आम जबान में अगर मैं कहूँ तो this is घबराहट. मेरा दिल घबरा रहा है, मतली जैसा फील हो रहा है, अजीब अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उल्टी आने वाली है, वॉमिट होने वाला. So the sensation of nausea is often a prodrome of vomiting. A person feels like vomiting, but the vomiting is actually not happening. Vomiting हो नहीं रही, but feel कर रहा है vomiting जैसा. It can be caused by irritative impulses and impulses from the cerebral cortex. Again, this is not so important. Then the GI obstruction. Now, this is not something uncommon. GI obstruction is a very common phenomena in the emergency room. Patients present with this, and the GI tract can be obstructed at almost any point, starting from the mouth to the anus. Some common causes of obstruction are actually cancer. किसी भी पार्ट का अगर कैंसर है वो एरिया ब्लॉक हो सकता है. फाइब्रोटिक कंस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अल्सरेशन. सो स्टमक में अगर अल्सरेशन हुई थी, अब फाइब्रोसिस हो गई, ब्लॉक हो सकता है. स्पाज्म ऑफ द गट सेगमेंट. कोई भी गट का सेगमेंट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, स्पाज्म. एंड पैरालिसिस ऑफ द गट सेगमेंट बिकॉज ऑफ नर्वस सप्लाई प्रॉब्लम. ऑल दीज कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन. तो ये जो पैरालिसिस वाली चीज है, यानी गट कहीं से फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही, लेकिन सपोज गट का ये पोर्शन जो है बस ये काम नहीं कर रहा. अगर ये पोर्शन गट का काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली ये गट का जो पोर्शन है, फूड यहाँ से आगे मूव कैसे करेगा? वो मूव नहीं करेगा, तो टेक्निकल टर्म्स में तो ये ऑब्स्ट्रक्ट ही हो गई ना, बंदी हो गई, काम नहीं कर रही. The abnormal consequence of obstruction depend on the point of the GI tract which is obstructed. Obviously, I mean this makes sense कि अगर स्टमक में obstruction हुई है तो उसके consequences अलग होंगे, intestine में हुई है तो उसके consequences अलग होंगे. If the obstruction occur in the pylorus, for example, which result from the ulcer, post-ulcer fibrosis, then there will be vomiting because stomach में food contents आ रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा रहा है. This vomiting will depress the bodily nutrition. It will also cause different metabolic changes in the body, such as metabolic alkalosis, all sort of different things. So it depends कि किस जगह पे block है, उस हिसाब से symptoms develop होंगे. लेकिन अगर ये तो हमने स्टमक की बात की ना कि if there is a block at this level, for example, तो vomiting होगी और ये सब चीजें. लेकिन अगर obstruction is beyond the stomach, यानी intestine में कहीं और है, then the consequences are different. In this case, the person loses large amount of water and electrolytes. He or she becomes severely dehydrated, but the loss of acid from the stomach and base from the small intestine may approximately be equal. तो हो सकता है metabolic acidosis या alkalosis develop now, लेकिन water electrolyte disbalance हो जाएगा if the obstruction is beyond the level of stomach. Because अब सिर्फ स्टमक के contents vomit out नहीं हो रहे, small intestine के भी content vomit out हो रहे हैं. So these are all conceptual things, okay? Then if the obstruction is near the distal end of the large intestine, then feces can accumulate in the colon for a week or so, and we can call it megacolon. So it all depends upon किस जगह पे constriction basically मौजूद है, okay? Then what is flatus? Flatus is presence of a lot of gas in the GI tract. अक्सर होता है ना, आप फायरिंग करते रहते हैं, does. This is flatus. So gases which are called flatus can enter the GI tract from three sources. Number one, you swallow them, हवा से, आपके oral cavity के जरिए गैस अंदर जा रही है. Then there are gases which are produced in the gut by the bacteria. And then there are gases that diffuse from the blood into the GI tract. तो ये तीन sources हैं of gases in the GI tract. Most gases in the stomach are mixture of nitrogen and oxygen. But I mean, bacterial action also produce a lot of very bad smelling gases such as hydrogen sulfide. In the large intestine, bacterial actions generate most of the gases, including carbon dioxide, methane, and hydrogen. So all these are produced in your body. Certain foods are known to cause greater expulsion of flatus through anus than others, such as beans. दालें अगर ज़्यादा खाई हैं, गोभी खा ली, cabbage, cauliflower, corn, and certain irritant foods such as vinegar. So they are known to produce increased amount of gases. Okay. Then some of these foods serve as suitable medium for gas forming bacteria. So bacteria impact करते हैं और बहुत सारी gas बनाते हैं. The amount of gas entering or forming in the large intestine each day averages about 7 to 10 liters. Look at the amount of gas we handle. 7 to 10. It's a big amount. Whereas the average amount expelled through the anus is only about less than a liter, 0.6 liter. The remainder is actually absorbed into your blood. So that's all about this chapter. इस चैप्टर में बेसिकली इन्होंने सिर्फ फ्लेवर्स दिए हैं मुख्तलिफ GI disorders के और उसके कुछ physiological aspects डिस्कस किए हैं. For more details on the GI disorders, I would refer my series on pathology. So GI की pathology मैंने already upload की हुई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा रॉबिन से. That's all. And that's the end of the GI unit. So we did, you see, this was unit number 12. And now
the next unit comes in, which is unit 13. So GI unit is all done. In one single video, we talked about from chapter number 63 to chapter number 67. 5 big chapters in one single video. That's my concept of the binge videos. एक साथ देखें, जैसे मूवीज देखते हो यार, ऐसे वीडियोस लेक्चर्स भी देख लोगे तो क्या हो जाएगा. So all the very best. If you like the video, please subscribe the channel, share the video with your colleagues, and आपसे मुलाकात होगी अगले किसी टॉपिक के साथ. फिर मिलते हैं. Take care of yourself.